केवल सुविधा नहीं बल्कि सभ्यता का नया आधार बन रही है। प्रश्न यह नहीं कि तकनीक कितनी तेज है, प्रश्न यह है कि वह मानवता को किस दिशा में ले जा रही है। यह चिंतन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मूल आत्मा है, जिसको भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR नई दिल्ली के सौजन्य प्रयोजन तथा उच्चतर शिक्षा निदेशालय DGHE पंचकूला की स्वीकृति एवं मार्गदर्शन से आयोजित किया जा रहा है। निस्संदेह यह सहयोग इस आयोजन की शैक्षणिक गरिमा और राष्ट्रीय महत्ता को और अधिक प्रतिष्ठित करता है। मैं हमारी प्रबंधन समिति के प्रधान चौधरी तेजवीर सिंह जी एवं सभी सम्मानित पदाधिकारीगण का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके मार्गदर्शन, सहयोग और विश्वास से हम आज यह संगोष्ठी आयोजित करवा रहे हैं। आदरणीय प्रधान जी, आपके सतत सहयोग ने महाविद्यालय को निरंतर प्रगति की दिशा प्रदान की है। आज हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय लेफ्टिनेंट डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी का मैं विशेष स्वागत करता हूं। आपका प्रशासनिक अनुभव और उच्च शिक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन इस सम्मेलन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। डॉक्टर मदन मोहन गोयल जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप शिक्षा जगत में एक चमकते सितारे की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर पठन पाठन के शोध संकाय विकास के कोई भी आयाम खोजने हो, वो आपके व्यक्तित्व में विराजमान हैं। शैक्षणिक एवं बौद्धिक परंपरा में आपका नाम सम्मान से लिया जाता है और निश्चित ही आपके विचार इस सम्मेलन के बौद्धिक विमर्श को नई दिशा देंगे। श्रीमान जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि प्रोफेसर जयंती दत्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उच्च शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और नवाचार के क्षेत्र में आपका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। आदरणीय मैडम जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। मैं दूर दराज के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से पधारे आदरणीय प्राचार्यगण का विशेष स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी का अनुभव, नेतृत्व और शैक्षणिक दृष्टि इस सम्मेलन को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान और प्रेरणा दोनों है, जिनमें हमारे मध्य पहुंची हमारे अपने कॉलेज दयाल सिंह कॉलेज से हमारी बड़ी बहन डॉक्टर आशिमा गखड़ जी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे मध्य पहुंची हमारी बहन अनीता जून जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप प्राचार्य हैं गवर्नमेंट कॉलेज जो है जूंडला में। हमारे मध्य पहुंची हमारी बहन शकुंतला डॉक्टर संगीता शर्मा जी, आप डांड में प्राचार्य हैं। हमारे मध्य पहुंचे हमारे प्राचार्य मित्र और बहुत ही अजीज डॉक्टर सतवीर जी, आप IB कॉलेज पानीपत में प्राचार्य हैं। हमारे मध्य पहुंचे हमारे IG कॉलेज लाडवा से प्राचार्य डॉक्टर कुशलपाल जी। हमारे मध्य पहुंचे डॉक्टर राजेश तुरान जी, DAV कॉलेज पुंडरी के आप प्राचार्य हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और विशेष रूप से हमारे मित्र सुभाष शर्मा जी, आप गवर्नमेंट कॉलेज पेवास में प्रिंसिपल हैं, आप भी हमारे मध्य पहुँचे। आप सबकी प्रेरणा, आप सबका सहयोग और आप सबका यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं साथ ही इस सम्मेलन की संयोजिका डॉक्टर अमनदीप कौर, डॉक्टर ममता रानी व उनकी समस्त टीम को विशेष बधाई देता हूँ। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के पीछे अथक मेहनत, सूक्ष्म योजना और अकादमिक प्रतिबद्धता होती है। आपने जिस समर्पण के साथ इस सम्मेलन को साकार किया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। आयोजन समिति के समस्त शिक्षक बंधुओं और गैर शिक्षक सदस्यों का योगदान इस सफलता की मैं आधारशिला समझता हूँ। हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों, अन्य प्रदेशों तथा विदेश से पहुँचे एवं आभासी रूप से उपस्थित सभी विद्वान वक्ताओं एवं शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले शोधार्थियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। विचारों का आदान प्रदान ही ज्ञान की वास्तविक शक्ति है। संवाद से ही शोध जीवंत बनता है और शोध से ही समाज दिशा प्राप्त करता है। मैं मीडिया प्रतिनिधियों का भी अभिनंदन करता हूँ, जो शिक्षा और समाज के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। साथ ही तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही हमारी समर्पित टीम का भी विशेष धन्यवाद और स्वागत। आप सभी इस आयोजन के अदृश्य किंतु महत्वपूर्ण आधार हैं।
भारतीय ज्ञान परंपरा का अत्यंत प्रसिद्ध वैदिक उद्घोष है आ नो बद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः, अर्थात संसार के श्रेष्ठ विचार हमारे पास आएँ। आज की संगोष्ठी उसी भावना को साकार रूप दे रही है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सफल, सार्थक और ऐतिहासिक कार्यवाही की हार्दिक कामना करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for your gracious and insightful welcome address. Your inspiring words have truly set a positive and meaningful tone for this conference. Building upon the inspiring welcome address, it is now time to gain deeper insight into the theme and vision of this conference. It is my privilege to invite the convener, Dr. Amandeep Kaur, to kindly share her valuable thought on the conference theme. A very good morning to all of you. Respected guest of honor, eminent speaker, our president sir and principal sir, speaker and dear participant. A warm welcome all of you in the international conference on the theme of impact of digitalization and artificial intelligence on global economy, governance and policy. This conference is sponsored by Indian Council of Social Science Research and approved by Director General Higher Education, Haryana. Provide an important academic platform to examine the evolving dynamic of the global economy in the digital era. To understand the significance of the conference theme, it is important to look at the data reality of the today's global transformation. And first indicator is the GDP, gross domestic product. It is the most important for the every country, and it shows that the digital economy currently contributed over 15% of the global GDP, and it is growing at nearly 2.5 times faster than the traditional economy. And I have shows that the difference between India and developed economy. India as a digital economy contribute 10 to 12% of the GDP with the growth by the digital payment, e-commerce and startup. And the developed economy contribute 20 to 35 of the GDP due to advanced infrastructure and mature market. So India is growing faster, but developing economy are currently more mature. And now, artificial intelligence is projected to add approximately 15 to 16 trillion dollar of the global economy by 2030, making it one of the largest economy driver of the 21st century. And AI adoption in the global economy shows that around 65 to 70% of global enterprises have already adopted some form of AI or automation in their operation. And now I want to show that the AI adoption is in India expand in sector like banking, agriculture, healthcare, governance, but still in the developing stage and around 30 to 40%. In the developing economy and developed economy shows that higher adoptions level 60 to 80% of firm with strong research and development investment and innovation ecosystem. And its impact on economically shows that digitalization has reduced the transaction cost, improved the productivity and enables new business model such as platform economies and gig work. However, studies suggest that up to the 30% of the current job could be partially automated by 2030, raising concern about employment and skill transitions.
and it is shows that the employment and skills. India is the largest workforce with growing digital skill, but skill gap and risk of job displacement due to automation remain concern. And it shows that developed economy, higher skill level, but reskilling system. And its impact on the global governance, like worldwide are adopting digital platform for service delivery, e-governance initiative had increasing efficiency and transparency. And policy implication is shows that AI enable predict analysis helping government design targeted welfare scheme and respond more effectively to economic and social challenges. And that there is so many challenges of the AI. Near 2.6 billion people globally still lack access to internet, indicating a digital divide. And the cybersecurity threats are rising with the global cybercrime cost expected to exceed $10 trillion annually by 2025. And these data point clearly indicate that digitalization and AI are not only transforming economy and governance system, but are also redefining policy framework worldwide. Therefore, this conference is both timely and essentially is the aim of explore how can we harness of the technology of inclusive growth. And in last, ultimately the goal should be build a balanced digital future, one that is innovative yet inclusive, technological advancement yet ethically grounded, and globally competitive yet social equity. And this is not just a technological transformation, but a transformative journey toward sustainable and inclusive development. Thank you. Thank you to all. Thank you, Dr. Amandeep Kaur. A very warm welcome to Dr. Alka Sharma ji and Dr. Balbir Singh ji. We are delighted to have you as well. Thank you, ma'am. It is now time for a very special and significant moment of today's program, a conference souvenir. A conference souvenir is not just a compilation of papers and messages. It is a reflection of collective knowledge, dedication, and the academic spirit of the event. I now feel privileged to request our esteemed dignitaries present on the stage, our guest of honor, President Sir, inaugural speaker, keynote speaker, our respected Principal Sir, to kindly proceed for the release of conference souvenir. At the same time, I would also like to invite our organizing team, the conveners, Dr. Amandeep Kaur, Dr. Mamta Rani, coordinators, Dr. Kusum and Dr. Barjinder Singh, organizing secretaries, Dr. Mukesh Chahal and Dr. Amit Kumar Tayaji, to please kindly come forward and join this proud moment on the stage. And Dr. Rajiv Kumar Gabaji, please come forward and join this moment on the stage.
This souvenir will remain a lasting testament to the scholarly contribution and collaborative efforts that define this conference. Along with the release of souvenir, we are delighted to have a special book release on the theme of women empowerment. This book has been thoughtfully edited by Dr. Kusum, Dr. Mamta Rani, and Dr. Amandeep Kaur. May I request our esteemed dignitaries for the formal release of this book. Thank you, everyone. Now it is the time to move ahead to one of the most anticipated segment of this session. It is my privilege to introduce distinguished academician and visionary thinker for the inaugural address. Professor Dr. Madan Mohan Goyal ji is a renowned economist, a motivational speaker, and propounder of the Nidonomic School of Thought. He has an illustrious academic career spanning over 4 decades of teaching and administrative experience. He has served as Vice Chancellor of Starex University, Gurugram, and Jagannath University, Jaipur, and has also held prestigious position at Kurukshetra University, Kurukshetra, and Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, an institution of national importance. Professor Goyal has been widely recognized for his contribution at both national and international levels. With more than 600 research publications, several books, and his contribution to academia is truly remarkable. Now, it is my great honor to invite Professor Dr. Madan Mohan Goyal ji to kindly deliver the inaugural address. Thank you, Dr. Radhika Khanna, speaking kind words about me. I am a humble teacher coming from Kurukshetra. Honorable President of the College Managing Committee, Chaudhry Tejveer Singh ji, Dr. Virender Pal, Registrar, Kurukshetra University, Dr. Ravinder Baliala ji, Dr. Jayanti Datta ji, Honorable Principal, Dr. Rishipal ji, many of the new principals, fraternity of teachers, and dear participants. I'm happy to get the invitation for this wonderful conference today, for which I'm grateful to the organizers, Principal Dr. Rishipal and Dr. Amandeep Kaur for providing this opportunity. I have many sweet memories with this institution, including knowing personally Chaudhry Ishwar Singh ji, former Speaker of Haryana Vidhan Sabha, and one of my colleagues, Dr. M.S. Khanchi, who has given a vision to this institution for many years. I was telling to you that I have come from Kurukshetra. Kurukshetra is known to the entire world. Sadly for Mahabharata, I, being a student, teacher, and researcher, always say, remember Kurukshetra as a place to be the first ever university on the planet. Dr. Virender Pal ji, remember Kurukshetra as a place to be the first ever university on the planet. Because the objective of a university is to get knowledge. And the best possible knowledge has been given by Lord Krishna himself in the form of Bhagavad Gita. Let me tell you, Bhagavad Gita is a ism-neutral, religion-free treatise on management, relationship management, and welfare economics. To move on the ladder of success for becoming Sikshit Bharat and Viksit Bharat with morality, opulence,
victory, and empowerment. Believe in Krishna as God and Arjun as our own soul. And that is called Ek Shloki Gita. If you put it in Google search engine, you will get Yatra Yogeshwar Krishna, Yatra Parthur Dhanurdhar, Tatra Sri Vijayo, Bhutarduta Nitarmatar Mam. After Mahabharata was over, Lord Krishna and Pandav shifted to Delhi in Indraprastha. They were in a celebration mode. They were enjoying together. They were eating together. They were dancing together. After a few days, Krishna told Arjun that I want to go to Dwarka. Arjun said, you can go to Dwarka, but before going to Dwarka, give me the message of Gita again. Lord Krishna laughed. It is not an action replay which can be done again and again, but if you want, I can give you some message, and that message is called Anu Gita. Anu means after Mahabharata. And let me tell you, this message is not for moksha, as most of the Kathavachak talks about Gita. Anu Gita talks of Jivan Mukti, doing good deeds during your lifetime so that you need not to worry after death. And that applies to the entire fraternity of educationists, including Chaudhry Tejveer Singh, Jayanti ji, Vrinder Pal, Ravinder ji, principal, who don't need moksha after death. Let me honestly tell you. Because the contribution we are making towards education is a kind of dedication, devotion towards making India Sikshit Bharat and Viksit Bharat. With this note, let me come to the topic of discussion today. The PPT, please. Today, when I was thinking to come out with this title, which has rightly been conceived by the organizer as Impact of Digitalization and Artificial Intelligence on Global Economy, Governance and Policy, I thought it that why not to conceive something on ethical governance for artificial intelligence in Nidonomics perspective, which I am promoting through my book, Gita-Inspired Nidonomics, A Sustainable Future for Pragmatic Solutions. In this tone, let me tell you that even if you have read today's newspaper, The Tribune had an editorial. And keeping in mind that editorial, you will find we are victim of many cyber crimes. Cyber crimes are taking place every day. And that editorial tells that practically the victim of digital crimes, including digital arrest, these are managed, manipulated, and monitored with artificial intelligence more than deceiving the victims. Keeping in mind that, I have come out with this topic, ethical governance of artificial intelligence. Artificial intelligence, second slide. Yes, sir. Sorry. Yeah. Artificial intelligence is not just a technological shift, it is a moral revolution. Gita-inspired Nidonomics promotes mindful, ethical innovations in artificial intelligence. For becoming Viksit Bharat and Sikshit Bharat, understand Bharat. Let me honestly tell you,
Most of the people in my beloved Bharat do not understand what Bharat is. Before 10 years back, I was looking after General Study Paper 3 in UPSC. There I asked a question, what is the difference between Bharat and India? Most of the people wrote, Bharat lives in villages and India lives in cities. Whereas, today it has become relevant to understand what Bharat is. Bha means knowledge, Rat means seeker. Bharat is a knowledge seeker economy from the very beginning. That is why we have been enjoying the status of Wish Guru. So far India is concerned, you can ask the ladies who are educating their children at school level, they will find in English dictionaries, India is independent nation declared in August. Otherwise, we have been talking about Hindustan, Indus Valley civilization and all that. But today it has become relevant. When we talk in terms of Viksit Bharat and Siksit Bharat, we must understand Bharat as a knowledge seeker economy. Practically, the objective of ethical governance of artificial intelligence is to urge upon all the stakeholders of the economy shifting from monkey mind, I call it greed and chaos, which is taking place by misusing artificial intelligence. I have told you that today's newspaper, The Tribune, says that we are talking of digital crimes being manipulated through artificial intelligence. I justify that this artificial intelligence can be divine if we convert this monkey mind to monk mind by making use of spiritual intelligence. The Nidonomic School of Thought, as a Kurukshetra-based think tank, provides a framework to understand and address the challenges, ensuring that we continue to serve as a knowledge hub in the digital age. Future of economies must align with principles of efficiency, accessibility, and societal well-being as mandate of Nidonomics, economics of needs. Let me honestly tell you, problems of all kinds prevailing in the society today, including the war between Iran and Israel, Russia and Ukraine, and many other war of words which are going on around the world. It is because of greed. I call it greedonomics. And the solution lies in understanding, analyzing, interpreting, and adopting this needonomics, which I call economics of needs, which has practically come from the logo of the LIC of India, something being written down the hands. Yogam Kshemam Mahamyam. LIC claims your welfare is our responsibility. But I always say, Nidonomics, economics of needs, is a common sense approach which is ethical, non-violent, spiritual, and environmental friendly, coming from my Guru Gita in verse 22 of chapter 9, where Lord Krishna says, Anyanya chintanto mayojana paryupaste tesham nityabhyuktanam yogam kshemam mahamyam. Lord Krishna says, if you believe me completely, absolutely, and wholeheartedly, whatever you need, that I'll give you. Whatever you have, that I'll take care of. If I tell you, I don't have LIC policy till today, but the moment I understood this conceptualization, Nidonomics, from my Guru Gita, I felt insured. I might have created 101 needs that stand fulfilled, including many of the assignments I got it. Still, many things are in queue. Therefore, Nidonomics with 4 Ds, duty, discipline, dedication, and devotion, we have to come out with
practically making use of artificial intelligence with monk mind making use of spiritual intelligence. What's the problem? It's not moving properly. Yeah, yeah. So practically, when we are talking in terms of becoming Viksit Bharat and Sikshit Bharat, making 30 trillion economy with per capita income of $18,000, we have to do what and what not. Why, when not, when not, where, not, for whom. This question should ponder over the minds of all the stakeholders of the economy, including the politicians, including the bureaucrats, the teachers, the students, the scholars. Practically, need to use wisdom and understand this WWW, which computer people say World Wide Web. But I always say, remember WWW to become Sikshit Bharat and Viksit Bharat as working without worries, in spite of the fact there may be many challenges. Whether we talk of making India digital, whether we talk of making India Sikshit Bharat or Viksit Bharat. Many of the politicians don't talk about overpopulation, which we will know in the 2027 how many we are, which is a challenge number one, practically to become Sikshit Bharat and Viksit Bharat, even implementing the national education policy, which has been conceived in 2020. But I have been talking about many challenges, even in implementation of national education policy, including 4 categories of people. I call them careless, caredless, useless, and useless. The challenge before us is how to make them careful and useful. That is the challenge for us practically to go in for solving the problems. I have identified some issues which I will be talking to you, and these issues can very well be handled, tackled by understanding this 360-degree development of needonomics, which I call economics of need. It has 4 components. Needo-consumption. Needo-consumption not only of food, but time, use of even social media, use of your internet, artificial intelligence with mindfulness. I call it needo-consumption. And let me tell you, the moment we think of becoming mindful in our behavior, using food, time, artificial intelligence, and the digital movement of our beloved Bharat to become Viksit Bharat and Sikshit Bharat, it is not possible by adopting this conceptualization of needo consumption. So far, needo production is concerned. Government of India has come out with number of programs: Make in India, Skill India, Digital India, Startup Scheme. We have to increase our production capacity to become Viksit Bharat. That calls for entrepreneurship as a movement. I personally believe entrepreneurship and manufacturing is going to fail, miserably fail, because the goods are already existing in the market. You go to any mall, any departmental store. Therefore, by making use of Digital India, artificial intelligence, we should think of entrepreneurship in services. Entrepreneurship in services means not the traditional services, but making use of this artificial intelligence. I would like to draw your kind attention. Many of my students are sitting here. We were having a 6 gentleman student from a very small place, Narayangarh. After passing out his MBE, he went to that village
and started working on one PC. That time laptop was not there. And he started filing income tax returns and sale tax returns. Today we call GST. You will surprised to know the gentleman now is filing income tax returns not only for Indians, but for Americans and Britishers. Meaning thereby, living in a small place, even like Kaul, any student can come out with providing these facilities of entrepreneurship in services, making use of artificial intelligence. So far, distribution is concerned. The problem is here. Even in the present time of war, when supply chain is broken, we are finding many things inflation impacted and prices are increasing. People don't have purchasing power. In that scenario, how to come out with solutions of the global economy suffering from recession caused by demand? For that, we have to adopt this needonomics by creating need, making the product affordable, and pricing worth of it. I call it NAW approach of marketing, which is required to be understood, analyzed, interpreted, and adopted at all levels, from local level to global level, as international marketing strategy. Last but not the least is a component we call about needo trade. In the present times, when the entire world is a victim of terrorism of Trump, we must learn something from our women, how to go in for art of bargaining, art of negotiating. That can be applied at any level. Any woman can tell you how she bargains when she buys a sari. Same thing can be applied at national and international level. How to go in for understanding, adopting this art of negotiation, art of bargaining. With this practically, we can teach a lesson to Trump, who are making global economy as a slave, although he is looking forward for Nobel Peace Prize being promoted by Pakistan. Is it possible? Therefore, the time has come when we have to understand this 3-degree development of needonomics practically to find the solutions for the global economy as well as Bharat to become Sikshit Bharat and Viksit Bharat. Therefore, education of needonomics in this 3-degree development of needonomics we have to talk about. I have identified some issues which I'll take it a little time for that. Ethical governance and artificial intelligence is foundational, not optional, for becoming Sikshit Bharat, for Viksit Bharat, more than 30 trillion economy. AI and the new grammar of governance using artificial intelligence promises a greater efficiency, precision in targeting, reducing of leakages, evidence-based policy making, and optimal utilization of budgetary allocation. Positive functions and uses of AI for digital Indian as e-business, e-banking, e-marketing, e-teaching, etc. Gridonomics versus needonomics in artificial intelligence era of governance. There are many challenges for artificial intelligence, not technological failures, but governance failures rooted in gridonomics. AI cross sectors, an economics perspective for education, healthcare, agriculture, and governance at all levels. Needonomics talks of ethical architecture for AI-enabled public finance as ethical spine. I wish to draw kind attention of all the students of economics. They know it that during 2026-7 budget, the Prime Minister has come out with making arrangements of artificial intelligence. And during her speech, she has spoken 9 times
the word artificial intelligence. But she has allocated only 1,000 crore rupees for India AI mission, but states that physical outlays must translate into outcomes guided by moral responsibility. Here I must draw your kind attention. In the budget 2025-26, the allocation was double, 2,000 crore rupees. But we would hardly utilize only 870 crores, meaning thereby 1,000 crore rupees is justified by the finance minister in the budget 2026-7. Gita inspired ethics for artificial intelligence, perform our duties without attachment to results. Redefining development for Viksit Bharat calls for human well-being, social trust, and sustainable outcomes for need of happiness, health with honesty of purpose. Cyber criminals and hackers are increasingly using artificial intelligence to launch even more sophisticated attacks on online-like activities, including e-business. As I told to you, today's editorial in the Tribune conveys more than what it reveals. Future vision is 4C model: conscious use, context-aware artificial intelligence, compassionate design, inclusive, accessible technology, and collaborative innovation, knowledge for public good, circular vision, sustainable, ethical impact. But at the same time, the time has come when all the stakeholders of the economy, starting from top to the lowest of the level, we need to become street smart. Although everybody knows what is smart. Everybody is possessing smartphone. When you put it in English dictionary, you will find over smart, stupid smart. But COVID has told us how to become street smart. Street smart is a person who understands the environment. You know, if we write down the history of education in India, before COVID, during COVID, and after COVID, you know it that before COVID, we were taking classes in the classroom. During COVID, we were taking online classes. After COVID, now it is online and offline, and implementing national education policy, talking of 40% online, 60% offline, although I personally believe it is not going to solve the problems. Therefore, we have to practically come out by becoming street smart, by understanding the environment. And that talks of the transparency. Transparency has been talked about by artificial intelligence. I appreciate the uses. I also use it. And let me tell you, I started using artificial intelligence first by using Google Assistant, which I learned it from my grandson. After that, these days we go in for making use of many things, including ChatGPT, but uses are fine. Misuses, as I told to you, are taking place, and to stop these misuses, we have to be alert, aware, and awake in making use of this artificial intelligence. Otherwise, we are going to miserably fail. And we have to work with responsiveness. Responsiveness is the name of the game. We have to be action-oriented. We have to adopt a moral attitude. And above all, we need to become simple. Mahatma Gandhi has been talking of simple living and high thinking. But I, being a student, teacher and researcher, living in Kurukshetra, always say simple living and no thinking. No thinking does not mean that we should not think. We should think of those things which are in our control, and we should not think of those things which are not in our control. And that is the message of my Guru Gita also. You have a right on your actions, not on the results. Therefore, while making use of digital India, artificial intelligence, we should stop this monkey mind, which is dictated by greed and chaos, and convert your mind into monk mind, becoming simple. And for that, we must enhance our emotional quotient. We have to motivate ourselves, motivate others, and then empathize with others. We have to have love oneself attitude.
We have to have physical development, health, culture we have to develop, and we have to go in for mental level development. Let me honestly tell you, I was telling you that we are victim of wars. We are victim of war of words. We are victim of blame game. We have to stop that. We have to change our looks. We have to change our actions and words to make it law of the land. I call it LAW. We have to change our looks, actions, and words to make it law of the land by changing the mindset of all the stakeholders of the economy by making use of artificial intelligence towards Viksit Bharat. And above all, we must possess higher spiritual quotient. As I told to you, that artificial intelligence can become divine by making use of spiritual quotient which is related with your soul, and you can become a monk mind. Therefore, we have to be using artificial intelligence. Personally, I am not an adversary. It reflects our intention. If guided by neuronomics and spiritual intelligence, AI becomes a divine instrument. We have to face Chakravyuh challenges and solve the socio-economic problems. I call Cobra effect also. Cyber security as a way for Viksit Bharat. We must build sensitive societies, not just smart cities. We need ethically empowered minds, not just intelligent machines. We become an autonomic civilization by dharma, dignity, and discipline. From artificial intelligence to authentic intelligence, where innovation meets introspection and science meets soul. We must adopt neuronomics for the multiplier effect of our collective commitment toward Viksit Bharat at the rate 2047. Users of artificial intelligence have to be alert, aware, and awake with Vivek and ethics. We need to become street smart and simple to achieve anything and everything practically to solve the problems. In synthesis of public finance, artificial intelligence, and ancient wisdom lies in efficiency with ethics, intelligence with wisdom, development with dignity, and growth with goodness. Therefore, instead of just becoming Viksit Bharat with 30 trillion economy, we practically need to think of need of happiness and need of health, and that talks of stopping the victims of digital arrest, which are managed, manipulated by artificial intelligence, more than practically deceiving them. Fake dashboards stimulated by fake officials have to be stopped, and practically for that, we need to be vigilant. We have to be alert, aware, awake for making use of artificial intelligence. With these words, I am grateful to the organizers for providing me this opportunity to share my thoughts to you in making use of artificial intelligence and fetching the fortunes from digital India and practically becoming Sikshit Bharat and Viksit Bharat. Thank you. Thank you, Professor Dr. Madan Mohan Goyal ji, for your truly enlightening and intellectually enriching inaugural address. Your profound insights drawn from your vast experience, and we are deeply grateful for your valuable words and gracious presence. Meanwhile, a very warm welcome to Professor Dr. Ram Kumar Foyal ji from Nepal and Dr. Surender Nagia ji from Government College Gharonda for your gracious presence. Now, we are delighted to have a special book release on the theme of women empowerment. This book has been thoughtfully edited by Dr. Kusum, Dr. Mamta Rani, and Dr. Amandeep Kaur. May I request our esteemed dignitaries on the stage and editor of this book for the formal release of this book.
This publication stands as a significant contribution toward promoting awareness and empowerment of women in society. Thank you all. After such an inspiring and intellectually enriching inaugural address by Professor Madan Mohan Goyal ji, we now move forward to another significant segment of this session. It is now my privilege to introduce our esteemed keynote speaker, Professor Jayanti Datta ji. Ma'am is a professor and program director at the Malviya Mission Teachers Training Center, Punjab University, Chandigarh. A biologist by training, her area of expertise include public health, higher education, and faculty development. With over 25 years of rich academic and training experience, she has contributed immensely to the professional development of teachers across the country. She has designed and coordinated numerous training programs, worked with the thousands of educators, and has an impressive records of research publications, books, and academic contributions. She is also a recipient of prestigious national recognition, including an award by CSIR for her work in science communication, reflecting her multidimensional excellence. Now, it is my great honor to invite Professor Jayanti Datta ji to kindly deliver the keynote address. Ma'am, I request you to please kindly grace the podium. A very good morning to all of you. Thank you very much for inviting me. Thank you, Dr. Amandeep, for asking me to come here, and for all the organizers of the college. I am not addressing the dignitaries on the dais. Neither I am addressing the principals who have come here, because this conference is for the researchers and this conference is for the students. So allow me to speak to them directly. It is really very amazing to come to this place, which is not at the center of a very vibrant city or a metropole, but coming at a place which is kind of Mufasal, a village, and finding here an event which is talking about the cutting edge technology of AI. And coming here not only holding a conference, but an international conference. And not only holding an international conference, but also having 250 papers in one day. I really wanted to understand what does it mean, and is it really as authentic as it seems, and what are we actually looking at. And therefore, I have also a PPT that I have brought, and I am not going to run that, because I thought that it is better to have some talk about the very basic things. So let me have a keynote. You know that a keynote address is the main address of any seminar or conference, in which the issues are discussed, the issues are raised, main issues are raised and flagged, and finally they are then discussed in the seminar. And that is why it is called a keynote. But I am not going to have a traditional keynote. If you allow, kindly allow me to have a keynote which is different, not a traditional one. Because in keynote, it's not a discussion, it's not an interaction. It's only a one-way dialogue where the
expert or somebody who is considered to be knowledgeable speaks and everybody listens. Let us have an interaction here. So if I ask you something, kindly tell me that. And if you don't tell me, then at least think about that. Let me start with a very basic question. This is a conference of economists. How do we define poverty? What is the definition of poverty? गरीबी की परिभाषा कैसे करते हैं? Right. What? Deprived of basic needs, right? Usually, all of you agree to this? Right. So what we say is commonsensical agar hum and I would also like to begin with a disclaimer. You know what is a disclaimer? Have you heard of this term? Oh, I have been given 30 minutes to speak, so I'll stop at 20 minutes past 12, right? Do you know what is a disclaimer? Have you heard of this term? Have you seen this term somewhere? Where do you see this term? कहाँ पे देखा ये word? Right. Every day when we watch a serial or a movie, the first slide is that of a disclaimer. And disclaimer in which we take away the claim, right? Similarly, I also take away the claim. I told you that this is not a traditional keynote address. I also want to disclaim, take away the claim that I am not from economics, but I am an informed citizen working in the field of faculty professional development. And from that experience and from that angle, I'm going to speak to you certain very, very basic things. So when you're not from economics, when you're not from finance or commerce, then when somebody talks about poverty, कि गरीबी क्या होती है, then we always talk of if you are not able to get the basic needs, if you're not able to fulfill your basic needs, right? और ज़्यादातर basic need में हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान. I have a friend, because we live in Chandigarh, it's a prosperous place. I have a friend who says he is very poor because he is not able to fulfill his basic need, which is a BMW, right? So then when such type of a claim actually makes you think that how do you define? And you would also agree that poverty is an abstract concept. Do you understand the meaning of the word abstract? Abstract की हिंदी क्या होती है? Abstract. Right. एक तो सारांश होता है जो हम पेपर के ऊपर लिखते हैं, जो आपने इस सोवेनियर में लगा रखे हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं. एब्स्ट्रैक्ट का एक मीनिंग और भी होता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग? जब हम स्कूल में, यस, दैट इज कॉल्ड भाववाचक संज्ञा. एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग which is opposite of concrete, right? Abstract is something which is not tangible. For example, love, honesty, right? Animosity, all these things are words which we can feel and understand, but which we cannot touch. It is not concrete, it is not material, therefore we cannot touch it, right? Poverty is an abstract word. Poverty भी ऐसा ही word है जो एक भाव है. ये हम सोच सकते हैं इसके बारे में, लेकिन टच नहीं कर सकते. But for an economist and for government, it is very essential that we have some kind of a something so that we can quantify. उसको थोड़ा अगर आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि गरीब परिवार कौन है, गरीब बच्चे कौन है, तो आपको कुछ ना कुछ क्वांटिफिकेशन करनी पड़ेगी. एब्स्ट्रैक्ट चीज़ की क्वांटिफिकेशन करना डिफिकल्ट होता है. जैसे आपको पता होगा कि हैप्पीनेस पे भी रिसर्च हो रही है. हैप्पीनेस भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है. हाउ डू वी क्वांटिफाई? तो उसकी डेफिनेशन पे बहस होती है. जब गवर्नमेंट कमीशंस बिठाती है, कमीशंस में रिसर्चर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि इस तरह से हम वी कैन कैच होल्ड ऑफ दिस आइडिया ऑफ पॉवर्टी. वन ऑफ द डेफिनेशन सेज you are poor or not poor depending upon the calories that you eat, right? बाद में उनको लगा कि ये इतना अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, ये बहुत इफेक्टिव नहीं हो रहा है. then they came up with another definition which says what are the things in your household. आपके घर में टू व्हीलर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, depending upon what are the things that you have in it. I am interested in the third definition which is very dear to me, and this third definition says a person is poor if he or she is not able to spend rupees 39 in a day in a rural area and rupees 43 in a day in an urban area, right? So please note that this is not about how much do you earn, but it is about how much you can spend. That is the purchasing power, right? What is it? Rupees 39 in a day
in a rural area and rupees 43 in a day in an urban area. Now we have young people sitting here, and I would like to throw a challenge to them. How many of you volunteer to spend one day by spending not more than rupees 39? Would you take the challenge? Is there somebody who would take the challenge? Okay, right. What's your name? Ekta? Rekha. So Rekha, how will you do it? Yeah. What will you do? Just you will not eat? Please give her the mic, please. No, ma'am, I will eat. You will eat. How will you manage? 39 rupees में कैसे manage करोगे सारा दिन? Yeah. Yes. It's difficult. It's ma'am. difficult, right? So this is what I want to draw your attention to is, do you think it is possible? It is not for people who are like us, like middle class, who are not very rich, even for us, just to think that there is a person who is spending not even rupees 39 in a day. It is quite impossible to think about, right? Let us keep this thing for a while and take away another thread. Let me ask you, how many people, what percentage of people in India are poor? What percentage of India are poor? Give me any number, percentage batao. Any guess? Anything, right? You know that percentage भी depend करती है कि आप कौन सी definition लेते हो, और इसके ऊपर depend करती है, but कुछ भी बोलो, give me a guess. Just think about it. 100%, 80%, 60%, 20%. Do you have an idea? Economics के लोग हैं सब, right? Okay. It is, government says that it is 20%. पहले वो कह रहे थे 25% है, अब वो 20% पे आ गए हैं, right? Government says it is 20%. Let us take the government statistics only. What is the 20% of 140 crores? Yes. What is the 20% of 140 crore? Yes, it is 28 crores, right? It is 28 crores. The population of Brazil is 24 crores. The population of Pakistan is 22 crores. The population of Nepal is 3 crores. And there are many, many European countries which will fall into this 28 crores. That means there is not 1 or 2%, or the life that we think is impossible is actually so many huge number of people in flesh and blood are actually living with so low purchasing power. And it is, the government is only saying, we are not inventing, because there are other figures also, but the government is itself acknowledging, right? So after that, let me ask you, why do you think these poor people who are not even able to spend rupees 39 in a day are spending their money on this international seminar? I hope you get my question. ये जो गरीब लोग 39 रुपये खर्च नहीं कर सकते एक दिन में, वो इस इंटरनेशनल सेमिनार पे अपना पैसा क्यों लगा रहे हैं? For a change, right? Okay. Fine. Yeah, do you have some idea? In an international conference in which people are not expected to do anything else, sit here, do nothing but intellectual deliberation. Sitting in a room which is AC, in a comfortable room, and then have sumptuous lunch, tea, and discussions. Right? Why are we spending money on this? And not only money, which is like, don't you think that it's a great gift which has been given to us? Don't you think that it is a great luxury that we are sitting here? Isn't it a privilege? So in this background, if I ask you, what is your duty?
during the seminar and what is your duty after the seminar? What will you say? या यू कैन कॉन्ट्रडिक्ट मी ऑल्सो, आप कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपको मेरे से सहमत नहीं है तो आप वो भी बता सकते हैं, बट मेरे को अपना पॉइंट बताइए आप. व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग द सेशंस एंड आफ्टर द सेशंस? Yes, please, anybody can raise your hand and we have a mic also. Ma'am, to drive some analytical conclusion for the upliftment of the society. Very good. What is your name? Dr. Amneet Kaur. Thank you, Dr. Amneet. Very good. I think isn't it obvious? It is very commonsensical कि हम यही बोलेंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि सरकार और सोसाइटी ये सोचती है कि टीचर्स को शार्पन करो, उनको एम्पावर करो, रिसर्चर्स को एम्पावर करो, और अल्टीमेटली इट विल परकोलेट डाउन टू द क्लासरूम्स, इट विल परकोलेट डाउन टू द स्टूडेंट्स, एंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स इट विल गो डाउन टू द सोसाइटी, और साइकिल पूरा हो जाएगा, गरीबों का उद्धार हो जाएगा. इस तरह से साइकिल चल रहा है, और दैट इज़ व्हाट वी थिंक. बट डज इट हैपन लाइक दिस? ये क्या ऐसा हो रहा है? क्या ये गरीबों का उद्धार इस तरह से हो रहा है? इस इंटरनेशनल सेमिनार से कोई उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो, डोंट से नो. आई एम आस्किंग यू टू थिंक. आई एम नॉट गिविंग यू एनी जजमेंट. आई होप यू नो, यू हैव रेड द तलिस्मा ऑफ गांधी. सारी CBSE बुक्स में होता है ये तलिस्मा ऑफ गांधी. हैव यू रेड द तलिस्मा ऑफ गांधी? डू यू नो अबाउट व्हाट इट इज़? Gandhi says that if you have any doubt, sometimes in your life, if you have any doubt that whether you are doing the right thing or not, at that moment, think of the most poor person. And then think that whatever you are doing, is it benefiting that person? If it is benefiting, then you are doing something worthwhile. But if it is not benefiting, then you are not doing worthwhile. So this is his formula that he has given, right? And this is what I ask you to question, challenge, and think. What will become, when we do this, when we complete this international seminar in the evening, whether the plight of the poor person will change or not? And within this question, and in this question is the inquiry of what do we do? How do we learn? If I ask you this question, that how do you learn? Conference में कैसे सीखना होता है? Have you ever thought about it? How do we learn? What do we do so that we learn? इसका एक formula, I am sure that you already know about it because it is a traditional thing. It says that there are 4 steps of learning. The first step is called Shravan. Have you heard of this word, Shravan? क्या होता है Shravan? No. To listen. To listen, right? श्रवण इज द फर्स्ट स्टेप, जिसको हम कहते हैं गुरु से सुनना, राइट? लेकिन सिर्फ सुनने से ही नहीं हम सीखते हैं, हम देख के भी सीखते हैं, पढ़ के भी सीखते हैं, एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं. तो श्रवण का जो मीनिंग है, रिप्रेजेंटेशन है, वो ये है कि जितने भी इनपुट्स आपको अपने फिजिकल सेंसेस से मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड श्रवण, राइट? सो श्रवण डजंट मीन कि उसमें दृष्टि नहीं आती है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं आता है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट. तो फर्स्ट स्टेप इज श्रवण. The second step is called Manan. And what does it mean? मनन का क्या मतलब होता है? No, मनन में शब्द आता है मन, right? मन में थिंकिंग नहीं होती है. मन में क्या होता है? What is there in the heart? Yes? It is the emotions which are in the heart. So जो second step है मनन का, वो ये कहता है कि आपको इमोशनली एंगेज होना है. जब भी आप कोई सेशन, जब भी आप कुछ सुन रहे हैं, आपको या कोई आप सीख रहे हैं चीज़, उसके अंदर उसको मन में लेना है और मन के साथ एंगेज होना है. दैट मीन्स यू हैव टू एंगेज विद इट इन एन इमोशनल मैनर, राइट? आप, एंड व्हाट इज़ इट? फॉर एग्जाम्पल, आपने जब आप क्लास करते हैं, जब टीचर्स से क्लास लेते हैं, एंड यू हैव स्टडीड, कई क्लासेस ऐसे होती है जिसमें बहुत बोर लगता है,
राइट, बोरिंग लगता है। कईयों में ऐसे लगता है कि इस क्लास से तो जिंदा ही नहीं निकल पाएंगे, राइट। कईयों में हमें खुशी होती है, जॉय लगता है, कोई चीज़ समझ आती है, एनलाइटनमेंट होती है। और कईयों में हमारे को वी फील लाइक वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद इट। सो यू हैव टू थिंक इन योर हार्ट, मुझे कैसा लग रहा है, व्हाट इज़ योर इमोशनल स्टेट। यू कैन बी एंग्री, यू कैन बी इरिटेटेड, यू कैन बी बोर्ड, anything, but you have to engage emotionally. Emotion engagement, emotional investment अगर हम नहीं डालेंगे learning में तो learning नहीं होगी, right? Then comes the third step, and the third step is called Chintan. Now what is this meaning of the Chintan? Means to? Chintan means to think, right? Now if I ask you, do you think, what will you say? What will you say? Do you think? Right? People say yes, we think. So let me ask you, when you got up in the morning today, आपको कौन सा महान विचार आया? मुझे तो ये विचार आता है कि थोड़ा सा और सो लेते हैं, right? बात ये है कि हम अपनी सारा दिन और सारी लाइफ बिना सोचे निकाल सकते हैं। हमारे को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। And you also don't think. When you get up in the morning, you plan. You plan कि ये करना है, वो करना है, उधर जाना है, आपको काम याद आते हैं, but you do not think. These things every day, getting up, getting dressed, eating food and then going to the class, teaching, does not need thinking. For thinking, you need to take a pause. In your whole day, have you kept some time for thinking? Because thinking is difficult. And that is why the whole society is not engaged in it. इसीलिए थिंकिंग सिर्फ बुद्धिजीवियों का काम है, इंटेलेक्चुअल्स का काम है। हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इवन आर्मी के लोगों को या बैंकर्स उनको नहीं बोलते हैं कि आपको सोचना चाहिए। But teachers have to think, researchers have to think, because it is their duty. Society has given them this duty. Chintan. And Chintan means reflection, pondering, right? Thinking deeply, analyzing. I will not call meditation because meditation goes into that spiritual kind of thing, but meditation also means actually to think deeply. And without thinking you cannot teach. Without thinking you cannot do research. And then we come to the fourth step, which is the most difficult and which is the most unheard of. I'm sure that you must not have heard of this word. इसको कहते हैं निधिध्यासन. निधिध्यासन. NIDIDHYASAN. निधिध्यासन. Now what does it mean? निधिध्यासन. निधिध्यासन का मतलब है to bring it in your conduct. आपने सुन लिया, मनन भी कर लिया, चिंतन भी कर लिया, but if you don't bring it in your conduct, you have not learned. You have not learned. ये वैसे ही है कि जैसे आप बाजार से बहुत अच्छा अच्छा खाना खरीद के लाए, food stuff, food ingredients, and you make a very hearty meal, a very delicious meal. You cook a meal. आपने time भी डाला, effort भी डाला, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया. Then you keep it on the table and you do not eat it. If you don't eat it, will it give you nutrition? Will it become your flesh and blood? It will not. So this is what we are doing. The government is making the infrastructure. The public is giving you money. The organizers are making this whole effort to have this big seminar. But if the last step is not done, if the last leg is not done, then it is all futile. And who is to do that last step? It is you who has to do that last step of learning and finally conducting, bringing it into our conduct and internalizing. I am reminded of a short story in Mahabharata which says there was one day the Guru taught everybody a lesson. The lesson was Satya bolo, Asatya mat bolo. And next day the Guru asked, has everybody learned? तो सभी ने कहा कि हमने सीख लिया, हमें याद हो गया, उन्होंने पाठ सुना दिया. लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ.
फिर गुरु ने कहा चलो अगले दिन करके लाना। ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा कि तुम कैसे हो, सभी शिष्य याद कर चुके, तुमको याद क्यों नहीं हो रहा है? तो उसने कहा, हाउ कैन आई क्लेम दैट आई हैव लर्नड बिकॉज आई हैव नॉट येट बीन एबल टू ब्रिंग इट इन माई कॉन्डक्ट. I can't say I have learned because I have not yet bring it into my conduct. So this is what true learning is. Learning is not about degrees or getting certificates, reading a paper. It is not that. And that is what is the gap between why is it our country is not able to progress? Because that gap is huge. Everywhere the duty is not being performed. जिसकी जो duty है वो नहीं कर रहा. स्टूडेंट की ड्यूटी नहीं कर रहा, टीचर की नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल की नहीं कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर उसकी नहीं कर रहा है. सो द चेक्स हैव फेल्ड. दैट इज द गैप बिकॉज दिस लास्ट लेग वी आर नॉट एबल टू डू. राइट? सो फाइनली आई कम टू माई लास्ट section, and that is, what is the role of this college? This college which has been opened by a philanthropic approach, right? You must be knowing that private colleges in pre-independence era were the site of resistance. जब ब्रिटिश imperialist गवर्नमेंट थी, उस टाइम एक अपना कॉलेज खोलना या कॉलेज खोलने की बात करना जो है वो एक तरह से अपने आप में रेजिस्टेंस था. क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो थे वहाँ पे तो इम्पीरियलिज्म ही पढ़ाया जाता था, वहाँ तो अंग्रेज़ों की बड़ाई पढ़ाया जाती थी. लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज थे वहीं पे ही रेजिस्टेंस और नेशनलिस्ट जो आइडियाज़ थे वो वहाँ पे डेवलप होते थे. इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरीका बनाया था कि हम इंस्पेक्शन किया करेंगे, और वो इंस्पेक्टर रखते थे और प्राइवेट कॉलेजों में जाके इंस्पेक्शन करके वहाँ पे वो देखते थे कि यहाँ पे कोई नेशनलिज्म की बातें तो नहीं हो रही हैं. राइट? So what does it mean to have a college here? What is the role of this college? I think this college can be a role model of everything that we are looking for. For sustainability, I am looking at, I would not shy away from saying the plastic bottles. Why do we need to have them? Isn't there any alternative? The wrapping. Why do we need to continue doing this thing? Why can't we stop and think? Is it needed? Why can't we stop? And these are petty things, these are small things, but these are the things which will take us to the sustainable future. Right? So I would just submit my last submission, and that is, I was looking at the souvenir and I found that there are really some very good papers in which people have done work, but many of the papers are just a rehash, an essay. Right? So we must have to improve the quality of the research that we are doing. Even if you don't need to do a very, very big research. Please do a very, very small research. Very small one, but do it in a very exhaustive way, in which real findings are there. With this AI coming up, I don't know if you have an idea of this or not, that the rate of change is highly accelerated. It is extremely accelerated, so much that people are finding it difficult to keep pace with it. Teachers of computer science and AI are finding it difficult to frame syllabus, because today they frame, tomorrow something else is there. They cannot change their syllabus fast enough. Their syllabus has become obsolete, because whatever they will teach their student, it will ultimately be obsolete. So here also again we have to think about, so you can see, and then you know that AI, we need to have Indian AIs. Have you heard of Sarvam AI? Sarvam. Have you heard of Bhashini? Right? The Indian translator tool. India AI. Please go and find out these things, because in India, we cannot take the tools which have been created by China or created by USA, because our problems are different. Our problems are indigenous. They are our own problems. And that is why we need to use our brains. We need to use our thinking. The army of students whom you are creating, the army of researchers we are bringing up,
will not, will become useless with the traditional skills, with the traditional things that you are coming. They are becoming useless. And it is coming to you. Please be able to see that. Have you seen, I'm sure that you must be using WhatsApp for at least 10 years. Have you seen the changes that WhatsApp is bringing? Have you seen that every day there is some new feature? Right? What is it? It's changing fast. पहले एक चीज़ बन जाती थी, 50 साल भी कोई अंतर नहीं आता था उसके अंदर. Every day now we see new changes. It is coming so fast that it is scary because AI can learn very fast. And it's catching up. Right? So I think that my final word would be that let us all promise to think in an original way, and before we teach, before we do research, to think on what are the things that we have to do and to sharpen our thinking skills, because the future that is coming with the AI, nothing will survive unless the human beings can think in a different, creative and productive way. So that is what is required. Thank you very much. If you want to ask any question or something, you are ready. I have still 2 minutes to go. If you can ask or comment on what I said. If you have any question or comment. Thank you. Thank you, Professor Jayanti Dattaji, for your insightful and inspiring keynote address. Ma'am, you present your ideas with uniquely engaging perspective and thought-provoking approach that captivated our audience. We are sincerely grateful for your gracious presence and thought-provoking words. Meanwhile, a very warm welcome to Professor V.N. Atriji. We are delighted that you have joined us. A very warm welcome, sir. Now, moving ahead, it is my privilege to introduce our esteemed guest of honor, Lieutenant Dr. Virender Palji, Registrar, Kurukshetra University, Kurukshetra. Sir is an accomplished academician and Associate Professor of English with rich teaching and administrative experience spanning over 2 decades. His area of expertise include Indian writing in English, native literature, and literary studies. He has made significant contributions to academia through numerous research publications, seminars, and research projects, and has also been actively involved in NCC. Sir has been honored on multiple occasions for his academic excellence and dedicated service. Now, it is my great honor to invite Lieutenant Dr. Virender Palji to kindly share his valuable thoughts with us. Welcome, sir. थैंक यू मैम. जयंती मैम ने अपने आप को एक्सक्यूज़ कर लिया था डायस पे बैठे हुए लोगों से और डायस के नीचे बैठे हुए लोगों से, बिकॉज शी वॉज सपोज टू डिलीवर की नोट एड्रेस. हाउएवर, I am not going to deliver any kind of academic address, so I must address all the dignitaries who are sitting on the dais and off the dais. Chaudhry Tejbir ji, president of this college, and I must tell that I have been visiting this college for many years, and the change that has occurred in this college over the years is commendable. The infrastructure that has been developed in this college can challenge the infrastructure of any urban college, even of IIHS Kurukshetra. Sir, kudos to you. Professor Ravinder Baliala ji, Professor M.M. Goyal, Professor Janti Datta ji, Dr. Mamta Rani ji, Dr. Amandeep Kaur ji, मेरे बड़े भाई बैठे हुए नीचे डॉक्टर कुशल पाल जी, डॉक्टर अनीता जून जी, मेरी बड़ी बहन बैठी हुई हैं, डॉक्टर आशिमा गक्खड़ जी, and Professor V.N. Atri ji. There are many more principals and teachers who have come from other colleges, though I am not acknowledging by their names, but I must acknowledge your presence because I don't know the names of all the people.
and all the people who have come from different colleges to present their papers, and students who are sitting here in the hall. Today, I must congratulate the team of this college for organizing such a seminar on very relevant topic, impact of digitalization and artificial intelligence on global economy, governance, and policy. And the impact of digitalization is visible to us all over, especially to people of my generation. Mobile phone was introduced when I was maybe 20 years old. And now mobile phone is changing our lives. And how digitalization is impacting us is visible even in the lives of policemen. In our lives, earlier we had to carry all the documents with us while driving a car. But now all the things that are being there in your phone are acceptable to the policeman. And they are also using this technology to challan us. They have all the digital copies of all the things, record of all the things in their phones. But as far as AI is concerned, ma'am has referred to Sarvam and all that has been developed by India. And we all know about ChatGPT and all. As far as AI is concerned, I am a skeptic. I'm not convinced of the uses of AI that we are putting it into. And why I'm not convinced? When I was a young boy, I watched a movie that was I, Robot. And there were many such movies in Hollywood, many such movies were made. Recently we had, maybe 5 to 10 years back, we had a Rajinikanth movie, Robot. After the introduction of iRobot, after the introduction of ChatGPT and all the other what you call AI tools, it seems that they are very near to us. And all these things can happen to us in very near future. Already we are facing problems in computer because now we don't know people to do coding. AI can do the coding. There are so many people, last time I was reading a book, I was reading in newspaper that 700 people have lost their jobs in Oracle. Because those people are not needed now as AI is doing all the job. Then there are certain problems. As an academician, I come across this problem every day. Whenever my student will appear with a synopsis, now I don't check synopsis for its material, but I check it for if it has been generated by AI. And most of the times, it is being generated by AI. Now, if I ask some student to make a news of something, they will put certain keywords in AI, ChatGPT, and the news will come. I remember when I was not used to mobile phone, I could remember many phone numbers. Now I struggle with my own phone number. All right, the impact this technology, this screen is having on us is immense. And we have to put full stop somewhere. ChatGPT or AI is still in its inception. It is still a child. When it grows up and becomes a young man or young woman, what will happen? All the human creativity will be gone. A novelist will be putting some keywords in the ChatGPT and a novel will come. A poet will put some certain keywords in ChatGPT and a poem will come. Though there are many positive aspects also, today only I was reading in the newspaper that there was an inscription in Fatehabad, and AI has detected that it has been altered by what you call Mughal invaders. And maybe we will be able to decipher the script by using ChatGPT, the script that has evaded decipherment for so far, Saraswati Sindhu script.
there might be many things that will be accomplished by AI in near future. But while paying attention to its uses, advantages, we also must pay attention to its disadvantages and dangers it poses to human beings and human civilization. An overemphasis on AI will put our creativity into jeopardy. Our creativity will be gone. Maybe, nowadays there are students who are doing their assignments by AI. The writing skills are already gone. I am remembered, there was a test of English, subjective test of English by HPSC in Haryana. 600 posts were, more than 600 posts were available, and only 157 or 161 people could clear that test. Why it has happened? What is the reason behind it? We have to ponder over all these things. Maybe it is overemphasis on what you call, when SMS was going on, I used to come across papers where a child will put because, spellings of because as B apostrophe COZ. And now the things are gravitating further, so we have to take certain precautions, we have to put certain full stops, and we have to take certain precautions to put AI as a servant, not as our master. Otherwise, AI is a kind of a toy that is fit only for gods. But now this has become a toy in our hands, in the hands of human beings, so we must be cautious of it. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Your words, enriched with experience and wisdom, have truly motivated us and added great value to this conference. We are sincerely grateful for your gracious presence and guidance. Now, it is my proud privilege to invite our respected college president, Chaudhary Tejveer Singh Ji, to deliver the presidential address. Sir's visionary leadership and constant support have been a guiding force behind the growth and success of this institution. Sir, I humbly request you to kindly grace the podium and share your valuable message with us. थैंक यू मैडम, हमारी स्टेज सेक्रेटरी महोदया। आज के हमारे बाबू अनंतराम जनता कॉलेज कौल के प्रांगण में हमारा एक दिवसीय इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड पॉलिसी पर इस सेमिनार में हमारे बहुत ही आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय, मंचासीन विद्वानगण, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर से पधारे हुए सम्मानित शोधकर्ता, प्राध्यापकगण एवं प्रिय प्रतिभागियों, आप सभी को सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम। आज इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इस गरिमामयी अवसर पर आप सबके मध्य उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गौरव, आत्मसंतोष और प्रेरणा का विषय है। यह आयोजन केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विचारों की ऊर्जा, ज्ञान की गहराई और भविष्य की दिशा का एक जीवंत संगम है, जहां से नीतियां जन्म लेती हैं और समाज के लिए नई राहें प्रशस्त होती हैं। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से हमारे बाबू अनंतराम जनता कॉलेज कौल के बहुत ही कर्मठ, मेहनती
और इंटेलिजेंट माननीय प्राचार्य डॉक्टर ऋषिपाल जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व, अकादमिक प्रतिबद्धता और सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे महाविद्यालय ने पिछले 6 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। आज हमारा कॉलेज न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता का प्रतीक बनकर उभरा है, बल्कि शोध, नवाचार और वैश्विक सहभागिता के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान भी स्थापित कर चुका है। यह सम्मेलन उसी प्रगतिशील सोच और संस्थागत ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस सत्र के उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनमोहन गोयल जी, जो कीनोट स्पीकर भी रहे हैं और जिन्होंने अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से इतना अच्छा आप लोगों के सामने अपना वक्तव्य पेश किया है और पूरे विश्व की बातें, ज्ञान की बातें, पूरे हिंदुस्तान की बातें, समय की ज़रूरत और जो आज का विषय है उस पर कितनी गहराई से और कितने अच्छे ढंग से इन्होंने अपनी बात रखी है। तो मैं सर धन्यवाद करता हूं। हम लोग सभी बहुत गौरवान्वित हैं आपको अपने मध्य में पा करके और आपका उद्बोधन सुन करके। बहुत ही बड़ी बात है कि आपका शिक्षा जगत में आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं 2016 में, और उसके बाद देश की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो गुरुग्राम में यूनिवर्सिटी है, चाहे देश के और अन्य राज्यों में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जयपुर में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज़ में आप वाइस चांसलर के पद पर रहे हैं और आपने उन यूनिवर्सिटीज़ को बहुत आगे बढ़ाया है। तो मैं इस अवसर पर आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, और आपसे हमारे जो बच्चे हैं आज के, उनको बहुत शिक्षा और बहुत ज्ञान मिलेगा और वो अपने जीवन में इस बातों को, जो आपने बातें रखी हैं, उनको आत्मसात करके अपना अच्छा करियर बनाएंगे। आज इस अवसर पर मैं हमारे विशिष्ट अतिथि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के माननीय रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी का भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस आयोजन को एक नई ऊंचाई प्रदान करी है। आपने भी बहुत अच्छा वक्तव्य सबके सामने रखा है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे की नोट स्पीकर प्रोफेसर जयंती दत्ता जी का भी मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में प्रोफेसर हैं। आपका अनुभव, आपकी दृष्टि और आपकी विद्वत्ता इस सम्मेलन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपने बहुत अच्छा वक्तव्य हमारे सभी शोधकर्ताओं के बीच में, हम सब के बीच में आपने रखा है। और हम लोग जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर रविंदर बलियाला जी, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे विधायक साथी भी रहे हैं हरियाणा विधानसभा में, और एससी कमीशन हरियाणा के चेयरमैन साहब भी हैं, और IIHS कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है उसमें इकोनॉमिक्स के माननीय प्रोफेसर भी हैं। हम अभी जिक्र कर रहे थे कि प्रोफेसर मैडम जयंती जी तो लगता है JNU यूनिवर्सिटी दिल्ली से पढ़ करके पढ़ाई इन्होंने पूरी करी है और बहुत अच्छे ढंग से अपने विचार, एक क्रांतिकारी विचार इन्होंने अपने रखे हैं। आपको पता है कि स्वामी विवेकानंदा जी जो वेस्ट बंगाल में पैदा हुए, न केवल पूरे हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के महान विचारक, महान संत, महान धार्मिक गुरु हुए हैं, वो भी दत्ता परिवार में ही पैदा हुए थे और हमारी प्रोफेसर मैडम भी दत्ता परिवार से ही हैं। आज के हमारे इस आयोजन में हमारे जो अपने कॉलेज की प्रोफेसर मैडम हैं डॉक्टर ममता रानी जी और डॉक्टर अमनदीप कौर जी, हाँ कोई बात नहीं,
आपने इस आयोजन के लिए बहुत प्रयास किया है और एक बहुत अच्छा आयोजन आपने किया है। इसके लिए मैं और सभी जो हमारे और सदस्य भी हैं इस टीम के, उनका भी मैं अपनी ओर से हार्दिक प्रशंसा भी करता हूं और कृतज्ञता भी प्रकट करता हूं। हमारे आप सभी के सूक्ष्म नियोजन, अद्भुत समन्वय और अथक परिश्रम से इस सम्मेलन को न केवल एक कार्यक्रम बल्कि एक सफल, सुसंगठित और प्रेरणादायी आयोजन के रूप में आपने इस वन डे सेमिनार को स्थापित किया है। और ये बहुत बड़ा सेमिनार है, इंटरनेशनल सेमिनार है, क्योंकि आपकी सबकी प्रेजेंस और ये हाइब्रिड मोड में है, तो ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी इसमें बहुत से शोधकर्ता जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा सेमिनार का आयोजन आप सब ने मिलकर प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में किया है। आपको मैं दोबारा से इसके लिए मुबारकबाद अर्पित करता हूं। आज के इस सम्मेलन का जो विषय है, डिजिटलीकरण एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक अर्थव्यवस्था, शासन एवं नीतियों पर प्रभाव, आज के युग का केंद्रीय विमर्श है। आज के युग में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और आपके सामने है कि किस तरह से पिछले 11.5 साल से हमारे देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल क्रांति का एक स्वर्णिम युग हिंदुस्तान में शुरू किया गया है और उसमें पूरी तरह से हिंदुस्तान इस मुहिम में अग्रसर है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से डिजिटल इंडिया, हमारे गोयल साहब ने भी इसके बारे में जिक्र किया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और बहुत से ऐसे अभियान हैं, क्योंकि हिंदुस्तान 140 करोड़ आबादी का बहुत बड़ा देश है और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भी है और एक बहुत 65% आबादी हमारे देश की नौजवानों की है। तो बहुत बड़ा महत्व आज के समय में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का है और उस कड़ी में उस सोच को आगे ले जाने के लिए जो पॉलिटिकल विल पावर चाहिए होती है, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक युग पुरुष हैं, कोई छोटी बात नहीं है और देवी शक्तियों का उन पर पूरी तरह से आशीर्वाद है और पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं और इतने सिंपल, साधारण, उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान, उनकी मेहनत और आपके सामने है कि किस तरह से सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता, उन्होंने अपना विजन भी प्रस्तुत कर रखा है। सब एक नारा भी दिया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का। तो वो 140 करोड़ देशवासियों को, पूरे देश को निरंतर पिछले 11.5 साल में जो उन्होंने तरक्की, उन्नति और प्रोग्रेस के नए आयाम स्थापित किए हैं और पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, वो हमारे सभी देशवासियों की मेहनत और सहयोग तो है ही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात नेतृत्व की होती है, पॉलिटिकल विल की होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अद्भुत नेतृत्व है, जो विल पावर है, जो विजन है और उससे भी आगे बढ़ के पिछले 11.5 साल का जो कार्यकाल है, और हम उम्मीद करते हैं सबके लंबे समय तक परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो इसी तरह से जो उनका विजन है, एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा विजन है कि 2047 तक वो चाहते हैं कि हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री बने। तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो हर भारतवासी को, सबको मोटिवेट करते हैं, सबके लिए वो दिन रात लगे रहते हैं। और इस एज में भी आप के सामने है कि 75 इयर्स की हमारे प्रधानमंत्री जी की एज है और एक बार प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया कि किसी मेंबर पार्लियामेंट साहब ने उनको विश किया कि प्रधानमंत्री जी आपको 75वां साल के आप हो गए हैं, तो आप को मुबारकबाद है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि हाँ, अभी 75 ही हुए हैं, 25 साल अभी बाकी हैं। तो आप देखो कितनी बड़ी सोच प्रधानमंत्री जी की है
कितनी लंबी सोच है, और न केवल पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए कितनी बड़ी सोच है, और उसको वो आगे सबको लेकर के चल रहे हैं, और हिंदुस्तान को 2047 तक उन्होंने एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। इसमें हम सब लोगों का पूरा प्रयास होगा। और ये जो आज का सेमिनार है, जैसे कि हमारे गोयल साहब ने भी बताया और प्रोफेसर जयंती जी ने भी कहा कि हमें आत्मचिंतन भी करना है, सब लोगों को, बच्चों को भी, शोधकर्ताओं को, स्टूडेंट्स को भी, और सभी लोगों को, कि हम किस तरह से, जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने विचार दिया था, हमारे राष्ट्रपिता जी ने, कि हमें वो काम करना चाहिए कि जिससे पूरेस्ट ऑफ द पुअर जो है, हमारा जो काम है, वो गरीब से गरीब आदमी के लिए क्या बेनिफिट इस हमारे काम करने से होगा। तो इतनी बड़ी सोच जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दी थी, आज के हमारे स्पीकर्स ने भी इन बातों के ऊपर विचार रखा है कि हमें आत्मचिंतन भी करना है, मंथन भी करना है, मनन भी करना है, और सबके बारे में सोचना है कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देनी है, मॉरल शिक्षा भी देनी है, एथिकल शिक्षा भी देनी है, और उनका अपना अच्छा कैरियर भी बनना चाहिए, और अपने जीवन में वो तरक्की, उन्नति, विकास करें, अपने पैरों पर खड़े हों और अपना अच्छा करियर बनाएं, अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करें, टीचर से जितना हो सकता है उनसे सवाल भी पूछें, इंक्विजिटिव रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेकर के अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है बच्चों, जहाँ भी आपका दिमाग चलता है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो गेम्स भी हो सकता है, चाहे कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़, सिंगिंग, डांसिंग भी हो सकता है, और भी बहुत से फील्ड्स हैं जहाँ पर आप लोग अपना करियर बना सकते हैं, अपना जीवन अच्छे से बना सकते हैं। और जब हर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छा करियर बनाएगा, अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो अपने पेरेंट्स की भी आपने सेवा करनी है, उनका मान सम्मान करना है, और देश के एक जिम्मेवार नागरिक आपने बनना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हम सबको शिक्षा देते हैं, बताते हैं कि देश का जिम्मेवार नागरिक बनना है, ये देश हम सब का है, और जितना हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, जितनी शिक्षा लेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो देश भी उतनी ही प्रगति करेगा, और आने वाले समय में 2047 तक हमारा ये देश एक प्रगति डेवलप्ड कंट्री हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब के प्रयास से बनेगा। और आज इस अवसर पर मैं हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं, आदरणीय हमारे गांव के बुज़ुर्ग, महान शिक्षाविद, महान समाज सुधारक, और इस बहुत बड़े इलाके से जो आज़ादी से पहले एमएलए भी रहे, जिस इलाके में करनाल, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र सारे ज़िले आया करते थे, ऐसे महान हमारे इस कॉलेज के संस्थापक, हमारे एरिया के बहुत महान नेता, महान समाज सुधारक बाबू अनंत जी के चरणों में नमन भी करते हैं, और हमारे अपने प्रिय नेता चौधरी ईश्वर सिंह जी, जो 4 इस हलके के निर्माता भी रहे हैं, आधुनिक पुंडरी हलके के निर्माता भी रहे हैं, 4 बार यहाँ से एमएलए रहे, अलग अलग सरकारों में वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर रहे। हरियाणा स्टेट के जब 1966 में हरियाणा बना था, उसके पहले मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। पूरे हरियाणा में जो मंडियां हैं उन्होंने स्थापित कर रखी हैं। हमारा देश भी और हमारा हरियाणा प्रदेश भी पंजाब का से अलग होकर के छोटा भाई एग्रीकल्चर इकोनॉमी है यहाँ पर, तो सारे हरियाणा की मंडियाँ किसानों के लिए हमारे महान नेता, महान समाज सुधारक, महान शिक्षाविद चौधरी ईश्वर सिंह जी ने पूरे हरियाणा में स्थापित करी थी। और फिर डिप्टी चेयरमैन हरियाणा स्टेट प्लानिंग बोर्ड भी रहे 1982 से 87, और सारे हरियाणा की सरकार के लिए, पूरे हरियाणा के लिए बजट माननीय फाइनेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान से वो उनकी ड्यूटी थी चौधरी साहब की, वो लेकर के आते थे। और हरियाणा विधानसभा के 1991 से लेकर के 1996 तक स्पीकर हरियाणा विधानसभा भी रहे।
तो ऐसे महान नेता जो धरतीपुत्र थे और सच्चे सपूत थे हमारे देश के और हमारे हरियाणा के, तो वो अनमोल रतन थे, जिनके संस्थान में हम लोग आज बैठे हैं, इस सेमिनार को कर रहे हैं। और उनका बेटा होने के नाते और इस मुझे भी मौका मिला है कि हम लोग सब बाबू अनंत राम जी और चौधरी ईश्वर सिंह जी के संस्कारों से, विचारों से, उनकी शिक्षा से, उनके ज्ञान से, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हम लोग अपने इस इलाके के और आसपास के इलाके के बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं, ना केवल यहाँ पर पढ़ते हैं बल्कि हमारे पुंडरी कॉलेज में भी और डांड कॉलेज में भी, हमारे 5 डिग्री कॉलेजेस इस इलाके में बाबू अनंत राम जी ने और चौधरी साहब ने बनाए हैं। तो हमें भी सेवा करने का एक अवसर हमारे सभी इलाके के लोगों ने, लाइफ मेंबर्स ने, डेलीगेट्स ने, जो इन संस्थाओं को बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, उन्होंने पिछले 28 साल से हमें भी एक मौका दिया है। और हमने भरपूर अपने बुज़ुर्गों से उनकी विरासत को, 75 साल पुरानी उनकी विरासत है, आप सब जानते हैं कि हमने भी पिछले 28 साल में किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिन रात हम लोग भी मिशन मोड में उनके संस्कारों से, विचारों से, उनकी शिक्षा से लगे रहते हैं। और उसके अलावा 2018 से मुझे हमारे 97 प्राइवेट एडेड कॉलेजेस हैं हरियाणा स्टेट के अंदर, उनके सभी प्रेसिडेंट साहिबान ने मुझे दायित्व दिया हुआ है। हमारी जो वेलफेयर एसोसिएशन है मैनेजमेंट्स 97 एडेड कॉलेजेस की, मुझे उसका प्रेसिडेंट बनाया हुआ है और तीसरी टर्म हमारी उस प्रेसिडेंट के तौर पे चल रही है। तो इस अवसर पर मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा, सभी बच्चों को भी, विद्यार्थियों को, शोधकर्ताओं को और सभी गणमान्य लोगों को, सभी प्रिंसिपल साहिबान को, कि जो भी हमारे नोटिस में आता है, हमारे सभी प्रेसिडेंट साहिबान हैं या प्रिंसिपल साहिबान हैं या प्रोफेसर साहिबान हैं, तो जो भी हमारे नोटिस में लेके आया जाता है कि हमारे मैनेजमेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे स्टाफ मेंबर्स को इन 97 एडेड कॉलेजेस में प्रिंसिपल साहिबान हैं, प्रोफेसर साहिबान हैं या बच्चे हैं जो 1.5-2 लाख से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी हम संज्ञान में लेकर के अपनी मीटिंग बुला करके गवर्निंग बॉडी की, तो हम हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हरियाणा जो 10 साल हमारे रहे, माननीय मनोहर लाल जी, उनके सामने भी हम लेके जाया करते थे। और अभी जो हमारे अपने एमपी साहब यहाँ से, हमारे कुरुक्षेत्र से श्री नायब सिंह सैनी जी, जो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी बने और फिर मुख्यमंत्री भी पार्टी हाईकमान ने उनको बनाया इस इलेक्शन 2024 के इलेक्शन से पहले 2023 में, और दोबारा फिर 2024 में इलेक्शन जीत करके वो हरियाणा की जनता ने उनको दूसरी बार हरियाणा का मेजॉरिटी से मुख्यमंत्री बनाया है। उनके सामने जो भी हम काम लेकर के जाते हैं, बड़ी खुशी से वो सारी बातों को सुन करके 97 एडेड कॉलेजेस की जो भी कोई मांग है या समस्याएं हैं, चाहे बच्चों की है, चाहे स्टाफ मेंबर्स की है, चाहे मैनेजमेंट्स की है, उनको सुन करके, उन पे संज्ञान लेकर के और बहुत अच्छे ढंग से उनका निवारण करते हैं। तो मैं आप सब से अपील भी करूंगा, एक बार तालियां बजा करके भी हरियाणा के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद भी करें इस अवसर पर। और हमारे उसी कड़ी में हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं श्री महिपाल ढांडा जी, बहुत ही नौजवान, ऊर्जावान, बहुत ही शिक्षित और बहुत ही ज्ञानी, उनसे भी हम इस कड़ी में मिलते रहते हैं अपने सभी 97 एडेड कॉलेजेस की जो भी मांगे हैं, और वो बड़ी खुशी से हमें माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी लेकर के जाते हैं और सारी बातें उनके सामने रखवा के, और जो उनके लेवल का है, क्योंकि माननीय एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ी पोजीशन है उनकी सारे स्कूल एजुकेशन की और कॉलेज एजुकेशन की और यूनिवर्सिटीज़ में, तो बहुत अच्छे ढंग से वो सारा अपना रोल निभा रहे हैं, ताकि हरियाणा बेशक छोटा प्रदेश है, लेकिन हरियाणा का बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में, हर फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में भी, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी, और हिंदुस्तान के जो मेडल्स वगैरह आते हैं, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, उसमें भी लगभग 38-40% हरियाणा के खिलाड़ियों की उसमें हिस्सेदारी रहती है। तो हरियाणा का एक बहुत बड़ा नाम है हमारे प्रदेश का। तो इस अवसर पर हमारे बहुत से प्रिंसिपल साहिबान भी, हमारे चाहे एडेड कॉलेज हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो भी आए हुए हैं। तो मैं इस अवसर पर
इनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर आशिमा गक्खड़ जी हैं हमारे दयाल सिंह कॉलेज करनाल से, हमारे डांड कॉलेज में वीसी नॉमिनी भी हैं। डॉक्टर सुभाष शर्मा जी हैं प्राचार्य गवर्नमेंट कॉलेज पेवा से, आपका स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर सतबीर सिंह जी हैं आईबी कॉलेज पानीपत से। डॉक्टर कुशल पाल जी हैं आईजी कॉलेज लाडवा से। डॉक्टर अलका शर्मा जी हैं एसडी कॉलेज अम्बाला से। डॉक्टर राजेश तुरान जी हैं हमारे डीएवी कॉलेज पुंडरी से। डॉक्टर अनीता जून जी हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज जुंडला से। डॉक्टर सुरेंद्र नांगिया जी हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज घरोंडा से। डॉक्टर बलबीर सिंह जी हैं जो हमारे यहाँ पर लगभग 8-10 साल यहाँ पर प्रिंसिपल रहे और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस कॉलेज को आगे बढ़ाया। आज इस अवसर पर हमारी डॉक्टर संगीता शर्मा भी हैं, बहुत ही हमारी कर्मठ और काबिल प्रिंसिपल हैं हमारे चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय डांड डडवाना से। और हमारे आज गोयल साहब ने भी जिक्र किया था, हमारे डॉक्टर मेहर सिंह खैंची जी यहाँ पर 10 साल प्रिंसिपल रहे। पहले वो यहाँ प्रोफेसर थे 1970s में, और उसके बाद फिर हमने लगभग 2002 में उनको यहाँ, जब हम प्रेसिडेंट बने तो हमने उनको यहाँ पर प्रिंसिपल लगाया। और बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट और बहुत विद्वान सुलझे हुए प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स ही उनका सब्जेक्ट है। और वो भी यहाँ पर 10 साल उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं यहाँ पर दी हैं। तो आज इस अवसर पर आप सभी ने इतनी संख्या में यहाँ पर इस सेमिनार में पार्टिसिपेट किया है, और सभी आदरणीय प्रिंसिपल साहिबान भी यहाँ पर आए हैं, और शोधकर्ता यहाँ पर आप लोग सब अपने पेपर्स भी प्रेजेंट करेंगे। तो इस अवसर पर मैं हमारे गोयल साहब का, प्रोफेसर जयंती जी का, हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी का, हमारे भाई साथी बहुत बड़े हरियाणा सरकार में एससी कमीशन के चेयरमैन साहब भी हैं और प्रोफेसर साहिबान भी हैं, डॉक्टर रविंद्र बलियाड़ा जी का, और हमारे बहुत ही कर्मठ प्रिंसिपल साहब डॉक्टर ऋषिपाल जी, और हमारे जिस आयोजन के समिति में हैं डॉक्टर ममता रानी जी प्रोफेसर, और प्रोफेसर डॉक्टर अमनदीप जी, और सभी आप लोग प्रोफेसर साहिबान जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और हमारे नॉन टीचिंग के स्टाफ मेंबर्स भी हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for your inspiring and thoughtful presidential address. Your visionary words and constant encouragement continue to guide us toward excellence. We are truly grateful for your esteemed presence and blessings. Along with this, I extend my respectful welcome to Dr. Smita Sharma ji from Punjab University, Chandigarh. Honorable dignitaries, as a token of our heartfelt gratitude and remembrance, we now move to the presentation of mementos to our esteemed guests. I humbly request our college president, Chaudhary Tejveer Singh ji, and principal sir, Dr. Rishi Pal ji, to kindly present the memento to our respected dignitaries. For this, firstly, I request to kindly present a memento to our guest of honor, Lieutenant Dr. Virendra Pal ji, as a token of our deep respect and gratitude. Along with the memento, we are also presenting a book on our founder, Chaudhary Ishwar Singh ji, and our college Golden Jubilee Edition magazine, Anant Shiksha, to our esteemed dignitaries. So I firstly request to present memento to our guest of honor, Lieutenant Dr. Virendra Pal ji. May we all kindly give a big round of applause.
I request again to kindly present a memento. I request again to kindly present a memento to our esteemed inaugural speaker, Professor Dr. Madan Mohan Goyal ji, as a mark of our sincere appreciation. Please present a memento, a book and college magazine edition. May we all kindly give a big round of applause as we witness this proud moment. May I request again to kindly present a memento to our distinguished keynote speaker, Professor Jayanti Datta ji, as a token of our admiration and gratitude. Now I request again to present a memento to Professor Ravinder Singh Balial ji. Now I request our principal sir, Dr. Rishi Pal ji, conveners Dr. Mamta Rani, Dr. Amandeep Kaur, organizing secretary Dr. Rajiv Kumar Gaba, Dr. Mukesh Chahal, Dr. Amit Kumar Taya, and coordinators Dr. Kusum ji and Dr. Barjinder Singh ji to kindly present a memento to our Honorable President Sir Chaudhary Tejveer Singh ji as a gesture of our heartfelt respect and gratitude. Now I request organizing team to present a memento to our principal sir, Dr. Rishi Pal ji. Thank you all. Now it's time to felicitate respected principals from various colleges. And I take this opportunity to honor the esteemed principal, Dr. Ashima Gakkarji from Dyal Singh College, Karnal. May I request our principal, sir, along with the organizing team, to kindly present a planter and memento as a token of our respect and appreciation. Thank you. Welcome, ma'am. I request organizing team, please join us on the stage to present planters and memento to our respected principals from various colleges. Now, we are delighted to acknowledge the gracious presence of respected principal Dr. Anita Junji from Government College, Jundla. We sincerely appreciate your encouragement to this academic gathering, ma'am. Government College Dadupur. Achha. Major Professor Anita. Okay. Major Professor Anita Junji from Government College, Dadupur.
At this moment, we extend our heartfelt regards to the principal, Dr. Sangeeta Sharma ji, from Chaudhary Ishwar Singh Kanya Mahavidyalaya, Dandadwana. It seems ma'am is not present here, so I extend my heartfelt regard to the principal, Dr. Rajesh Turanji from DAV College, Pundri. Sir, your presence adds great value and dignity to the occasion. It is our privilege to recognize the respected principal, Dr. Surinder Nagya ji from Government College, Gharonda. We are grateful for your support and participation in this event, sir. Now I take this opportunity to honor the esteemed principal, Dr. Kushal Palji from IGN College, Ladwa. Sir, your presence truly enriches this academic platform. We now honor the distinguished principal, Dr. Alka Sharma ji from SD College, Ambala. We are delighted to acknowledge the gracious presence of Dr. Alka Sharma ji, Principal, SD College, Ambala, Kent. Ma'am, we are sincerely appreciate your contribution and encouragement to this academic gathering. At this moment, I extend our heartfelt regard to the principal, Dr. Satbir Singh ji, IB College, Panipat. We are grateful for your participation, sir. We now honor the distinguished principal, Dr. Balbir Singh ji, from Guru Brahmanand College, Anjanthali. Dr. Balbir Singh ji. I think sir is not here with us. Done, sir. Balbir sir, sir, ho gaya. As we approach the conclusion of this inaugural session, it is time to express our sincere gratitude to all those who have made this occasion truly meaningful. For this, now I invite Dr. Amit Kumar ji, Organizing Secretary of this conference, to kindly deliver the official vote of thanks. धन्यवाद डॉक्टर राधिका जी। आपने मुझे आज इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अंदर इतने सम्मानित जनों का धन्यवाद करने का अवसर दिया, जो मेरे लिए बहुत ही गौरव व सम्मान की बात है। और मैं सबसे पहले हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हुआ विशेष आभार प्रकट करूंगा हमारे इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लेफ्टिनेंट डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी,
जो मेरे बड़े भाई भी हैं और रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पद पे कार्यरत हैं, आपने अपने कीमती समय में से जो समय हमें देकर हमें सम्मानित किया, उसके लिए हम और अपने विचारों से हमें प्रेरित किया, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रबंधक समिति के प्रधान पूर्व विधायक चौधरी तेजवीर सिंह जी का, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है। और मैं विशेष आभार और धन्यवाद प्रकट करूंगा कि जो आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर मदन मोहन गोयल जी, डॉक्टर जयंती दत्ता जी, जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से हमें हमारे आज के इस टॉपिक का विस्तृत वर्णन किया और हम किस प्रकार से उसका फायदा आम जीवन में और आम जीवन का व्यतीत करने वाले लोगों को हम दे सकते हैं। और इनके जितने वक्तव्य रहे वो इस सत्र को उन्होंने अत्यंत समृद्धि और उपयोगी बनाया। साथ ही मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ऋषिपाल जी का और इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम का, जो दिन रात अपने अथक प्रयासों से इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत रही। और अंत में मैं उन सभी प्रतिभागियों का, जो शोधार्थियों का जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाइब्रिड मोड से हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उनका भी विशेष आभार प्रकट करता हूं। और उनकी जो सक्रिय सहभागिता है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो उन्होंने इस सत्र को जो आज चला है उसको बहुत ही सार्थक बनाया। और मैं अंत में आप सभी का, छायाकार पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं और यहां पहुंचे सभी सम्मानित जनों का हृदय गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Dr. Amit Kumar ji, for your official vote of thanks. Honorable dignitaries, respected guests, and dear participants, now we resume our program with the plenary session, which is an integral and intellectually enriching segment of this conference. Thank you, sir, for your presence. अच्छा आपने स्टेज सेक्रेटरी का काम किया। We request everyone's kind patience for a moment while we are organizing the stage. We will resume the proceedings very shortly.
you, ma'am. We request everyone's kind patience for a moment, please. We'll resume our proceedings very shortly. क्योंकि उनके साथ जाएगी ना चंद्री दत्ता के साथ जाएगी पहले अकबरी सर का करवाया अमन मैडम से पूछ के बताओ अच्छा रुको जाओ 10 मिनट का ही फर्क पड़ेगा I request our esteemed dignitaries for plenary session, Professor V.N. Attri ji, Dr. Smita Sharma ji, to please kindly come forward and take their respective seats on the stage. We will resume our plenary session after a short break. हाँ जी. I invite Principal Sir, Convener Dr. Amandeep Kaur ji, Dr. Mamta Rani, and our plenary speaker Dr. Smita Sharma ji to please kindly come forward and take their respective seats on the stage. Along with this, I also invite organizing secretaries and coordinator Dr. Kusum ma'am. Hello ma'am, welcome. I request everyone to kindly bear with us for a moment. I would also like to invite Professor Dr. Ram Kumar Foyal ji on the stage for the plenary session proceedings.
Request everyone's kind patience for a moment. We'll start our proceedings very shortly. Technical team, please play the PPT of Dr. Ramkumar Foyalji. Okay, I think it's all right. Okay, started? Okay, all right then. एक नहीं चल रहा, अच्छा एक चलता है.
I respectfully invited Professor Dr. V.N. Atri ji to kindly come forward and have his respected seat on the stage. Professor V.N. Atri ji. Okay. We'll resume the proceeding very shortly.
Dear delegates, there is a little rescheduling of the program. All our esteemed dignitaries, only the plenary session speakers are requested to kindly proceed for the lunch and reassemble here on time for the post-lunch plenary session. I request the dignitaries, our invited speaker for the plenary session, to kindly proceed for the lunch and reassemble here on time for post-lunch plenary session. Only for our invited speakers and our plenary speakers. We'll resume post-lunch. You all are requested to proceed for lunch. And for participants, we'll have lunch after the plenary session. And we all will reassemble here after 20 minutes. Participants, we all are reassembled here after 20 minutes. We all will reassemble here after 20 minutes.
Respected participants, our guests have arrived. May I request our esteemed dignitaries, President Sir Chaudhary Tejveer Singh Ji, Principal Sir Dr. Rishi Pal Ji, and our eminent speaker and guest of honor of this plenary session, Professor V.N. Attri Ji, Professor Ram Kumar Phoyal Ji, Dr. Smita Sharma Ji, to kindly come on the stage and grace the occasion with their presence. Along with this, I also invite Professor Ravinder Singh Ji. Welcome. Honorable dignitaries, respected guests, and dear participants, I hope you all had a refreshing lunch. Now, we resume our program with the plenary session, which is an integral and intellectually enriching segment of this conference. To formally commence this session, I feel privileged to invite Dr. Kusum Ji, coordinator of the conference, to extend the official welcome. Ma'am, I request you to kindly come forward and grace the podium. Thank you very much, Dr. Radhika Khanna. It's a matter of immense pride and privilege to extend a warm and cordial welcome to the distinguished gathering on the occasion and highly praiseworthy. It is my profound welcome to our chairperson, Professor Neera Verma ji, a distinguished academic leader whose wisdom and guidance continue to shape higher education with remarkable clarity and commitment. And on this esteemed occasion, I would like to express our deep, sincere of gratitude and admiration for our respected worthy President Chaudhary Tejveer Singh Ji, whose visionary leadership, moral support, and commitment to the cause of education have been instrumental in creating platform like this. His constant encouragement inspires us to strive for excellence and to bring academic initiatives of such significant occasions. Now, I extend a very special and heartful welcome to our eminent speaker, Professor Ram Kumar Ji, a distinguished economist of international repute. Professor Ram Kumar Ji has made outstanding contribution in the field of development, economics, and policy research. His association with Tribhuvan University and his role as a former member of Planning Commission in Nepal reflect his deep engagement with both academia and policy making. His work seamlessly bridges theoretical insight with practical applications, offering valuable perspectives on economic transformation in developing economies. And I also want to welcome
Dr. Samita ma'am, and online speaker Professor Herbert. Both are eminent academicians and whose scholarly contributions and insightful research have been widely appreciated, and their contribution in the field of economy and policy is really praiseworthy. And then I extend my respectful greetings to our worthy principal, Dr. Rishipalji, and the principals from various esteemed colleges whose presence reflects strong academic collaboration and institutional unity. A warm welcome to all the faculty members, whether they are teaching staff and non-teaching staff, whose dedication and scholarly pursuits continue to uphold the spirit of learning and innovation. I welcome our participant and research scholars whose valuable contribution have added depth and richness in the conference. And a very special welcome to our dear students, the budding research scholars and future leaders, whose enthusiasm and curiosity are true driving force behind academic progress. And at this occasion, I would like to extend a special note of sincere appreciation to our delegates who have traveled from far and wide to be a part of this conference. We truly acknowledge their efforts and challenges you may face in reaching Kaul, which is situated in a rural area, and your gracious presence has reflected your dedication to academic engagement and knowledge sharing. And your presence has truly elevated the dignity of the session, and I congratulate Dr. Amandeep Kaur and Dr. Mamta Rani, the conveners of this conference, who are working tirelessly to make it a successful event. Lastly, I would like to welcome each and everyone who is directly and indirectly involved in this conference. Thanks a lot for your gracious presence. Jai Hind, Jai Bharat. Following the gracious welcome address by Dr. Kusum, we now move to the planter presentation as a token of our appreciation. May I request our Principal Sir, Dr. Rishipalji, and President Sir, Chaudhary Tejveer Singh Ji, to kindly present a planter to our guest of honor, Professor Dr. V.N. Atri Ji. I request the presentation of a planter to Dr. Ram Kumar Puyal Ji. Now I request the presentation of a planter to Dr. Smita Sharma Ji. These planters symbolize our respect, gratitude, and a shared commitment toward growth and sustainability. We also take this moment to acknowledge Professor Herbert B. Rosana and Professor Dr. Meera Verma Ji, who has joined us virtually. Though we may not be able to felicitate them in person, but we extend our sincere appreciation for their esteemed presence and contribution. Now, it is my privilege to introduce our guest of honor for this plenary session, Professor V.N. Atri Ji, a distinguished economist and former chairperson, Department of Economics, Kurukshetra University, Kurukshetra. He is a gold medalist and has pursued postdoctoral research
at University of California, Los Angeles, and George Washington University. With extensive experience in international trade, finance, and development economics, he has contributed significantly to academic research and policy discourse, and has been associated with various national and international academic bodies. He has served in key academic and administrative positions, including leadership roles in research program and policy initiatives. He has also been associated with international forums and has actively contributed to global discussion on economic development and sustainability. His rich academic journey and scholarly contributions continue to inspire researcher and student alike. Sir, we are truly honored by your presence and request you to kindly address the gathering. Thank you very much. I think I'll be speaking both in English and Hindi. And I'm grateful to this great institution, and especially Babu Anant ji, to whom I think I put my greatest honor, in the sense that almost 60 years back, you see, he has visualized a vision, and that vision is accomplished. I did not know that there are so many colleges initiated by him. उन्होंने इतने कॉलेज खोले, वो भी रूरल एरियाज़ में. तो मेरे देखने से he is a great leader, visionary reforms, और ये एकमात्र रीज़न था कि मैं काफ़ी व्यस्त था. रात में दिल्ली से आया 1 बजे. साउथ अफ्रीका का फ्रीडम डे फंक्शन था. वाइस चांसलर ने कहा कि मैं बिज़ी हूँ. पिछले साल हम दोनों गए थे, तो मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना था. वहाँ से 1 बजे मैं घर पहुँचा, और फिर मैंने डॉक्टर अमनदीप को, जो कि मेरी स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो उसको कहा कि मैं आ रहा हूँ. और स्पेसिफिकली मैं ग्रेटफुल हूँ आप सभी का, प्रिंसिपल्स का, प्रिंसिपल कॉलेज का, जो कि आपने सभी ने जाना था और मेरे लिए उनको रोका गया. तो मैं जो कुछ भी कहना चाहूँगा वो बेसिकली कवर करता है एवरीथिंग. लेट मी गो बैक टू 1985. I came across a book. The title of the book was Innovation and Economic Growth. And I tell you, at that time, I was young, I think 34 years old. I thought, what is the relevance of innovation and economic growth? I read the book, but I couldn't understand that book. Brought that book with me because I was there as a postdoc in UCLA, University of California.
damage to the ocean health. The health of the ocean is already deteriorating. According to the estimates of various studies, if you want to restore the ocean health pre-1970 or even beyond that, it requires 3 to 4 trillion US dollar to rectify the health of the ocean. But we are investing, you might have heard SDG 14, life below water. The total annual requirement to complete this SDG is around $1,175 per year. But the world has been investing only 25 billion US dollar during the last 10 years. It is the least invested SDG. And in September 2024, I published a book that was on IORA's Sustainable Development Objective, United Nations Sustainable Development Goal through global partnership. So that book runs to 350 pages, and in that I analyzed the performance of all the IORA countries, 23 countries, in terms of social variable, economic, as well as environmental. Now, the environment performance of all the IORA countries, and for that, whether it is G20, G7, BRICS, you think ASEAN, you take any regional economic groupings, they perform Indo-Pacific, which is the center at Kurukshetra, University Kurukshetra, under the patronage of Honorable Vice Chancellor Somnath ji, and I am working as a director, founder director of that center. And I am doing it honorary, not taking anything from the university. So that is basically, I am just paying my debt to the community, to the public, you see. That is what you call Rishi Rin, Pitri Rin, there are 3 rins. And basically, now the environmental sustainability. Now, one thing which I want to highlight, the scholars are there, principals are there. So my vision is, because I was talking, I think, on 18th of March in the Ministry of External Affairs, Indo-Pacific Division, so talking with the Joint Secretary, and they asked Professor Atri what we should do as chair of IORA, because India has assumed the chairship of IORA in November 25 for a period of 2 years. And 6 months have passed, nothing has been done. So I have sent them a confidential note, and they will be undertaking certain steps. So the point is the environmental sustainability. The environmental sustainability, I have been listening the speakers in the morning, and I know I did not hear Professor Goyal, but I can understand what might he spoke. So this environment is deeply rooted if we talk about the Indian ethos. And one of the things which have been admitted internationally at United Nations level, that is when we talk about science, technology, innovation, we must also talk about the local wisdom, the traditional knowledge. Without traditional knowledge, without local wisdom, science, technology, innovation cannot do much. So it is the combination of the traditional knowledge as well as the latest science, technology, innovation, which is the panacea, which is the remedy, which is the solution for the contemporary issues. In that context, basically, let me go back to David Ricardo. David Ricardo, in 1817, published a book, Principles of Political Economy and Taxation. And in that book, there was chapter 12 on machinery. In that chapter, he basically was in favor of machinery, and he had the view that machinery will not displace the labor. So that means there will be no labor issues
because of the adoption of the textile machinery. Then, over the last 200 years, there have been industrial revolution, 1, 2, 3, 4, 5. And if I go back to the artificial intelligence, digitalization, so let me tell you that artificial intelligence as on 2023, with the emergence of pre-talented models such as GPT, etc., is basically covering all. And its market is very high, runs into billions of US dollars. But in artificial intelligence, let me quote that it was, I think, 2023, the Ministry of External Affairs and Government of India National Security Commission nominated me to talk about artificial intelligence and digitalization in the Quad meeting of 4 countries, that is Australia, India, US and Japan. So that meeting was held online, and the subsequent meeting of the leaders of the Quad could not take place, and it has not even taken place now. So in that meeting, there was the eminent scholars all over the 4 countries, and the issue was how in the Indo-Pacific we can compete with the artificial intelligence that is being generated by China. So artificial intelligence, if you go back to the publications in the International Monetary Fund, certainly increases the productivity. The net impact of artificial intelligence on labor productivity or total productivity is positive. This has been established by so many people, so many scholars, whether they are the economists, whether they are the scientists. But the employment impact of artificial intelligence is indeterminate. आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते. हालांकि लेटेस्ट एस्टिमेट्स जो हैं 2026 वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दैट विल बी क्रिएटिंग 170 मिलियन जॉब्स, बट वी हैव टू सी. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो जॉब लॉस है दैट इज़ मोर हायर इन एडवांस कंट्रीज इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज. Coming to the status of developing countries, IORA countries, global south countries, because our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji given the idea of global south during the G20, and in G20 India also spoke about the use of artificial intelligence in deep sea mining. So that is the another issue. At International Seabed Authority, ISA, is the sole agency of deciding whether we should go for deep sea mining or not, whether we have to get the gold, nickel or polymetallic modules from the deep sea mining below 5,000 meters, that is 5 miles below the ocean. The ocean is very deep, you see. You cannot measure the ocean. Till to date, with all the latest technology, we have been able to explore only 5 to 10% of the ocean surface. 90% of the ocean surface has not been identified by the scientists despite the latest technology sweep. And I want to enter into the debate what is there deep into the ocean and all that, because that requires series of lecture and the time is limited. So that basically has not been decided till March 2026. The next meeting of the International Seabed Authority will be in July, and in that meeting the member countries basically will be deciding whether we should try to dig the deep floor or not. There are 2 types of groups
in the International Seabed Authority, IS. One is favoring that we should go deep into the ocean and get the minerals. India is in favor of that. China is in favor of that. US is not the member of ISA, but is in favor of deep sea mining because ocean contains critical minerals which are essential for all growth, all future growth, all scientific growth. So in that way, the other countries led by France, the number is growing around 40. They say that we should not go for deep sea mining. It is a controversial issue. So what will happen in future, we don't know. But the possibility is that deep sea mining may take place. And in that, what is important, what is recommended, that when we go for deep sea mining, we should protect the environmental. Environmental conservation is important for the deep sea mining. So in that context, as far as the artificial intelligence is concerned, its use in deep sea mining, ocean exploration is important. Its use in health is very important. But the income distribution impact of advanced technology, including AI, digitalization, they are indeterminate. हमें ये नहीं पता कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे तो इसका आय वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा. क्या अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो जाएंगे? मुझे याद है सुबह मैडम ने बात की थी पुअर पीपल की, पीपल ओरिएंटेड अप्रोच. तो मैं भी यही मानता हूँ कि जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द पीपल वेलफेयर, बिकॉज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट we are concerned about the posterity, what will happen to the future generation. Utilize the resources, earth resources, including the oceanic resources, in such a way, in such a systematic way or sustainable way that you leave more than you have during your lifetime for the future generation. आप जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे आप एक कार में हैं या 2 कार यूज़ कर रहे हैं या 5 कार यूज़ कर रहे हैं, आपको इस प्लेनेट को उस स्थिति में छोड़ना है कि आपके आने वाली जो जनरेशन है 20 साल बाद, 25 साल बाद, आपके जो बच्चे हैं उनके पास 20 कारें होनी चाहिए. तब तो आपने सस्टेनेबिलिटी को माना. अगर आप सारे रिसोर्सेज अब यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में आपके बच्चे जो हैं, फ्यूचर जनरेशन, उनके पास एक कार भी नहीं है या खाने को कुछ नहीं है, then you are not leading towards sustainability. So that is basically what I want to convey, that the issues of sustainable development are deeply connected to the science, technology and innovation. The countries around the world, they do not agree on having a common science, technology, innovation policy. The latest trend is on minilateralism, that 2 or 3 like-minded countries make a minilateral or trilateral agreement, and they are trying to take this science and technology forward. And I think I should not focus more, but I will be making a reference today in the morning when I was preparing myself to come for this conference. I came across the latest report that was measuring science, technology, innovation. हम साइंस को और उसमें जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हैं और जो इनोवेशंस हो रहे हैं, क्या हम उसको माप सकते हैं? Can we measure it? So that report runs into 234 pages. And in that 234 pages, basically, I won't go into detail. I read all the 234 pages. So there are 6 chapters. That will give you idea, because most of you are principals in the colleges, and then you can evolve how you can motivate the students to have a scientific outlook, the scientific method
My students, most of the principals, they are my student, and they may be remembering that when I was teaching logic, so there is a chapter on scientific method. Scientific method in one line is a method which is biased free, in which value judgment never enters. So value judgment free. So there are 6 chapters, and I will just name and then I will conclude, and if there are questions, I will be happy to answer that. So one thing is that in this report, what we talk, that is basically the new technology development, how they are impacting energy and environment. So to have a sustainable energy is a big issue. Innovation and technology adoption, its diffusion, कि how this technology is diffused, कैसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लोगों तक ले जाएं. वो सुबह मैडम ने इस पे लेक्चर दिया था, और आप उसको कैसे थिंक करते हैं, कैसे उसको प्लान करते हैं, डिफ्यूज़न ऑफ टेक्नोलॉजी. और फिर इसका ये है कि लास्ट में कि यू प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट for measuring science, innovation, and sustainable growth. So the message is clear. You cannot achieve sustainable growth, sustainable development, which has been accepted by all the 193 countries in United Nations, except a few countries. For example, USA is one of them. Sudan is there, Myanmar is there, and 2 more countries. But the rest of the 188 countries, they fully agree to the sustainable development goal. So that sustainable development goal cannot be achieved until or unless we become very much sensitive, very much responsive, what we call environment. So research on environment, the impact of AI on environment is most likely is to be positive. Now, the issue of climate change. The AI has generated such accurate model that you can predict what is going to happen in next 10 years. So the positive impact of AI on environment, climate change. So there are 3 major planetary issue. दुनिया में इस वक्त 3 सबसे बड़े issues हैं. नंबर 1, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो हमारे नेचर में प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, इवन यू इंक्लूड द एनिमल्स, तो ये सारे, दिस इज़ नोन एज डीप इकोलॉजी. तो यू शुड बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स डीप इकोलॉजी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जनवरी 17, 2026 से BBNJ ट्रीटी एग्री हुई है, इम्प्लीमेंट हुई है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन. Second is climate change. और third issue है plastic pollution और deteriorating health of the ocean. तो ये 3 जो major issues हैं, ये 2026 से 2030 and even beyond that 2050, 2060, 2070, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो ग्लासगो एनवायरनमेंट कन्वोकेशन थी, कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये कहा था कि इंडिया विल बी अडॉप्टिंग ऑल दिस बाय द ईयर आई थिंक 2070. लेकिन जितने भी और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें उसके बाद भी जा सकता है. फॉर एग्जांपल आसियान कैन अचीव दिस गोल आफ्टर 2065. सो दैट मीन्स व्हाट आई से, we must plan long-term solutions for the solution of the contemporary issues. And in that is the contribution of science and technology. But this science and technology, Dr. Goyal will agree with me, Madam will agree with me, may not be taken independently. We must put the mixture of social sciences, traditional knowledge, local wisdom, and the basic objective of the ocean economy or the blue economy is to make it people-friendly, localization of resources, empowerment of, poor,
it is in favor of pro-poor strategies. But from this platform, I just want to say to all the principals of the colleges in Haryana, I think 2 days earlier I was sitting with the additional principal secretary, Dr. Sumita Mishra. She happens to be my student. So I told her that in Haryana government can talk about ocean economy. Ocean does not mean ocean. It includes lake, rivers, ponds, which are in the villages, cities also. And if the government of Haryana is interested, I can give my expertise to the government of Haryana. So these are some of the things which I wanted to share with you. I am thankful to the president, thankful to the principal of the college, and thankful to all of you hearing me patiently. Thank you very much. And I am at the service of the community. My country is number one. I belong to the global community. Any question, any help in your college, if I am here in India, I will be happy to, come to your college, deliver lecture on ocean economy, blue economy, trade, anything. Thank you very much. Thank you, Professor V.N. Atriji, for your inspiring and enlightening address. Your words have added great depth and value to this plenary session. We are truly thankful for your esteemed presence and for sharing your valuable insights with us. Dear audience, due to some prior engagement, our respected guest of honor, Professor V.N. Atriji, will be leaving shortly, and we are equally grateful for his presence. So for the felicitation ceremony, I request our President Sir, Chaudhary Tejveer Singh Ji, and our Principal Sir, Dr. Rishi Pal Ji, to kindly present a memento to Professor V.N. Atriji as a token of our sincere appreciation. Moment. Please give a big round of applause to Professor V.N. Atriji. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, President Sir, for your gracious presence. Thank you, sir. Let's move further with the plenary session. It's my privilege to introduce Professor Dr. Ram Kumar Fuyalji, a distinguished economist, an expert professor at Tribhuvan University, Nepal, and former member of the National Planning Commission, Government of Nepal. With over 2 decades of experience in academia and public policy, he has made significant contributions to the economic planning, sustainable development, and global policy dialogue, representing Nepal at various international platforms. Sir, I humbly request you to kindly share your valuable insights with you. Over to you, sir.
Thank you, ma'am. Chairperson of this important conference, dignitaries in the dais, distinguished scholar, policymakers, social leaders, university teachers, professors, student, media persons, and all the participants. Namaste and very good afternoon to you all. This is Ram Kumar Frial from Kathmandu, Nepal. It's my great honor and privilege to be a part of this very important academic gathering this afternoon. I'm very much thankful to the college family, conference organizing team, and all the concerned of this very important event today. Actually, the topic that I'm giving to speak is very broad. It's a macro level topic. But things that we need to initiate or we need to discover is from micro level, which I quickly discussed with Janta madam also quite back. But yes, everything impacts on macro, from micro, and from macro also micro. So it's okay as AI and digitization make some changes or some transformation or some effect that can be qualitatively or quantitatively identified or measured in a development era. Yes, that can be measured, that can be spoken, that can be discussed. So it is always a scholarly question that whether we should start working from macro or micro. So today I very sincerely listened to the keynote speakers in the morning. Both keynote speakers spoke so well. They carried the issues from very micro level. And they hinted that finally it makes a change, it makes a kind of different impact on macro. So are you ready to do that or not? Or how you take these devices or this knowledge or these tools, AI or digitization? These were the questions. And a few minutes back, our eminent speaker and guest of honor spoke so well. He brought all those issues on macro level. And also, he spoke from the perspective of UN and other global perspectives. He very stressfully hinted about SDG. So I would like to also let you know that SDG is a very important issue for us, actually for developing and least developed countries like us. For that, we especially need to talk about P5 model. That always need to think about P5. The number one P is planet. What we think from perspective of planet, whether we need our planet for the forthcoming generation or not. Then next, we need the people. SDG always deals about that. Though we have 235, 36, or now 39 themes and goals. From the perspective of India, some indicators are less. From perspective of Nepal, we have 301 indicators to be fulfilled. So number two is people. If there are people, then okay, the planet is fine. If there is planet, then people can survive. The number three is we need peace.
And only by making the planet peaks does not work. We need partnership within many of the issues, many of the stakeholders, and then prosperity can be achieved. So with this scenario, my talk, would you please, my slide, can you? So I have crafted a few slides, though the topic is very broad. I know I have not given a full justice on my paper because there are very much limitation. It is a global issue, and the topic itself is global economy, governance and policy. So thousands of paper we can make within that only single topic. So I just browse some published document, UN published document, IMF published document, World Bank published document, IDA published document, globally and regionally and country-wise also. And based on that, what I initiate drafting is simply, I just talk about what is that, how digitization is shaping the regional economy and global economy. Does it work to shape the economy? Does it help to get rapid economic growth? Or does it help to enhance or improve our quality of life or per capita income? Does it really help reducing our poverty and inequality? What does it do? That means there is no baseline clustering point for a survey. From where we should start? From which point we should start? Should we start from 2000 or 2005 or before that or 1975? When I was a student of PhD, I mean when I was PhD scholar in 2005, in a second year of my PhD in 2006, I got one subject, cyber economics. Oh my God, cyber economics is also a subject, I was wondering. I looked into the detail of that course and I found that digitization, digital economy, artificial intelligence, and digitization and artificial intelligence makes the economy vibrant, and there will be a transformation on economy. And when that transformation output pie of economy is distributed equally to the society, then society's justice and prosperity would be ensured. Like that, that paper was written, that subject was written. But I feel scared. Oh, I am a student of econometrics. I am a student of game theory. Why should I study this social matter? Oh, I should learn more about sophisticated mathematical model, algorithm, and all those things. But later, when I come to 20th decade, the algorithm is inside the AI. And data, many more things are happening and included on that. So I just tried to bring those facts and evidences. What I'm speaking to you today are not from my own insight. They are from the published source, established knowledge, which I am going to share with you. I don't know how far I can make a justice of my delivery. I am given 30 minutes, so I want to conclude my, the talk before 30 minutes. The next, I brought the scenario into, not in global only, brought into South Asia. In South Asian countries, almost we are least developed and developing countries. And how the AI making difference in our economy, per capita income, employment. More about employment, I linked it because earlier speaker also spoke about the employment, and that is very important burning issues which is to be included within the effect and impact the more influence of AI in digitization. And a few slides about a case of Nepal I brought, and I will just give a few policy remarks based on my observation.
So you can see how economy goes now, how AI and digitization goes now. It is not only issue of growth, it is issue of prosperity only, it's issue of per capita income only. It is a multiple issue, a kind of multi-dimensional impact it does have. For example, if we can see that slides, we see that internet, mobile and digital devices make entire globes change. It is a socio-economic issue, even scientific issue. Not only that, but it is a political issue to bring into a debate and discourse. So it is also a kind of game. So we need not to limit it within some particular area or particular building blocks. Beyond that, there are many more things, but while we do research or study, that big horizon of study also doesn't work. It will not help us making our things bring into a good conclusion. So I just explore this in a way. This digitization is not only economic matter, it is an entire social matter, and it has changed the socio-economic activities of entire globe, which also makes a lot of changes in human capital formation and also economic growth and job creation of the entire global countries. So now we can see one very important slide that I would like to share with you. Yes, that AI and digitization after 2000s, the economic growth of many countries is increasing, very nicely increased. Economic growth is increased, but together the per capita income also has to be increased. But the per capita income is not increases as it is increases in the ratio of economic growth. It is not only in the case of South Asia, but also in Middle East and many of the other developing countries, Africa, South Africa, Latin America. In many of those countries that we can see are not making a good progress on increasing the per capita income as compared to their economic growth. So what we can do, if we are pursuing a good research or good result, or if we want to make our research result very robust so that it can be published in a good journal, ranked journal, and after all in final, if we wish to provide a very good policy suggestion, policy remarks to the government, then we need to think from micro perspective with making some very micro level framework. For example, there is one framework which I have proposed. There are so many issues in a conceptual framework which we can see, and with this, for example, on economy, what are the basic activities of economy? Either natural resources or human resources, or like in economy, production or productivity, or competitiveness or efficiency, or for example in a human capital, either skilled human capital or healthy human capital, or smart human capital or happy human capital, who we need to change our society and how that devices help improve their strength. That is very important. So in economy, if this is so, in governance, how we can think from the perspective of governance and that framework? Maybe good governance is very important. So does that, digitization and artificial intelligence help support giving a good decision to a leader or policy maker?
Or does it help to give a good justice in a society? Does it help to change a society in a prosperous society? What does it do? That we need to make a micro level study. We need to generate evidences. We need to generate the data. And we need to make a kind of the causal relation, either a causality or input-output or perceptual study. What do we need to do that? So from university levels labs of MPhil, PhD or post-PhD or faculty research, we can initiate that. And then only once when result comes, okay, very proudly we can say because that result is obtained by our own effort. But now what we do is we just borrow the ideas and we are just talking from that perspective. It is not working. Okay. Next one, yes. The governance I spoke. Okay. So next one is my key issue about job creation. Do we think that AI and digitization creates a new job? Yes, it creates. But what does it do for people, those who don't have skill? Those who don't have minimum skill or medium level skill or high skill? This is a question. So in our survey, there was one survey that our people, our colleagues conducted, and I got a quick result about this. And they found that the low skilled laborers job can't be destroyed. That can be used. That can be utilized. But there is a serious matter that the middle level or medium level skills people's jobs is deteriorating. And high skills labor's job is getting promoted. So these things are happening in human capital also. In the other way, jobs in developing countries are not deteriorating much. Even our eminent speaker earlier spoke. But job in a highly advanced countries, people is losing and deteriorating. This also has been found in some research which we have conducted, and the result I have just mentioned in my slides. So from different perspective we can think about AI and digitization. Another important thing what we did was, okay, what is the efficiency and productivity of human capital? I mean, as a labor, do we do a traditional work or do we start working with the very smart devices and smart tools? So in my case, or in our case, in our studies case, we made two different zones. Like one zone, a small micro study that we conducted. In one zone, we fixed the matter and we thought that that issue was a control issue, control variable. And another issue was we were treating. We were giving them devices to use, like for 10 days, 15 days, 1 month. We could do that. What else are, how much time we need to spare for our research. But it depends on the nature of the research and fund or objective. It will have a different, the obligations. It depends on the research objective, theme and all. So we found that giving devices, artificial intelligence, giving opportunity to use digital, the devices, other tools, that particular group made a massive progress in result. But one group which we had, a control group, I am talking from viewpoint of research, control group could not make
a good efficiency in their work. But finally, what happened in the interview? We took the interview. As Madam told earlier also, the one who made a very vibrant result, very good articulated data, significance, all testing, heterotasticity, multicollinearity and all right? And their writing style of the report was also very good, that team. And the team who very hardly made their assignment complete and submitted on time was not much good. But during the time of interview, the one whose performance was looking weak made wonderful, dissemination. Because they had very good ingredient knowledge they did by their own effort. That indigenous knowledge was working with them. And the another group who made their result fantastic could not disseminate it well. So we have to use the devices, but we should think about our limitation also. We should think of making our knowledge preserved or extending the ideas or keeping our indigenous knowledge protection is very important issues that we did. So this human capital, sorry, it's not, it's okay. Now the same way, if we think from different perspective, in a global era, if you look back, the 40% of job now is, covered by AI and digitization. And this also in emerging economies, that job creation is more, but labor's jobs losing rate in emerging economies more. And low income and developing countries, that labor's job losing rate is not huge, but job creation is less. It is a kind of a controversial issue which we have got from the research report. And the shifting is also like that. What we can see is the informal economy in the least developed countries and developing countries is above 70%. India is also like that. In Nepal's case, informal jobs is 85%. So still there is huge percentage of informal job. At this case, the job loss rate can be increased. So for that also the different, the policy issues is to be drafted by the concerned government. Productivity, and if you think from the prospect of productivity, it is said that 15 to 20% of the GDP will be created by AI activities work in next 25 years. And within these few years, also it is getting promoted to 7%. So for this, least developed and developing countries are gaining more. 10 to 15% they are about to secure. Whereas the developed countries, almost 7% they will secure, which is mentioned in different, the literature and different documents. The next important thing is the elasticity. Now, many of us have known well about the employment elasticity. That employment elasticity is related to the economic growth. If we have 1% of economic growth, in Nepal's case, 0.5% of employment can be increased. That is very good. But in India's case, it is look likely disappointing. It is a jobless growth. So in Bangladesh, also the same. So this is also somehow linked and related with the AI. So how we can make the employment creation positive
that will ultimately help to increase the economic growth. So simply the policy implication for this is different. We can take it in a different way in different countries. In South Asian case, we have only 4 things to discuss. One is economic growth. Next one, equity and justice, or we can say the growth and inequality, labor force participation, and employment elasticities, and access to financial institutions for AI and digital economics. So now, if we look at the value of if we look at the populations, those who are involved in using internet in a South Asian countries, look at the Bangladesh is using 44%, India is using 55%, Nepal is almost using that much percentage. So people more than 50% are properly using internet, but the contribution in employment and economic growth is not, looking like in the ratio or in the balance how they have been using the internet. So this will be one of the another area for researcher to cope up with the research problem to find a solution. The another is industrial transformation. If you can see the South Asia's case, there are so many countries' case I have brought, but in South Asia's situation, the economic transformation is somehow very less. The industrial transformation rate seems very less, and that rate is very, very less in Nepal. So once if you go back to the manufacturing share, the manufacturing share of South Asian countries in an entire economy is losing, decreasing, deteriorating. And if you particularly look back to the case of India, in the India's case also, the GDP through manufacturing sectors is also not good as it is going in other countries' case. Very zigzag, volatile. So that also will be one of the very good areas of a research interest for a scholar, those who would like to pursue a degree. And so on. FDI to GDP ratio is also very worse in South Asia. What I am telling you is just from 2000 onwards, what is happening in our economy. So overall transformation, overall industrial transformation, if we can see, and overall structural transformation, if we can see, that structural transformation of South Asia only is very low than others. So it was a case, and how it is happening, okay, this is also low. The one important thing is our per capita income is also very low. You can see the per capita income of Switzerland, South Korea, or USA, that is many, many times higher to us. But look back to 1975 or 85, what you can see? By that time, their income status, their per capita income and our per capita income was not very much gap. There was not huge gap. But during the course of time, if you look few countries example here, including China and Vietnam, see Bangladesh per capita income in 1985 was simply 200 GDP per capita it is 222. But now it is in 2024 it is 2,594 US dollar, which is 11.7 times more. But India's 8.9 times, Nepal's nearly 9 point something. So growth, okay, we maintain, but still here GNI per capita is less. So from which point we should start then, we should start doing the research then? It is always a question. Because we are talking about the
impact of digitization and artificial intelligence on global economy. So from global perspective also, not very much changed. Okay, size of economy is changed, but other factors are not much changed. And if you come back to South Asian countries' perspective, okay, the economic growth is rapid somehow, but per capita income and poverty rate seems very different. If you look at the head count ratio of the poverty at 2.15 US dollar per day, our South Asian countries' poverty rate, you can see decreases, but not as rapid as other countries. And if you go to the property holding by the people, in South Asia only, the top 10% people have got the whole property. You can see there the line. And if you go to next one, 50% bottom population's property, very less. So there is existing a huge gap between rich and poor still, and inequality is privileged. So within those all constraint and barrier, how we have to go is very important questions to be raised to all of us, as we are the scholar, we are the researcher. And another thing is, see, labor force participation. Labor force participation in our countries, especially in South Asia, is very weak. In developed countries, it is different. In emerging countries, it is different. But in our countries, labor force participation rate is also very low. Then see the youths in total population, 15 to 24. The share is very good, but the rate of employment that youth are getting is very less. That is also another constraint we have. You see, the youth unemployment in Bangladesh 12, Nepal 20, India 16. So 16% of total youth of 15 to 24 in India are not getting job. And 20% in Nepal and 22% in Sri Lanka. So this is after 2000 to 2024. And this is all because AI requires some skilled education, vocational education, training, skill, mentorship, leadership. Many more things are required there, which has not been injected. So you can see, which I talked earlier, that India's elasticity is 0.09. It is very less. If there is 1% gain in economy, what percentage will be the gain in employment? This is 1/9%. It is really, really less. So India's growth is a jobless growth, which we have to think more about. And Nepal's growth is also not that much good. But comparing to other countries, Nepal is better. But the highest one is the Afghanistan. I don't know why it is happening. It is 1% economy. If there is increase, there will be 1% growth in the employment. So after all, that India's PM Gati Shakti model is very highly, diversely working to restructure a country. And with the support of that gift city, the global model, this digitization and digitization's works through monitoring and evaluation has been initiated since last few years. I also had an opportunity to visit there, and I thought it has a huge connection with different countries. So I am not going to talk about this, which I have already spoke, and it will be a matter for you to utilize as a resources. In the case of Nepal, Nepal has already got a policy about digital economy. We have a digital Nepal framework, and you can see that that framework works with 8 different areas.
So country has invested a huge amount, and it is now one of the, you can say, national pride project in Nepal. And based on that, Nepal is in a process to graduate very soon from least developed country to developing country. In 2026 November, Nepal is graduating, and there are so many, the hurdles and obstacles that Nepal is facing, but still struggling to utilize those digital devices and digital economy activities within a country through the newly introduced act and policy. As Nepal was interned in the LDC in 1971, now after 50 years it is graduating, and there are so many, the facilities for that digital device, artificial intelligence will be also, favorable or comfortable to discuss with many other countries in a parallel motives or parallel sense. Anyway, there are so many slides. I know this is a population of Nepal. It is equal with male and female, but 20 years back it was not equal. And this is the population and its employment rate, that 11.4% of Nepal's peoples are facing our own employment problem. So in the future, if we can use this model as a conceptual model, these negative remedies or problems and hurdles of using AI or digital economics can be fixed. And there are a few positive points. Through these positive points also, we can fix so many problems. So these are the some issues for the solution which I have brought into consideration for your knowledge. So I think there are some positive and negative aspects. So we have to fix the negative aspect and need to bring the positive aspects as a takeaway message. So every government, they should fix the constraint and the negativity that has been arised or that has been influenced in different activities of the government or society or household or family. So with this all, I would like to conclude my very small talk, but this has not become very systematic due to many other technical constraints, but actually I wanted to give a flavor with an academic paper for this talk, but due to the time constraint and some combination of the heading of the conference also made us very difficult to join everything together. So from my level best, I collected those all information from different published and recognized sources. So I hope this will be one of the important study document for all of us. Once again, I would like to appreciate this college for organizing this such a wonderful academic discourse. I hope this conference will be we will have a very good message even to provide to the province government or even a federal government. And I wish this conference grand success. Thank you very much. If you have any things to discuss with me, I'll be here until today, so we can talk in tea meeting or in the evening or during the day. Thank you very much. Thank you, Professor Dr. Ram Kumar Fuyalji, for your insightful and enriching address. Your valuable perspectives on global economic and policy dimensions have truly added depth to this plenary session. We are sincerely grateful for your enlightening words. Now I request
Dr. Subhash Sharma ji and Professor Sadbir ji to kindly come on the stage and grace the occasion. Dr. Subhash Sharma ji and Dr. Sadbir ji, kindly come on the stage. Now, it is my privilege to introduce Dr. Smita Sharma ji, Associate Professor and Chairperson, Department of Economics, Punjab University, Chandigarh. Ma'am holds a PhD in Public Finance and has extensive teaching and research experience, contributing significantly in the area of fiscal policy, development economics, and public finance. She has published research papers and book chapters and presented her work at national and international platforms, and has also contributed to policy-oriented projects. Her academic journey reflects a strong commitment to teaching, research, and academic leadership. Ma'am, we are honored to have you as a plenary speaker and request you to kindly address the gathering. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Basically, I will not take more than 5 minutes. And the topic which I had prepared for today's conference was that how digitization and AI, both of them are helping in governance. Because apart from public policy, public finance, I also teach public policy and governance. So very briefly, I'm going to present my core ideas because to present the argument, I had taken examples from how economic policies are implemented in Haryana. So core argument and example of a policy in Haryana. In brief, 5 minutes. That is what I am going to do. Thank you. And one more thing, I had taken liberty to prepare my talk in Hindi this time because I wanted to speak in Hindi. It is I've studied in Hindi medium otherwise. So thank you. Just very briefly, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां शासन अब सिर्फ फाइलों, दफ्तरों और व्यक्तिगत निर्णयों तक सीमित नहीं है. ये डेटा, एल्गोरिथम्स, डिजिटल आइडेंटिटी और रियल टाइम मॉनिटरिंग पर डिपेंड करता है. तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा बदलाव डिजिटलीकरण को लेके आया है वो है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में. पहले नीतियाँ सीमित डेटा या अनुमानों के आधार पर ही बनती थी, पर अब रियल टाइम डेटा अवेलेबल है, जिसकी वजह से जैसे भारत में आधार की वजह से एक ब्रॉड डिजिटल पहचान प्रणाली तैयार हो गई है, जिसके माध्यम से जैसे कुछ योजनाएं जैसे पीएम किसान इन हरियाणा और मनरेगा, जिसका अब नया नाम है जी राम जी, इनको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सटीकता से लागू किया जा सकता है. इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ी सी ऐड की हुई है. उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो बेनिफिशियल स्कीम्स हैं उनकी डिलीवरी की. पहले ऐसा होता था कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था, बट थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन एंड एआई अब जो डायरेक्ट बेनिफिट, जिसको हम डीबीटी भी कहते हैं, उसने स्थिति को बदल दिया है. अब लाभ सीधे बैंक खातों पर जाता है, जिसका अगर आप हरियाणा का एग्जाम्पल देखें, परिवार पहचान पत्र, फिर से मैं पीपीपी का नाम लूँगी. और अगर मैं अपनी होम स्टेट हिमाचल की बात करूं तो वहाँ हिम परिवार है जो नियरली सिमिलर स्कीम है. तीसरा बात आता है सर्विस डिलीवरी का. पहले सरकारी सेवाएं प्राप्त करना एक डिफ़िकल्ट टेक्निक थी. आज के समय में अगर हमें एक सिंपल पासपोर्ट को ही अप्लाई करना हो या इनकम टैक्स फाइल करना हो, बहुत ज़्यादा आसान है थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन. जिसका एग्जाम्पल हरियाणा से जो मैंने एनालाइज किया था वो है स्कीम सरल हरियाणा नाम से. चौथे नंबर पे आता है बेसिकली जो टेक्नोलॉजी और एआई है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम के पुनर्निर्माण में भी हेल्प कर रही है. और क्योंकि एआई से हम प्रेडिक्टिव गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं. जैसे हरियाणा में जो ई खरीद प्लेटफॉर्म है वो कृषि खरीद, एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट की निगरानी उससे की जा सकती है. उसी तरह हिमाचल में जैसे अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो जो सेब एप्पल ग्रोअर्स हैं, सेब उत्पादक, उनमें मौसम को लेके सारी सलाह और कहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है और किस मंडी में उनको बेस्ट प्राइस मिलेगा, वो भी अब इन डिजिटल ऐप्स के साथ मौजूद है. पांचवें नाम पे स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का प्रभाव. जैसे कोविड-19 हम सब ने अभी जिया है, उसमें कोविन प्लेटफॉर्म में ही हम अपना, जब हमने टीका लगाना होता था, हम अपना शेड्यूलिंग करते थे, कहाँ पे वो अवेलेबल है स्लॉट, वहाँ जाते थे और टीका लगवाते थे. तो ये शो करता है कि किस तरह इवन हेल्थ केयर मॉनिटरिंग में डिजिटलाइजेशन ने हमारी हेल्प की हुई है.
6 नंबर पे आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसको हम जैम ट्रिनिटी या जनधन आधार और मोबाइल त्रिमूर्ति कहते हैं, जिससे हम सबको पता है कि अब हमारे हाथ में जो मोबाइल है उसके दम पे ही हमारे पास एक तरह से सारी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसी और फैसिलिटीज़ आ गई हैं। तो डिजिटलाइजेशन के पॉजिटिव चीज़ों को अंडरमाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और लास्ट जो पॉइंट हाईलाइट करने वाला है वो ये है, जब भी गवर्नेंस की बात आती है सबसे बड़ा चैलेंज हमें आता है करप्शन का, कि उसको हम फेस जो कर रहे हैं उसको हटाए कैसे। तो उसमें डिजिटलाइजेशन और एआई की कैसे हेल्प है। सबसे पहले तो ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, जिसको हम पारदर्शिता कहते हैं। जैसे अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो वहाँ हिम भूमि पोर्टल है, जहाँ अगर मेरे पास लैंड है तो उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन वहाँ अवेलेबल है हिम भूमि पे। उसी तरह हर स्टेट में इस तरह के पोर्टल्स अब धीरे धीरे बन रहे हैं। हर चीज़ की डिजिटल ट्रेल बन रही है। तो चीज़ों को छुपाना, क्योंकि भ्रष्टाचार या करप्शन तभी पॉसिबल है अगर चीज़ों को छुपाना आसान हो। तो छुपाना आसान है। जैसे हरियाणा का सीएम विंडो जो है उसमें नागरिक अगर चाहें तो सीधे सीएम एटलीस्ट कंप्लेन फाइल करते हैं और वो कंप्लेंट जो है उस पर्टिकुलर ऑफिस में पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। तो जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो रहे हैं उनके मन में ये डर भी बढ़ रहा है कि हमारी डायरेक्ट शिकायत हो सकती है। ये तो सारे के सारे डिजिटलाइजेशन के फ़ायदे थे। लास्ट में टू समराइज मैं जब बात करूँगी कि उसके फ्लॉज की, और बहुत सारे लोग चैट जीपीटी के नुकसान लिखने में, रिसर्च में उसकी बात करते हैं, तो यहाँ हमें 3 चीज़ें जो मुझे लग रहा है सबसे बड़ी जो हमें सोचने की ज़रूरत है। पहला है डिजिटल डिवाइड। सबके पास उतनी एक्सेस नहीं है एआई की, हम अगर ये सोच के चलें कि सबको बराबर एक्सेस है, नहीं। दूसरा है डेटा प्राइवेसी। इग्नोरेंस थोड़ी कम है हमारी कंट्री में, नॉर्म्स भी थोड़े से अभी लीनियंट हैं। हम सेलेक्ट ऑल, एग्री ऑल करते जाते हैं। कोई लंच टाइम पे बात भी कर रहे थे कलीग इस बारे में। और तीसरा है कि जो अलॉगरिदम्स आ जाती हैं, एल्गोरिदम, एकदम से जो मेरे मन में चल रहा है वैसा मैं कुछ गूगल करती हूँ और वैसा ही जब कंटेंट आता जाता है तो मैं उसको देख देख के वो मेरी वैल्यू जजमेंट और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। ये चीज़ है जो हमें सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद। We sincerely thank Dr. Smita Sharma, ma'am, for such lucid and enriching address. Your perspective have truly added new dimension to our understanding. It's been a privilege to have you with us and benefit from your valuable insights. There is an announcement for participants. All the session chair, co-session chair, and presenters and participants of offline technical sessions are requested to be present in their respective venue as per the schedule. All the session chair, co-session chair, participants and presenters are requested to be present in their respective venue as per the schedule. And please reassemble here at 4:30 p.m. for valedictory session. Felicitation. And we now move to the felicitation ceremony to our esteemed dignitary on the dais. For this, I request our principal sir, Dr. Rishipal ji, Dr. Subhash Sharma ji, and Dr. Sadbir ji to kindly present a memento to Dr. Ram Kumar Fuyal as a token of our sincere appreciation. Dr. Amit Kumar ji and convener Dr. Mamta Rani and Dr. Amandeep Kaur kindly join them on the stage. Now I request the presentation of a memento to Dr. Smita Sharma ma'am for the insightful session delivered. I request the organizing team to join for the same. थैंक्स करना है, नहीं करना, बुला पहले पूछा था। We sincerely thank all our distinguished speakers, and now I invite Dr. Mukesh Chahal ji, Organizing Secretary,
to kindly deliver the official vote of thanks. Thank you, Radhika ma'am. Good afternoon, everyone. I am Dr. Mukesh Chahal, Assistant Professor, Department of Economics. Respected Chairperson, Professor Neera Verma ji, Dean Academic Affairs, Gurgaon University, Haryana. Guest of Honor, Professor V.N. Atri ji, International Expert of Blue Economy and Director, International Center for Indo-Pacific Study, International Speaker, Professor Ram Kumar Fulyal ji. डिजिटल प्रेजेंटेशन खत्म हो गया मैडम? सॉरी, ऑनलाइन खत्म हो गया प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन? नहीं, अभी यहाँ पे इनवाइटेड स्पीकर वाला है। हाँ, ऑनलाइन बच्चे के लिए पेपर प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। ऑनलाइन जो हो गए हैं वो तो खत्म होने वाले हैं। पेपर से प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली है? हाँ जी, ऑफलाइन अभी स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक स्टूडेंट है वेट कर रहा है, व्हेन विल स्टार्ट सी इज आस्किंग सर। किस ट्रैक में है? ऑनलाइन पेपर प्रेजेंटेशन ऑनलाइन तो चल रही है सर हमारी। चल रही है? हाँ। उनको बोल दो कहाँ पर? हाँ, कौन जिसमें भी है उस मैडम का फ़ोन नंबर है, उससे कांटेक्ट कर लेंगे। अच्छा, हाँ जी, फ़ोन नंबर दिया हुआ है इसमें। ओके। अच्छा, चलो। నీ సెషన్ ఏ సెషన్ ఏ మేడం ఉంటుందో ఆ మేడంకి ఫోన్ చెయ్యి. ఫోన్ చేసి నేను రెడీగా ఉన్నానని చెప్పు. నేను లిస్ట్ పేపర్స్ మేడం పేర్లు ఇచ్చారు కదా, సెషన్ చేయరు కోచేయరని, వాళ్ళు ఎవరికైనా మాట్లాడు. ఏది లింక్ పంపించాను కదా, లింక్ ఆ లిస్ట్ నీకు ఇచ్చానా? रखा पेन ड्राइव क्या? हाँ जी, पीपीटी ट्रैक वन पीपीटी। नो मेटल ओपर, हाँ राइट। At the outset, I congratulate the organizer for giving good opportunity, especially to the students in this remote village. Students are getting exposure to write research papers and to presenting papers. And also they can learn the organization skills from organizing such an event. So in this way, this conference will be more useful to the students. My topic is a role of digitalization for financial inclusion. Next slide. अच्छा, ये मोड से बना राइट। See, to achieve inclusive growth, we need inclusive finance. Inclusive finance will be possible through digitalization. Digitalization, digital skills and digital tools and devices, infrastructure will lead to financial inclusion. What is the need of this financial inclusion?
the poor people should have access to financial services. If so, they need not depend upon the informal sources of finance. Informal sources of finance, in the sense, getting loans from the money lenders, sahukaris and landlords by paying huge rate of interest, and also having some, the creditor having some vested interest in it. To avoid all these things, what we need, digital financing. The poor people can access to finance, maybe insurance, credits and loans and payments and transactions without any, you can say, transaction costs, at less cost, without taking any time. They can do their financial operations. So to achieve this inclusive growth, what is this inclusive growth? I think we have some idea. When the economic growth is occurring, but growth prospects are not being shared by the poor people. In the sense, those who are trying for the growth, but they are not availing benefits of the growth. That is very miracle. These financial services should be made available to the vulnerable sections of the population. Who are the vulnerable? Here is the list of people given here: rural, women, unemployed and homeless, border area people and elderly, migrants, informal workers, physically challenged. These are the vulnerable. To these vulnerable groups, finance to be made available, then they can cross the poverty line. That is the main intention of this financial inclusion. See, the ST and OBC population and other communities. Other communities are more access to internet compared to OBC, SC and ST, right? So what is this digital financing? That means the financial services should be made available through digital devices. Then, without taking much time, the services will be available to the poor people in the form of e-money and mobile banking, the cashless transactions, etc. So here, the technology, digital technology will be a medium for transacting these services to the poor people, right? So what are the barriers in digital financing? The low level of knowledge among the poor people and financial illiteracy. That means how to perform these financial activities. The semi-literates and illiterates don't know. This is the major problem. The cost of mobile phone is, in the sense, smartphone is more cost, it beyond the reach of the poor people, and also the cyber crimes and frauds. These will it lose to confidence on these digital transactions. Sometimes the lack of identity card and address proof of the household is also a reason for not access to these digital financial, digital devices and digital financial services, right? And also slow, not availability of broadband connectivity in remote rural areas, and also the slowness of these broadband services, and sometimes the lack of electricity also. These are the barriers for digital financial inclusion. So what are the policy initiatives to be taken into account? Improve data protection
and consumer safety and security, and cyber security is required. Poor friendly, the rules and regulation. That means the digital financial rules should be pro poor. That is more important. Need to maintain privacy of people's data should be maintained privacy, and also digital literacy is more important. Even though RBI is making its efforts to spread financial literacy among the vulnerable sections of the population, still people lacks this financial literacy, which will hinder their access to finance, and also motivate rural people in accessing this financial services. Financial technology should be made available to the poor people. Financial technology is costly, that should be available at a cheaper rate, and also the government can make available these digital devices at subsidized rates to the poor people, then they can get digital tools, right? What happened? जूम में रखना. Go to last slide. Last one, सबसे last. Right, this one. Next. Right. See here, they integrate more women for their empowerment. This digital ecosystem, the infrastructure, devices, and technology should be made available for women empowerment, and also the remaining vulnerable sections of the population, and also bridge the digital divide. Digital divide is prevailing across the socio-economic groups, different religious groups and different communities and different economic groups and rural and urban, and also in the almost all regions are not having same level of access to digital technology. So that is why this divide should be bridged in the sense for the inclusive digital development. The positive discrimination in the sense the poor people should be differently treated in the sense in a positive way for their financial empowerment. Right. Any questions, please? Thank you. Thank you, Dr. Sipana Prakasam ji, for your valuable insights. Now, I would like to invite Dr. Surbhi Adlakha ji, Dr. Navita Adlakha ji, Dr. Rajesh Kumar Arora ji, Rajesh Mehra ji, to kindly felicitate our invited speaker, Dr. Sipana Prakasam ji, with a memento as a token of our respect. Dr. Rajiv Kumar Gaba ji, please join us on the stage. Momento dena bas. Aaiye sir. Audience, please give a big round of applause. Momento de
Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Dr. Surbhi Adlakha ji to kindly come on the stage and take the proceedings further. Thank you, Dr. Radhika Khanna, for beautifully attending all the session and conducting stage so successfully. Now, first of all, a very good afternoon to all of you. I, Dr. Surbhi Adlakha, Assistant Professor of Communication Skills, once again welcome you all on the behalf of BAR Janta College Kaul. Sorry for the interruption. Now, I welcome you all in the session of International Conference entitled Impact of Digitalization and Artificial Intelligence on Global Economy, Governance and Policy. First of all, I congratulate you all for being the part of this wonderful conference. I have just been informed Dr. Ranjan Aneja. He has joined us. I welcome Dr. Ranjan Aneja ji on the behalf of BAR Janta College Kaul. Sir, please join us on the stage for the welcome session. Dr. Ranjan Aneja ji, he is Dean in the Central University of Mahendragarh. Dr. Ranjan Aneja ji. Next session. Okay, fine. To continue with our invited speaker session, in the sequence, first of all, I would like to invite Dr. Rajesh Mehra, Professor of Psychology, working in Pandit Charanjeevi Lal Sharma Government College, Karnal. He is contributing so successfully in society. He is working for all the students, adults who are suffering in one or another way, depression or other psychological problems. He is contributed and he is related to so much research projects, and his topic for today's theme is exploring the role of artificial intelligence in mental health culture, current trends in future directions. Sir, please, I invite you on the switch. Thank you so much, ma'am. मेरा आज आप लोगों से जो टॉपिक रहेगा मेंटल इम्पैक्ट ऑफ एआई इन मेंटल हेल्थ। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़े कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। मेंटल हेल्थ इज ए इंटरनल स्टेट इंक्लूडिंग इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। It affect, think, feel and act. जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी थिंकिंग को अफेक्ट करता है, थिंकिंग हमारे इमोशंस को अफेक्ट करती है और ये दोनों मिलके हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। आज अगर मैं WHO की बात करूं, डेटा 2023 के अकॉर्डिंग हर 5th जो व्यक्ति है, 5वां व्यक्ति है, वो किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इशू से
उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट करनाल का एक सर्वे किया था, जिसमें मैंने 16 कॉलेजेस, जिसमें 11 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे और 5 गवर्नमेंट एडिड कॉलेजेस थे, उसका एक सर्वे किया और ये पाया गया कि हर तीसरा जो बच्चा है वो किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा है। उसके सिम्टम्स बड़े चौंकाने वाले थे। उसके अंदर जो एंजाइटी है, उसमें पुअर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था बच्चों का, ऑब्सेसिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में जो मूड स्विंग्स थे, मान के चलिए कि वो हर तीसरे बच्चे के अंदर मूड स्विंग्स थे और 1350 बच्चों का जो सर्वे था उसमें मैंने पाया कि 106 बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी थी और उनमें से 68 जो बच्चे हैं उन्होंने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में सुसाइड अटेम्प्ट भी किया हुआ था। तो आज के समय में मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है और रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा, हमारे पास में ही NIT कुरुक्षेत्र में पिछले 2 महीने में 4 बच्चों ने सुसाइड किया। तो गंभीर विषय है ये। तो इसमें AI कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में 1 लाख के पीछे एक डॉक्टर भी नहीं है। अगर मैं कहूँ तो 0.75 की रेशो है 1 लाख के पीछे। तो इतने डॉक्टर्स नहीं है, इतने काउंसलर्स नहीं है, लेकिन फिर हम इनको मैनेज कैसे करें? तो उसको मैनेज करने का एक तरीका है कि हम AI का क्यों ना यूज करें। बहुत सारी ऐप हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं। जैसे योर दोस्त है, बेटर लाइफ है, टेलीमानस है, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आप ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं। 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे, क्योंकि इतने काउंसलर्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि कंसर्न है, लीगल एथिकल कंसर्न है, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि वो हमारा जो फुली जो पर्पज है वो सोल्व नहीं कर पाती। उसके लिए हमें, क्योंकि जो AI है उनके अंदर इमोशंस का लैक करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें जो काउंसलर्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, AI की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात यहाँ पे आती है हमारी कि जो ये मेंटल हेल्थ है इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके मैंने बताया थे कि 3 कंपोनेंट है आपका। सबसे पहले इमोशनल में आपके हैप्पीनेस के इमोशंस है और सैडनेस के इमोशंस हैं। साइकोलॉजिकल वेलबींग में हमारे आते हैं सेंस ऑफ वर्थ आता है, पर्पज आता है, ऑटोनॉमी आती है। ये कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। सोशल वेलबींग में हमारा आपके क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप है, सोशल सर्कल है, लोगों से आपकी कनेक्टिविटी है। क्योंकि जैसे जैसे आज के दौर में हमारा सोशल सर्कल बड़ा कम होता जा रहा है, उसकी वजह से आइसोलेशन में हम लोग जी रहे हैं और उसका सीधा किसी ना किसी रूप से हमारे मेंटल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि मेरे को सिर्फ 5 मिनट दिए गए हैं, बोलने में बड़ा मुश्किल होता है इतनी सारी चीज़ों को थोड़े समय में कंपाइल करना। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा आज के समय में कि मेंटल हेल्थ एक बड़ा चैलेंज है और हमें इस पे बात करने की आवश्यकता है। जो एक स्टिग्मा बना हुआ है कि मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करना चाहता, एक इसको बुरा मानते हैं, उसकी बजाय हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि WHO की बात हम करते हैं, तो ये है कि जो फीमेल्स हैं वो मेल से 3 गुना ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करती है। ये WHO का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं। फीमेल है मेल से 3 गुना ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं, लेकिन जो मेल है वो फीमेल से 4 गुना ज़्यादा सुसाइड कमिट करता है। वो तो कोशिश करती है, मेल सुसाइड कर ही जाता है, वो बोलता नहीं है, कर ही जाता है। उसकी वजह है कि इतना डिफरेंस क्यों आया
वो है इमोशन रेगुलेशंस की वजह से। फीमेल अपनी बातों की, या कह लीजिए कि वो रो लेती है, अपनी अंदर की जो भड़ास है वो निकाल लेती है, लेकिन मेल ऐसा नहीं करता, वो रोता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर लेके और वो लास्ट में सुसाइड तक पहुंच जाता है। तो इन चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता है। तो हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं अपने एक सोशल सर्कल बना के रखना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you. Dr. Rajesh Mehra ji, I am feeling so delighted to hear your views. Thank you for your insightful and inspiring words. Now, next in turn, I would like to invite Dr. Santosh Kumari ji, Associate Professor of English, working in STPG College, Panipat. She will present her views on cultural transformation in the digital era. Please give her a big round of applause. सभी को मेरा नमस्कार। और जो बड़े बड़े अतिथि और मुख्य वक्ता अब बोल चुके हैं, उसके बाद बोलना एक चुनौती है, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। तो हम बात करेंगे आज एआई की, जो हर जगह हो रही है, हर सेमिनार में, मीटिंग्स में, घरों में। लेकिन मैं कोई बहुत टेक्निकल बातें नहीं करूँगी और सिर्फ अपने ज़हनो दिल के कुछ ख़यालात आपके साथ साझा कर रही हूँ। डिजिटल युग, एआई का जो ज़माना है, देखो तस्वीर कैसे बदली। हमने शुरू में नोकिया के बटनों वाले फ़ोन्स देखे थे ना, उस समय घरों में लैंडलाइन थे जो कि 20 या 25 पैसे में पूरा दिन शायद बात होती थी। महीने का ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये आता था, कितनी बात कर लो। और एस्कॉटल कंपनी आती है भारत में, जब तनख्वाह बड़े बड़े अफसरों की 10-12 हज़ार थी, वो 8 रुपये पर मिनट सुनने के भी लगते थे, करने के तो लगते ही थे। तो आज जो हम बार बार कहते हैं कि एआई का राज है, वो इसीलिए है क्योंकि इसने मिनिमाइज़ कर दिया कॉस्ट को, फैसिलिटी को बढ़ा दिया। हमने जब मोबाइल फ़ोन लिया था तो क्योंकि हम लोग गांव के लोग हैं, मेरे हस्बैंड उस एरिया में पहले थे जिन्होंने लिया था, तो मुझे लोग शिकायत करते थे कि तुम्हारे हस्बैंड फ़ोन उठाते पहले हैं, बाद में कार्ड पहले देते हैं। भाई वो अगर 10 मिनट बात करते थे तो 80 रुपये कटते थे। तो ऐसे डिजिटल युग हमारा शुरू हुआ। वो हमने दूरदर्शन वाले टीवी देखे, फिर पूरे दिन वाले देखे, अब 24 घंटे वाले हज़ारों चैनल्स, और यूट्यूब पे और इंस्टा पे जो बाकी चैनल्स हैं वो अलग हैं। तो हम लोग बदल रहे हैं जो ज़माने के साथ, वो हमें बदलना ही पड़ेगा। इसके बाद है फिर एक मजाकिया सा कमेंट है, लड़कियां अक्सर 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे फ़ोन पे बात करती हैं। भाई मैंने उनके बिल्कुल ऐसे कान लगा लगा कर देख लिया, ना तो मुझे आज तक सामने वाले की आवाज़ आई और ना उस लड़की की आवाज़ आई कि वो बोलती क्या है। तो मैं उनसे यही बात करती हूँ कि भाई गलती से अगर इस लड़के से तुम्हारा विवाह हो गया तो तब तक ये बहरा हो चुकेगा, तो इसलिए थोड़ी बात कर लिया करो। ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो एआई के साथ हम लोग सहन भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। और डिजिटल एज ने ज़िंदगी को कितना आसान बनाया है, देखो आप लोग ही। चैट जीपीटी है, आर्टिकल तैयार करो, होमवर्क करो, रिसर्च पेपर्स 2 मिनट में, जिसके लिए हम लोग पहले महीना भर वेट करते थे, और लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन 1 मिनट में। और अब आपको किसी बैंक की रसीद की ज़रूरत नहीं है, एक स्क्रीनशॉट हम शेयर करते हैं, सामने वाला यकीन करता है। और इसके अलावा जितनी मर्जी गज़ल सुने, मूवी, भजन, मंत्र, पूजा पाठ की विधि, डॉक्टरी, इलाज, घरेलू नुस्खे, सब कुछ एक क्लिक पर हमारे सामने हाजिर है। लेकिन दिल बैठ जाता है जब करोड़ों की ऑनलाइन ठगी देखते हैं, साइबर अरेस्ट सुनते हैं, ट्रोलिंग के कारण डिप्रेशन, वीडियो गेम्स के कारण बच्चों की आत्महत्या, और जेमिनाई ऐप जिसमें हम बहुत खूबसूरती के साथ, ख़ास तौर से महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं, अपनी ड्रेसेस को चेंज कर करके फ़ोटो डालना पसंद करती हैं। वो कैसे निर्वस्त्र कर सकता है एक फ़ोटो को, जब वो कपड़े बदल सकता है तो वो हटा भी सकता है।
और सबसे जो मुझे खतरनाक चीज़ लगा है डिजिटल हथियार, गूगल सर्च इंजन हमारी कार को हर पल रास्ता दिखा सकते हैं। उन्हें पता है कौन सी कार किस समय कहाँ चल रही है। एक हलवाई की मिठाई की दुकान भी है तो वो उसका पता आपको बता सकता है, लोकेशन बता सकता है। हमारी हर फोटो, हमारी हर चैट, हमारी हर कन्वर्सेशन, हमारी बिना फ़ोन की बातचीत सब उनकी है। अब उसके पास जो चला गया वो हमारा पर्सनल डाटा नहीं है, उनका है, एआई टूल्स का है। आपने देखा ईरान में एआई टूल्स के साथ कैसे 1 मिनट में पूरे नेतृत्व को उड़ा दिया गया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एक अंगूठी थी जो बहुत चमकती थी किसी नेता की, उसको जियो टैग कर लिया था और वो जहाँ जाती थी उसी के अकॉर्डिंग उसको टारगेट किया जाता था। खैर मैं टेक्निकल इतनी नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा और सुना उसके अकॉर्डिंग मुझे भी बहुत खौफ रहा कि कैसे ख़त्म किया जा सकता है सिर्फ एआई से। अब लास्ट में बस यही बात कहनी है कि अब हमें रहना तो इन्हीं के साथ है। शुरू में बिजली आई तो गांव के लोग डरते थे करंट से मर जाएंगे। एलपीजी गांव की औरतों ने स्वीकार नहीं की कम से कम 15-20 साल कि आग लग जाएगा, घर जल जाएगा, सिलेंडर फट जाएगा, बट अब वो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ हैं। इसी तरह एआई भी जो है रहना तो हमें इसके साथ है, बस एक ध्यान रखना है, इसे खूंखार, आदमखोर, बब्बर शेर मत बनने दो। सर्कस में भी शेर होते हैं ना, रिंग मास्टर के कंट्रोल में होते हैं, तो बी द रिंग मास्टर ऑफ एआई, इसके मालिक बने, इसको इस्तेमाल करें। और एक ही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि दोनों पहलुओं का ध्यान रखें। ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस शमा से कहीं आग लग जाए तो ये शमा क्या करे। एआई तो रहेगी, हम इसके साथ रहेंगे, आग नहीं लगने देंगे, तहलका मचा देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। Thank you, Dr. Ma'am. You have presented your views so well, and we all know everything has its pros and cons, and we have to be aware if you want to use something. We deeply appreciate the time you devoted to us. Next, our distinguished invited speaker is Dr. Suman Balaji, Associate Professor of Economics, working in Arya College, Ambala, Kent. She will present her views on infoxication in academics, challenges and opportunities. Please, ma'am, join us. Thank you, ma'am, and good afternoon to all. मेरा जो टॉपिक है, जब मैंने बात की थी इनफॉक्सिकेशन इन एकेडमिक्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ से भी जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने थोड़ा कहा था कि मैम ये आपने ये वर्ड आप क्यों ले रहे हो, आप हमारी जो थीम है उनके साथ जोड़ो। बट मेरा ये कहना है इनफॉक्सिकेशन मीन्स इंफॉर्मेशन प्लस इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि जब एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है तो हम उसके यूज्ड हो जाते हैं, इंटॉक्सिकेशन पे आ जाते हैं, एंड दिस इज़ द इंफॉक्सिकेशन। और स्पेशली जब हम एकेडमिक्स में बात कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल आर टीचर्स, स्टूडेंट्स ऑल्सो, सो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर नो डाउट जितना भी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम उस वर्ल्ड में रह रहे हैं कि रोज़ चेंज हो रही है। और सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक हम टीचर्स के लिए है कि हम इसको किस तरह से खुद भी इसके बारे में अवेयर हों और अपने स्टूडेंट को भी अवेयर करना है। जैसा अभी मेहरा सर ने भी कहा था कि ठीक है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारा इमोशनल क्वोशेंट है वो कम होता चला जा रहा है। शायद तभी हमारे जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से इस तरह की हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमें हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं इसको लेके। नो डाउट एआई है, हमें एक्सेप्ट भी करना है, हम भाग इससे नहीं सकते। मैम ने जैसा अभी कहा कि हमें चैलेंज को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें इसलिए भी आ रही है मैम, बिकॉज एक तरह से हमें ये लगता है कि हमें रिसर्च करनी है, हर टाइम हमें लगता है कि रिसर्च होनी चाहिए, पब्लिकेशंस होना चाहिए एवरी टाइम, और वो बर्डन भी है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि प्रमोशंस के लिए हमें ये सब करना। सम टाइम होता क्या है, हम एक अच्छे टीचर्स बनना चाहते हैं, बट प्रेशर में, मतलब हमें लगता है कि रिसर्च सबका कप ऑफ टी नहीं हो सकता शायद, तो फिर हम हेल्प लेते हैं इस तरह की चीज़ों की कि ठीक है हम चैट जीपीटी से लेके आए, मतलब बहुत ही कम टाइम में शायद बहुत कुछ लाना चाहते हैं। तो अब जो एक दो प्रॉब्लम सिर्फ मैं शेयर करना चाहूँगी जो सबसे ज़्यादा हमारे सामने आ रही हैं। एक तो मेन ये है कि हम इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो राइट है या रॉन्ग है। बहुत मुश्किल है ये, बिकॉज एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है और इसमें जो है
बहुत टाइम हमारा स्पेंड हो जाता है। दूसरी चीज़ है, जैसे अभी सर ने भी कहा था कि हम इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आ रहा है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर आ रहा है, हमारी परखने की क्षमता के ऊपर आ रहा है, एनालाइज करने पे आ रहा है। बिकॉज उसमें फिर पॉसिबिलिटी क्या बढ़ जाती है, हम लोअर क्वालिटी की रिसर्च लेके आ जाते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर जो है हम नहीं झेल सकते, शायद मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, और हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं जिस टाइप की भी रिसर्च हमारे सामने आ जाती हैं। एक जो चीज़ आती है कन्फर्मेशन बाइस। कन्फर्मेशन बाइस का मतलब क्या होता है, वी सी व्हाट वी वांट टू सी। जैसे मैम ने कहा कि एक बार हम जो चीज़ देख लेते हैं हमारे सामने उसी तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है, अगर हमारे मन में ऑलरेडी ये सेटअप है कि भाई नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ज़्यादा है, तो उसी टाइप की चीज़ें हम देखना शुरू कर देते हैं, वही हम अपनी रिसर्च में लेके आते हैं और उसी तरह के हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं बिना उसकी डेप्थ में जाए, बिकॉज डेप्थ में जाने का टाइम शायद इतना ज़्यादा नहीं होता हमारे पास। और लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ फोकस। हमारा ध्यान टूटता है बार बार, हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं दूसरी आ जाती है, बीच में तीसरी आ जाती है, तो बहुत मुश्किल है। हम लोग जिस लाइन पे चल रहे थे, हम जिसको पढ़ना चाह रहे थे, वो डिस्टर्ब होता चला जाता है, लाइन टूटती है, ब्रेक टूटता है, और हम एक्चुअली प्राइमरी डाटा पे चलना चाहते थे लेकिन हम सेकेंडरी की तरफ जो है वो चलना कहीं ना कहीं शुरू हो जाते हैं। तो ये बिग चैलेंज है हमारे एकेडमिक्स के लिए। नो डाउट एआई अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत लेके आ रहे हैं। मेरे से पहले जितने भी बहुत स्कॉलर्स आए सब ने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है अगर हम इकोनॉमिक्स की सेंस में बात करें। लेकिन मैं कुछ दिन पहले ही हमारे चीफ जस्टिस जी हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई हुई थी कि हमें एआई को आप अपना असिस्टेंट बनाइए, क्योंकि वो कभी भी ह्यूमन माइंड को रिप्लेस नहीं करेगा, उससे डरना नहीं है हमें। तो लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, learners need to move from being consumer of information to becoming producers of information. Thank you so much. Ma'am, you well said the word infoxication. In English, we call it blended words. Pot, mat, stew. That means, if we take it generally, that is the chutneyfication that informs so well a message in informal way. It was such a great presentation. All the distinguished speakers, may I request you to sum up your ideas from 4 to 5 minutes, shortcut it to 1 to 2 minutes. As actually sorry for that, I really apologize. We are running short of time. So our next speaker is Dr. Pawan Kumar, Associate Professor, Department of Political Science. He's not there. Okay. Our distinguished speaker, Dr. Navita Adlakha, Associate Professor of Computer Science, working in Bhim Rao Ambedkar College, Jagdishpura. She is an expert in cyber security awareness. Ma'am, please join us on the stage. Thank you, Surbhi ma'am. Firstly, I would like to thank the honorable management and organizing team of this international conference for inviting me here to put my ideas on how AI is transforming the world. I would like to start, just imagine a world where machines are not just listening to you, they are putting your ideas on to next level. And it is not just a future world, it is the present day, the world we are living in. Let us suppose we are starting our day by using Google or Gemini or any chatbot, and we are asking it for plan for day. And it will ask us, after giving us the plan, it will ask, do you want? If you want, I can make a weekly plan for you. We say yes. Then it will say,
If you want, I can make a printable version of it. Yes, why not? That means the things we are thinking about, it is doing for us. We are getting a 24 hours assistant for us. And who would not like to get someone who is working for us, that is doing AI with us? Being the professor of computer science, it would not right to say that machines are overpowering us, but it is right that machines are thinking above our minds, because these are the machines who are becoming intelligent. I would take some examples. Sir, please, next slide. Okay. Let's hang up. Good. Thank you. As ma'am has given me the 2 minutes only, I'm wondering where to start. AI in everyday life. Sorry. Okay. Seamlessly integrated into our world. Our AI is seamlessly integrated into our world. We are doing everything with AI. We are just saying, ChatGPT, please make a research paper for us. If I'm not exaggerating, that we all are doing this. I think no one of us haven't taken help from ChatGPT for today's lecture. Am I right? We are working with AI. So it is integrated into our world. In everything. So again, it's hang. Do you have a control of it? Okay. Like in AI in business, just a minute. I'm not able to handle this. Maybe it is also tired. Impact of AI in healthcare. In business and education sector, automative repetitive tasks in business, like analyzing spreadsheets and making a summarized summary of that, and making decisions in business meeting. In all this, AI is helping us with the help of like Tableau, Zoho, HubSpot, Hootsuite, and many more. And transforming education into adaptive levels. Students are taking help from it. We are getting, and one very important thing AI is doing for us, what I'm convinced with, that every student don't have the same pace of learning. We teachers give some lecture in the class, some of the students get us, some of the students think that, ma'am, you are doing very fast. But with AI, students are coping up with their pace of learning. They can get repetitive lectures from AI, or they can divide their lecture into 2 or 3 days lecture. So in that way, AI is helping with speed with of the students. Next is ethical challenges in AI development. Learning made personal, what I said, students can find their interesting subjects, the games they want to play, the way they want to learn. With the help of this AI, they can do very interestingly. Now the younger children also learning by playing. It is very interesting about AI that it is giving services to all, from young ones to eldest one. Fine. Now, one more important thing, the people today are thinking about that AI is replacing our jobs. No, that is not true. One thing is must, some of you may remember the time the banking system was updating with the PCs. Everybody was quitting that we can't do work with PCs, we are so old in job, we can't work with PC, I don't know how to work with computer. But with the passage of time, everything is computerized in the banks. In the same way, everything is replacing with AI machines. But that doesn't mean that machines are replacing human being. The thing we must do, that we have to improve ourselves. We have to reskill ourselves. Machine can't replace us, but they can read our mind. They don't feel tired. That's why we feel that they are doing better than us. But nobody, no machine, no thinking power. Actually, what it is just artificially intelligent. What we are putting in the mind of machine, that the thing they are doing.
Algorithms are more powerful, I admit. Earlier, there were simple programs, but nowadays, algorithms are very powerful. They are doing very fast work, very efficient work, but not better than human beings. So what we have to do, we don't have to afraid from AI. We just have to reskill ourselves. That's all about today. In 2 minutes, only these things I can share with you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Ravita, for sharing your expertise so generously. Next, in turn, is Dr. Anuradha Nagia, Associate Professor in Political Science. Ma'am, first of all, I apologize really that we are really running short of time. I am getting messages again to start our valedictory session. But I really wish to hear from you all. Please, ma'am. सभी को मेरा नमस्कार। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस टर्म में बोलूं कि एआई किस तरह से हेल्प करता है अकाउंटेबिलिटी में, गवर्नेंस की, ट्रांसपेरेंसी में और डिजिटल डेमोक्रेसी में, तो एक अब्राहम लिंकन की फेमस डेफिनेशन है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार होती है। अगर हम डिजिटल टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो डेमोक्रेसी 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और हम सभी को पता है कि 99% कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेसी का टाइप है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो डिजिटल टूल से जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। और डेविड ईस्टन की एक थ्योरी है इनपुट आउटपुट थ्योरी, और ये दोनों आपस में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है और गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। वो कैसे कि जितना जनता पार्टिसिपेट करती है उतना गवर्नेंस जो है वो अकाउंटेबल बनती है, ट्रांसपेरेंट तरीक़ों का यूज़ करती है। तो वो सारा डिपेंड करता है कि किस तरह से जनता टूल्स का यूज़ करती है, किस तरह से उसका पार्टिसिपेशन है और किस तरह से नीड्स आ रही हैं, किस तरह से इनपुट्स तैयार हो रही हैं और फिर उनको पॉलिसीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है। इससे पहले संतोष मैम ने जो लेक्चर दिया था वो बहुत बढ़िया दिया था और बहुत उन्होंने गाने से बहुत ख़त्म किया, और सर का लेक्चर भी और मैडम ने भी बहुत सारे तरीके बताए कि किस तरह से जो डिजिटलाइजेशन है वो टॉक्सिक वे में भी हो रहा है। मेरा मानना भी यही है कि 80% जो है ये नेगेटिव है और 20% सिर्फ ये हमारी हेल्प करता है। जो एक मोबाइल है वो एक पूरी दुनिया की हमारे लिए पूरी दुनिया है, क्योंकि उसमें सबके मतलब का सब कुछ है, बट हमें किस तरह से डिसिप्लिन वे में उसको यूज़ करना है, ये थिंग बहुत डिपेंड करती है कि हमें उसका किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। बट यही हमें नहीं पता। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। मेरी बेटी MA इंग्लिश कर रही है। मैंने 10 साल लगाए रिसर्च की प्रोसेस सीखने में, 10 साल लगाए मैंने, और वो स्टेप्स मैंने लर्न किए कि इस तरह से एक रिसर्च पेपर तैयार किया जाता है। और शायद PhD के बाद मुझे एक रिसर्च पेपर तैयार करना आया। तो अभी मैंने उसको कहा कि बेटा एक रिसर्च पेपर लिखना है और ये स्टेप्स होते हैं। उसने ChatGPT पे डाला और सारा पेपर तैयार कर दिया। मतलब मुझे पहले तो अच्छा लगा कि अरे, फिर भी मुझे डाउट हुआ कि उसने कैसे कर दिया। फिर उसने मुझे ये बताया कि मैंने तो ChatGPT की मदद ली और ऐसे कर दिया। फिर मुझे एक बहुत बड़ा धक्का लगा कि बच्चा सीखने की बजाय मतलब अपनी एबिलिटीज़ का तो यूज़ कर ही नहीं रहा, और फिर एथिकल वैल्यूज़ की तो कोई रह ही नहीं गया। और एक और मैं छोटा सा वीडियो देख रही थी उस पे इंस्टाग्राम पे, उसमें लिखा हुआ था कि जब भी आप अपने डोपामिन जो हार्मोन्स है उसको रिलीज़ करना है तो आप छोटे छोटे काम कर सकते हो, जैसे कपड़े सुखाना, जैसे किचन में काम कर लेना, लेडी के लिए था, और कहीं बाहर पार्क में घूमने चले जाना। तो मैंने ये देखा, मैं बचपन में हाथ से कपड़े धोती थी
फिर मुझे लगता था कि अरे मेरे फ्रेंड्स के घर में तो वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, तो चलो सेमी वॉशिंग मशीन आ गई घर में, ठीक है। फिर मुझे लगा कि हाँ टाइम अच्छे से मिल रहा है मुझे। फिर मुझे लगा कि अच्छा मेरे कलीग के पास तो है ना दूसरी ऑटोमेटिक मशीन है, बस कपड़े डालो और निकालो, और उस टाइम का हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट मैंने देखा कि वो टाइम मैं फिर मोबाइल देखने में यूज़ कर रही हूँ, और मोबाइल फिर मुझे ये सिखा रहा है कि दोबारा से सिंपल लाइफ पे आओ, वही हाथ से कपड़े धो और वही अपना डोपामिन हार्मोन है वो अपना उससे रिलीज़ करो। तो वही बात है कि डिजिटलाइजेशन मतलब हमें इतनी टेक्नोलॉजी की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। इंसान का जो जीवन है वो एक सिंपल जीवन जीना है, और वही मकसद होना चाहिए, वैल्यूज़ के साथ होना चाहिए और एथिकल होना चाहिए। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for your wonderful speech. As from stage, I am announcing this lost and found department also. If any one of you have lost your something precious jewelry, you can inform me. Just tell me the identification, only then I will provide it to you. It, it's only for females, sir. Why not, sir? Then you can tell the identification. My distinguished guest, really I honor all of you, and really I am doing starting flattery of you right now, because I just want to ask you if any one of you is willing to present his or her views. Otherwise, we can move to our next ceremony. Please. Okay, so what's your good name? Okay. I would like, before Dhananjay sir, actually in turn, there is Dr. Pawan Kumar, Associate Professor, Department of Political Science, Dayal Singh College. So may I request you to sum up? Thank you. Respected Chair, respected Vikas Barwal ji, Dr. Kushal Pal ji, Principal Subhas Sharma ji, Dr. Rishipal ji, Dr. Principal Satbir ji, Madam Suman ji, Madam Mamta ji, my dear colleagues, respected all the dignitaries. Presentation of my topic with the jointly research paper, Dr. Balram Sharma, Assistant Professor, DAV College, Karnal. My topic is Strengthening International Cooperation in Digital Policy for the Inclusive Global Governance. The rapid expansion of the digital technology in the 21st century has fundamentally transformed by the structures of the governance, how state, institution, and the society interact on a global scale. Digitalizations driven by the advancement in the artificial intelligence, big data, and the global has only the accelerated economic growth and innovation, but also introduce complex transitional challenges that traditional government mechanisms are ill-equipped to address. Transitional challenges that government mechanism, Okono Study 2021, Afrizi Study 2024, JICA Study 2024, Literature of Review, the growing significance of the digital transformation has generated an expanding body of literature and implication for the global governance in the international corporations. Scholars
in the field of international relation, digital policy, and the global political economy, emphasizes that the digitalization is not merely the technology phenomena. Conclusion and the policy recommendation, that is the conclusion of my research paper. The rapid expansion of the digital technology fundamentally in the nature of the global governance, making international cooperation not only desirable, but this paper has to examine how to the digital transformation driven by advancement in the artificial intelligence, data flows, the global has introduced to the governance challenges, and a key conclusion emerging from the study of the current global digital government framework remain while numerous national and the regional policies have been developed. 2 minutes में क्या बोलूं? Okay. In the conclusion, the future of the global governance in the digital age depends on the ability of the international community to work collaboratively in the addressing shared challenges. While significant progress has been made recognizing in the importance of the digital corporations, much remains to be done to achieve by truly inclusive, secure and the digital ecosystem by adopting coordination, multi-stakeholder and the approaches of the global community can enhance of the transformative potential of the digital technology, while the mitigation of their risk ultimately strengthening international cooperation in digital policy is essential for the ensuring that digital transformation contributes to sustainable development and global prosperity. I thankful to the management of Janta College, Principal Rishi Palji, Madam Mamta, management of Janta College, Kaul. Thank you so much. I really appreciate your thoughtful process. As I have already announced, I sincerely apologize first of all. Really, we would like to listen you all, but due to some emergency issues and shortage of time, we have to move towards our next ceremony, that is valedictory session. To start our valedictory session, it is my profound privilege to invite our Honorable Principal Sir, Dr. Rishi Palji, to extend the welcome address and set the tone for the next session of today's conference. And before that, I would like to invite our honorable and esteemed guests of honors just join us on the stage. Professor Ranjan Aneja ji, please join us on the stage. Dr. Professor Ranjan Aneja ji. Next is Dr. Vikas Sabharwal ji. And Professor Dr. Kushal Pal ji. Please, sir, join us on the stage. I would like to invite Dr. Satbir, Principal Sir, IB National College, Panipat.
Sir, please, Honorable Principal Sir, please join us on the dais for the speech, welcome speech. धन्यवाद डॉक्टर सुरभि। सम्मानित मंच और मेरे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही प्रबुद्ध शिक्षक साथियों, शोधार्थियों और स्नेहिल मेरे सहकर्मियों और जितने भी यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं और जितने भी ज्ञान के पिपासु हमारे मित्रवत यहाँ बैठे हैं, आप सबका आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में आपकी उपस्थिति को नमन करते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया और बहुत आप समर्पित और तन्मयता और बहुत ही सहयोग करके हमारा इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। आज इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन में जहां विचारों का यह ज्ञान यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है, मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि इस गरिमामयी अवसर पर हमारे मध्य विद्यमान हैं प्रोफेसर रंजन अनेजा जी। आप अर्थशास्त्र विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में अपने दायित्व के साथ सुशोभित हैं, कार्यरत हैं। और साथ में डॉक्टर विकास सब्बरवाल जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर कुशल पाल जी। आप इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज लाडवा में एक यशस्वी प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरा छोटा भाई डॉक्टर सतवीर जी हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं। आप अभी नवनियुक्त आईबी कॉलेज के प्राचार्य हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी सम्मानित विद्वानों का इस समापन सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्था, शासन एवं नीति पर डिजिटलीकरण एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, आप सब ने इस विषय के साथ आज पूरा न्याय किया, बड़ी तन्मयता से इसको सुना, बड़े बेबाकी से अपने विचार प्रस्तुत किए, अपने तर्क, अपने शोध पत्र आपने पढ़े, बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में अगर मैं कहूं कि समकालीन विश्व की सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक आवश्यकता को आज की ये संगोष्ठी केंद्र में रखती है और बहुत प्रासंगिक, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सामयिक ये विषय है। मैं आयोजक समिति को और अपनी जो महाविद्यालय में डॉक्टर अमनदीप कौर को और डॉक्टर ममता जियों को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसे सामयिक जो विषय को, जिसमें आज के समय में एआई ने जो केवल तकनीकी परिवर्तन ही नहीं किया बल्कि शासन व्यवस्था, आर्थिक संरचना, नीतिगत निर्णयों, शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक व्यवहार सभी को एक नए युग में प्रवेश करवाया है। आज दुनिया में फैसले आंकड़ों और तकनीक के आधार पर लिए जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था ज्ञान, नवाचार और डिजिटल क्षमता पर आधारित होती जा रही है। ऐसे समय में शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस संगोष्ठी के विभिन्न तकनीकी सत्रों में विद्वानों द्वारा प्रस्तुत शोध पत्रों, विचार विमर्शों और सारगर्भित चर्चाओं ने यह सिद्ध किया है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे सम्मानित वक्ताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों, डिजिटल शासन की संभावनाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अवसरों तथा उससे जुड़ी नैतिक जिम्मेदारियों पर अत्यंत गहन और दूरदर्शी विचार प्रस्तुत किए हैं। मैं इस अवसर पर सभी मुख्य वक्ताओं, विशिष्ट अतिथियों, शोध प्रस्तुतकर्ताओं, आयोजन समिति मंडल, प्रबंधन समिति के सभी सदस्य, शिक्षकों, शोधार्थियों तथा अपने
कॉलेज के समर्पित सहयोगी कर्मचारियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सामूहिक प्रयासों से यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मैं जितने भी हमारे विद्वान, शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी आभासी रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उनकी सराहना करता हूं। और समापन के इस अवसर क्षण में यही कामना है कि यहाँ उत्पन्न विचार, संवाद और शोध केवल दस्तावेजों तक सीमित न रहे, बल्कि नीति निर्माण, शिक्षण, सामाजिक विकास की दिशा में ठोस परिवर्तन का आधार बने। प्यारे साथियों, विचार जब संवाद बनते हैं, संवाद जब संकल्प बनता है, तब ही समाज प्रगति का नया अध्याय लिखता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र को नई प्रेरणा, नव चेतना और उज्जवल भविष्य की आशा के साथ आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। I thank you, respected Principal Sir, for your inspiring and gracious, enlightening and inspiring welcome address. Now, let us move towards the valedictory session. I would like to introduce you to all Professor Dr. Ranjan Aneja ji. Dr. Ranjan Aneja ji is working as Head Department of Economics, Dean, School of Business Management Studies, Central University, Mahendragarh, Haryana. He also holds the extreme position of Dean. He has in his account over 18 years of rich experience teaching and research. Sir is working really in the field of with specialization in socio-economic regional disparities. He is proficient in advanced statistical software like SPSS, Stata, R&E views. He contributed to several books on digital currency and globe finances system. Moreover, he served as a reviewer of over 50 prestigious academic journals. He is associated as nodal officer with Unnat Bharat Abhiyan. I request you all to welcome Sir with a big round of applause. Dr. Ranjan Aneja ji, please join us on dais. So, good evening, all of you. First of all, let me thanks to the organizers of this Janta College at Kaithal for having me here in this international seminar. The dignitaries on dais, Principal of College, Professor Paul and Dr. Sabarwal and my other friends, and dignitaries on in front of me, of the dais. It is really wonderful and my pleasure to be here today in this college. I have visited the college and found it really, academic place where, I'm sure that a true imparting of knowledge is happening here. Okay, now coming to the topic where I have to speak, that is about the theme that how digital and AIR things are happening. But since I'm a man of economics, so I understand that whatever we talk about in terms of digital and others, it is actually the change of technology in broader sense. It is the change in innovation in broader sense, which required to be taking place. So what I'm covering today that our Prime Minister has seen the vision of Viksit Bharat, and in my opinion, if we see the experience of other countries, Viksit Bharat can be achieved through the change, empowering through the technology and innovation. So I have few data, few analysis with me, which will help you to understand that how technology is happening. Prior to that, we should understand that how Viksit Bharat
that can be achieved and what exactly its meaning. So since we have very shortage of the time, so very quickly, if I have to define the Viksit Bharat, let me tell you, there is no concept of being developed or being Viksit. No book talk about it, no research talk about it. What we can have a club of few things where we have high per capita income, where we have high HDI, and where we have more, sustainable development goals. ये चल सकती है साथ? Where? Okay. It's not working. Yeah. So the definition of development, where we all have been told that we need to be developed. Let me tell you, there is no definition on the development. We always see the development as high per capita income, high HDI, and achievement towards sustainable development. Okay? It's not working. Okay. Okay, let's leave it otherwise. I can speak prior to it, before, Now, question comes up, how the technology can help to achieve the vision of Viksit Bharat. As I said, there is no crucial or there is no defined definition. I tell you some data that how we can achieve the Viksit Bharat. UNESCO says every country should spend at least 6% of their GDP on education. UNESCO also says every country should spend at least 2.5% of their GDP on R&D. But if you see the data which we are spending from last several years, we are spending only 0.72% of our GDP on R&D. So achieving technology, achieving R&D is becoming a big challenge. Apart from that, if we see the patents, the commercialization of the patent in this country, it is merely 2%, 1.78 exactly. So we can understand that once millions of patents are filed every year and they are rarely translated into the commercialized phenomena. So this becomes a big challenge for a country like India. Although we are a highly populated country, things are there. UPI has made the change. We talk about lot about the digitalization, and nowadays we are talking about AI. But my dear friends, you tell me only two things. If today we stop the Google, if we stop the Gmail, we all would be free. We don't have such kind of empowerment in our technology. If today somebody switch off the Gmail, particularly in context of India, we have nothing with us. There is no alternative. So technology we never had. We borrow the technology from others. Apart from that, the GPS system by which you travel, if somebody switch off the GPS or they start charging, a 10 paisa per kilometer, 5 paisa per kilometer, you do not have any substitute, effective substitute. So the technology is required to be updated, required to be upgraded in that way, so that we can, really understand the impact what we have. And likewise, AI, what we have in AI about us, in country never had anything at present which is contributing in AI. So a lot of challenges are there, lot of things are happening, where we have to understand that it is the investment in the technology, it is going to reshape the future. It is the investment in innovation, it is investment in R&D that is going to reshape the country. Otherwise, we would not be going to compete the entire world. I give one very fine example here. We understand the country Japan. There was a time when the Japan was totally thrashed through the Nagasaki and Hiroshima atomic attack. But how this Japan has covered up? It is the technology. And what is the penetration in our country? How the penetration has achieved? What kind of technology is emerging in our country? We are in third world of the technology. My words are harsh, but this is a fact. We talk about, several unicorns, we talk about several startups, but how many startups has actually turned into the output generation? So a lot of things has to be done, but ultimately we have to understand
if we are focusing for the Viksit Bharat, or we called it developed country, the phenomena is required on innovation. I remember solo growth model here, which simply says, you and me, today what conflict is going on? The conflict is that we have lot of people, those who want to work, and our industry do not have skilled people. Now, this gap we have to understand through the technology. There must be some sort of technological advancement is required where we can mitigate such people to meet the requirement of the industry. So that is really a great challenge which is going to be, coming in front of us, using ChatGPT, using some other digital UPI and others. I tell you, few days back I was in some, a bankers conference. Why UPI is successful in the country? The UPI is successful in the country. The reason is that UPI is not charging even a penny for transaction. Every day you are transferring the money from one person to another person, and whatever you send, it reaches to the next person. Whatever they send, that reaches to you. There is no money is deducted from your pocket. Up to what extent? Do you know the UPI transaction also has a cost, and minimum cost is 2.97, 2 rupees 97 paise. Now, if today we start imposing 2.99, almost 3 rupees on every transaction, this UPI will become failure. Okay, the reason being that we never had our own gateway by which we can transfer such kind of the, UPI transfer transactions. Now, how these banks and others, they are actually making it happening? The reason is that the government of India is providing subsidy to them after particularly the demonetization. So when we have such kind of the technological era, technological arena in that country, which is most populated country, which having more demographic dividend, I think dependence upon technology is the key to Viksit Bharat. More need to be done. More need to be done in the way expenditure, more need to be done by the GDP, and more need to be done R&D. So looking, by clubbing all these things, only then this Viksit Bharat and impact of digitalization or AI, whatever you call it, it would be achieved. And it will be achieved only when you and me start thinking in the way where the technology think with us. With these words, let me thanks to the organizer for inviting me. I had a lot to say, but paucity of time and many things are there. Thank you very much. Jai Hind. So, we are really grateful to you and appreciate your graceful presence, and really we are fortunate to have you with us. I request Dr. Rishipal sir to felicitate our esteemed guest, Dr. Ranjan Aneja ji, with her planter and memento as token of appreciation. We are really feeling honored to have such distinguished guests with us. Thank you, sir. Thank you so much. Now, I would like to request Dr. Vikas Sabharwal ji, Associate Professor and former Head, Department of Political Science, Kurukshetra University, to have valedictory speech with us. Before that, as there is a little change in schedule,
I would like to invite our esteemed guest of honor, Professor Dr. Kushal Palji, Principal, Indira Gandhi National College, Ladwa, affiliated to Kurukshetra, Haryana. Sir, I would like to tell you about him. He has a lot of achievements in his pocket, but as we are running with shortage of time, I directly invite sir on the dais to share his thoughtful views with us. Sir, please. Honorable Principal of the College, Dr. Rishipal ji, Organizer, Ma'am Mamta, Ma'am Amandeep, सतवीर जी, अदर डिग्निटरीज ऑफ द डायस और बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, पार्टिसिपेंट्स। एक्चुअल में वैलिडिटी का टाइम होते होते बिल्कुल लास्ट और लेट में आपको जब बोलने का मौका मिलता है तो सारे तो पार्टिसिपेंट्स थक चुके होते हैं। इवन जो लोग वेट करते हैं तो उनके लिए भी थोड़ी दिक्कत रहती है। और मैंने अभी रिक्वेस्ट की है कि मुझे निकलना है, इसके बाद मेरी भी कुछ मजबूरी है, क्योंकि मैं सुबह से ऋषिपाल जी के आमंत्रण में सुबह आके बैठ गया था और अब भी मेरे को घूर रहे हैं कि जाएगा अभी ये भाई है मेरे, ये डांटते ही बहुत है कई बार। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी अपनी ड्यूटी ये इसलिए निभाना चाहता हूँ कि मुझे ये जो टॉपिक जिन्होंने रखा है, माफ़ करना मेरे को, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही भारी भरकम टॉपिक है। मुझे ये भले इंटरनेट कॉन्फ्रेंस है, ये इतना भारी भरकम टॉपिक है। डिजिटलाइजेशन अपने आप में टॉपिक है, एआई अपने आप में टॉपिक है, ग्लोबल इकोनॉमी अपने आप में टॉपिक है, गवर्नेंस अपने आप में टॉपिक है और पॉलिसीज अपने आप में टॉपिक है। ये कंबाइन करने वाले को बहुत सारे कूडोज, बहुत सारे क्रेडिट कि इतना भारी भरकम ये कंबाइन किया। और दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इस सदी की बहुत ही अद्भुत घटना है। इतनी अद्भुत घटना है कि उसके बाद इसमें डिजिटलाइजेशन और अगर एआई को कंबाइन कर दोगे तो इसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है। लेकिन ये पावरफुल इम्पैक्ट यूनिफॉर्म नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ग्लोबल इकोनॉमी की समस्याएं विकसित देशों की अलग है, विकासशील की अलग है और अविकासशील की अलग है। इसी प्रकार गवर्नेंस के इश्यूज़ जो अमेरिका के हैं वो इंडिया के नहीं हैं, वो एशिया के नहीं हैं। अभी आपको मैं प्रेजेंट क्राइसिस की तरफ एक बार आपका ध्यान जुटाना चाहूँगा। जो ट्रंप साहब जो लड़ाई कर रहे हैं, शेयर मार्केट उठानी है तो अटैक का धमकी दे देंगे, गिरानी है तो उसको फिर अपनी बात को विड्रॉ कर लेंगे। तो गवर्नेंस के इश्यूज जो विकसित देश हैं उनके लिए अलग है, अपने लिए अलग हैं। इसी प्रकार हमें पॉलिसीज अलग चाहिए। हम तो अभी एनईपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं नहीं करूंगा लागू, इसने लागू कर दिया, हमारे गले में सांप डाल दिया। और ये एनईपी तो आई वहां से है। हमारे पास तो जो मोबाइल टेक्नोलॉजी के जो इश्यूज हैं, दो प्रिंसिपल साहब तो स्टेज पे बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, आपको पता होगा बच्चों के लिए ये मोबाइल कितनी गंभीर समस्या बन चुकी है। तो मैं ये कह रहा हूं पॉलिसीज उनकी अलग है, अपनी अलग है, पॉलिसी क्राइसिस अलग हैं। तो मुझे लगता है जो ऑर्गेनाइजर्स है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं तो सिंपल ये कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। इसमें मोटे तौर पे दो तो वेरिएबल हैं, जिसमें एक तरफ टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ गवर्नेंस के, इकोनॉमी के और पॉलिसीज़ के इश्यूज़ हैं। आपको दोनों के इंटरलेशंस डिस्कस करने हैं और इसमें बहुत सारे हाइपोथेसिस भी हैं कि किस तरीके से एआई, किस तरीके से डिजिटलाइजेशन आपके लाइफ को आपको अफेक्ट कर रहा है। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे ये बता रहा हूँ, सारी की सारी टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, इनोवेशन ये ह्यूमन ब्रेन की देन है। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसने आजकल हमारे ब्रेन को हाईजैक कर लिया है। हम इसके गुलाम बन गए हैं, जबकि टेक्नोलॉजी आपकी गुलाम होनी चाहिए, लेकिन हम इसके गुलाम हैं। ब्रेन को सीज कर लिया। देखना सर, आप जब राउंड लेते हो प्रिंसिपल साहब, कैसे बच्चे उलझे पड़े हैं मोबाइल के अंदर। हमने जो टेक्नोलॉजी खुद ही बनाई है, हम उसके गुलाम बन के रह गए।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इतना भारी भरकम टॉपिक है, ये अलग अलग डायमेंशन से, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी है, चाहे गवर्नेंस के इशू हैं, चाहे पॉलिसी के इशू हैं, ये अलग अलग देश के लिए, अलग अलग रीजन के लिए, इवन विद इन कंट्री भी अलग अलग हैं गवर्नेंस के इशू। साउथ के इश्यूज अलग हैं, नॉर्थ के इश्यूज अलग हैं, बंगाल के अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं। कुछ देश तो कुछ देश तो इस धरती पे स्वर्ग हैं, कुछ नहीं है, ये आप सबको पता है। तो मैं, लेकिन फिर भी इतने भारी भरकम टॉपिक के लिए, इतने शानदार टॉपिक के लिए, सिलेक्शन के लिए मैं ममता को, अमनदीप को और प्राचार्य महोदय को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस पर कोई पुस्तक लिखना चाहोगे तो इस पर काफ़ी शानदार किताब आ सकती है ममता मैम, इस पर बढ़िया लेखन का काम हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे निकलना पड़ेगा, मेरी भी मजबूरी है, आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Really, it is well said. Just find some time in a day to sit with elderly people, because they teach you the complex topic in such an easy way that you forget the complexities of life. Thank you, sir. You have really made us understand the topic so well. Now, I would like to invite our principal, sir, to felicitate our esteemed guest of honor, Dr. Kushal Pal ji, with a planter and memento as token of appreciation. Please encourage us with a big round of applause. Your encouragement matters a lot to us. Thank you, dear audience. Thank you, sir. Dr. Subhash Sharma ji. How does this all affect you? How does this all affect? Now, I would like to introduce to you our next esteemed distinguished guest is Dr. Vikas Sabharwal ji, Associate Professor and former Head, Department of Political Science, Kurukshetra University. So, before inviting him on the stage, I would like you to have a gaze at his wonderful achievements that made him a well-renowned personality. He is a member of National Education Policy Central Core Committee, Kurukshetra University. He is also a member of Project Action Group, Center for Entrepreneurship at the university, established under the Rashtriya Uchcha Shiksha Abhiyan, Ministry of Education, Government of India. He is also a member of Academic Council and former member of the Institutional Human Ethics Committee of Kurukshetra University. He is also working as an advisor to the Haryana Public Service Commission and as member of undergraduate and postgraduate board of studies. So, he has published a number of research papers in reputed academic journals and has presented research papers at various national and international seminars and conferences in India and abroad. He has represented India at the International Political Science Congress at Poland in 2016 and at South Korea in 2025. He is widely traveled and has been to various countries including England, Ireland, Germany, China, Scotland and Wales. His areas of interest are federalism, reorganization of states in India and gender politics. Please give him a big round of applause. Sir, I would like you to join us on the dais
and share your valuable thoughts with us. सभी को नमस्कार। कॉलेज के प्रिंसिपल ऋषिपाल जी, डॉक्टर सुरभि, डॉक्टर ममता, डिग्निटरीज जो मेरे सामने बैठे हैं। समय बहुत कम है, जैसे डॉक्टर कुशलपाल अभी बोल करके गए हैं कि वैलिडिक्टरी सेशन जो है उसमें बोलना सबसे कठिन काम इसलिए है क्योंकि मटेरियल की तो कोई दिक्कत नहीं है, पर थक जाते हैं सभी, सारा दिन से सुबह से लगे हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। तो मैडम ने मुझे 20 मिनट कहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना कम में बोल सकूं। और आई एम द लास्ट स्पीकर आई थिंक ऑफ द डे। ये जो टॉपिक है, मैं वाकई में बधाई देना चाहता हूँ। आई एम श्योर ये बात सुबह से सब लोग बोल रहे हैं, और ये जेन्युइनली इसलिए बधाई मैं देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, डॉक्टर ममता और उनके जो साथी हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ एक्चुअली सो रेलिवेंट, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज के समय में जितनी बात हो रही है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी और मुद्दा है जिसके बारे में पीपल आर टॉकिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। तो दिस और ये जो डिजिटलाइजेशन एज वेल, वेरी ब्रीफली आई विल टच अपॉन डिजिटलाइजेशन जो है, दैट इज़ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, ऑटोमेट और ट्रांसफॉर्म हाउ टास्क्स एंड सर्विसेज आर डन। और बहुत कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, सिंपल चिट्ठियों से मेल्स एंड फिजिकल लेटर्स जो हुआ करते थे, लैंडलाइन टू मोबाइल कॉल्स, अभी थोड़ी देर पहले जो बात, दिस इज ऑल डिजिटलाइजेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, दैट इज समथिंग विच हैज़ टेकन डिजिटलाइजेशन टू अ वेरी डिफरेंट लेवल। और वो लेवल ये है कि पहले कंप्यूटर्स, यहाँ पर मैडम बैठे हैं कंप्यूटर साइंस के, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था उनको जब थोड़ी देर पहले शी वॉज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, एंड आई एम श्योर शी विल अग्री विद दिस, बिकॉज मैं जो भी बोल रहा हूँ दिस इज समथिंग विच इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। पहले के समय में और अब में जो अंतर है, मुख्य अंतर जो है डिजिटलाइजेशन में एंड नाउ विद द कमिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतर ये है कि कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइसेस जो पहले थी, दे कुड डू वॉट एवर दे वर इंस्ट्रक्टेड टू डू, जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, दैट इज व्हाट दे वुड डू। वेयर एज नाउ देर इज अ बिग चेंज, एंड द चेंज इज, एंड मैं काफ़ी देर पहले आया था यहाँ पर सुनने के लिए समहाउ उस बारे में, आई एम श्योर दिन भर इस बारे में ज़रूर डेलिब्रेशंस हुए हैं। नाउ द डिफरेंस इज दैट डिजिटल डिवाइसेस कैन एक्चुअली मेक डिसीजंस, जिसका सबसे साधारण उदाहरण गूगल मैप्स है, जिसका प्रयोग हम लोग डेली बेसिस पर करते हैं। डिसीजन मेकिंग ही नहीं, डिजिटल डिवाइसेस अब रीजनिंग करने लगी हैं। दे हैव स्टार्टेड, ये बात से दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट एक्सटेंसिवली इन डिटेल बाय द पायनियर्स ऑफ एआई, जिसमें सबसे बड़े व्यक्ति जो हैं जेफरी हिंटन है, जो कि नोबेल प्राइज विनर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। जेफरी हिंटन को नोबेल प्राइज जो मिला है, वो मिलने का मुख्य कारण था द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि ब्रेन सेल्स को सिमुलेट करते हैं, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन earlier devices and the artificially intelligent devices. यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर हैं जेफरी हिंटन, 80 साल उनकी उम्र है। अपने जीवन के 55 वर्ष उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में दिए हैं। ही इज़ नोन एज द गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2024 में नोबेल प्राइज मिला था उनको। दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेस आज के समय में दे कैन एक्चुअली रीजन, दे कैन इंडल्ज इन रीजनिंग द वे ह्यूमन बींग्स डू टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, एंड दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पार्ट एज वेल।
प्रॉब्लम्स सुबह से मैं सुन रहा हूँ, पहले ऑनलाइन सुन रहा था, फिर यहाँ पर फिजिकल मोड में आकर के सुना। बहुत सारी, मैं सोशल साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो प्रॉब्लम्स के बारे में 2-3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा। आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स। एंड डेली हम लोग डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुन रहे हैं, विच इज़ अ डिजिटल इशू। आधार का डेटा ब्रीच हुआ था कुछ समय पहले। 81 करोड़ इंडियंस के आधार का पर्सनल डेटा लीक हो गया था, जो कोविन ऐप पर था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा। और वो पर्सनल डेटा आज डिजिटल अरेस्ट के केसेस में यूज़ किया जाता है। जब भी डिजिटल अरेस्ट के लिए किसी के पास कोई फ़ोन आता है तो सबसे पहले वो ये बोलते हैं आपका ये नाम है, आपका ये आधार नंबर है, ये आपका फ़ोन नंबर है, और हम सीबीआई या पुलिस या कोई भी अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से बोल रहे हैं। डार्क वेब पर 81 करोड़ भारतीयों का डेटा ब्रीच की वजह से, साइबर हैकिंग की वजह से लीक हो गया था, जो आज यूज़ किया जा रहा है डिजिटल अरेस्ट को इनिशिएट करने में। इसके अलावा 7 अप्रैल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो सभी साथी यहाँ पर सम्मानित साथी बैठे हैं, मैं कुल 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं समझ सकता हूँ आप लोग बेहद थक चुके हैं सुबह से, लेकिन जो मैं बात आपसे रखने जा रहा हूँ उसको, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। 7 अप्रैल को, इसी महीने 7 अप्रैल को, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी एंथ्रोपिक ने एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है। उस मॉडल का नाम है माइथॉस। और जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि माइथॉस लॉन्च हो गया है, यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने तुरंत, पूरे यूएस के सबसे बड़े बैंकिंग, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं, यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने तुरंत अमेरिका के सारे बड़े बैंक्स के चीफ्स को बुलाया और मीटिंग की। मीटिंग करने का कारण ये था कि एंथ्रोपिक ने जो माइथॉस रिलीज किया है वो पूरी दुनिया की जितना भी डिजिटल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मिनटों में क्रैश कर सकता है अगर वो हाथ में लग जाए साइबर हैकर्स के। और इस कारण से एंथ्रोपिक ने खुद अनाउंस किया कि हम लोग इस मॉडल को पब्लिक के लिए रिलीज कर ही नहीं सकते। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के सॉफ्टवेयर्स, इस तरह के आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट टूल्स डेवलप हो चुके हैं। और उसी दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के चीफ ने भी यही बात बोली। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मीटिंग हुई जिसमें कि ये सब डिस्कस किया गया कि एंथ्रोपिक के माइथॉस मॉडल से जो चैलेंज आएगा उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। दिस इज़ वन थिंग। दूसरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ वो ये है कि डिजिटल टूल्स हमारे ऊपर कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं कंट्रोल। ये अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, डॉक्टर कुशल पाल भी बोल करके गए। मोबाइल फ़ोन तो बहुत ही माइनर सी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। अभी चैट बॉट से लोग बातचीत करके दे आर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप्स विद आर्टिफिशियल रोबोट्स, चैट बॉट्स, एंड कमिटिंग सुसाइड। अभी लास्ट अक्टूबर यूएस में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया और यूके में कई बच्चों ने सुसाइड किए हैं चैट बॉट्स के साथ बातचीत करके। चैट बॉट्स ने कन्विंस किया बच्चों को कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए। दिस इज समथिंग दे आर गेटिंग बिकॉज दिस इज, एज आई सेड, दिस इज अ टेक्नोलॉजी जिसमें ब्रेन को सिमुलेट करती हैं मशीन्स। मशीन लर्निंग जो एक ऐसा टर्म है जो डेली यूज हो रहा है। मशीन्स आर बीइंग टॉट टू डू रीजनिंग और वो ह्यूमन बीइंग से कांस्टेंट इंटरैक्ट कर रही हैं। ऑफ कोर्स इट इज वी ह्यूमन बीइंग्स हु आर डूइंग दिस। ऑटोनॉमस वेपन्स, केवल 1-2 और इश्यूज में उठाऊंगा। ऑटोनॉमस वेपन्स जो हैं वो इतने डेंजरस वेपन्स हैं जिसमें कि दे कैन देमसेल्व्स टेक डिसीजंस वेदर टू फायर और नॉट, और इस सब से पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को आने वाले समय में खतरा हो सकता है। एंथ्रोपिक जो कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो खुद, उसके पास ऐसे मॉडल्स अवेलेबल हैं जिससे कि फुल्ली ऑटोनॉमस वेपन्स बनाए जा सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ। स्टेट का इसमें क्या रोल है, ये जो पॉलिसी और गवर्नेंस की बात हो रही है, पूरे विश्व में इस समय ये बात हो रही है कि कैसे हम लोग गवर्नेंस मॉडल्स डेवलप करें जिससे कि स्टेट का काम ही रेगुलेट करना है। कोई भी कुछ भी नया आता है, कंपनीज कभी नहीं चाहेंगे कि उन पर रेगुलेशन हो।
जैसे कि कोई टोबैको कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि इस प्रकार की वार्निंग उसके ऊपर हो दैट इट कैन कॉज कैंसर, बिकॉज उससे उनकी सेल्स कम हो सकती हैं. It is only the state which can regulate, and that is where the role of political science comes into being. दो आखिरी बात. पहली, सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स डेवलप हो चुके हैं. सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पूरी धरती पर केवल जीव जगत में है. मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, ऐसे रोबोट्स छोटे स्केल पर ऐसे डेवलप हो चुके हैं विच कैन सेल्फ रेप्लिकेट, अपनी कॉपीज बना सकते हैं. एंड इसमें सबसे बड़ा खतरा ये कि कल को अगर ऑटोनॉमस वेपन्स के रूप में जो किलर रोबोट्स के नाम से जाने जाते हैं, जिस पर अभी रिसर्च चल रही है और एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज के पास है, इफ दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग देमसेल्व्स, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है. और आखिरी बात जो मैंने कहा था, दो बात करूंगा, एक मैं कर चुका हूं, और दूसरी बात जो है वो मैं अपने मुंह से ना कह करके केवल 1.5 मिनट का एक छोटा सा क्लिप मैं आपको शो करना चाहूँगा. हिमांशु जो अगर प्ले करें, 1 मिनट रुके हिमांशु जी. ये क्लिप जो है, ये जो आप सुनने जा रहे हैं अगले, केवल 1 मिनट का क्लिप है. ये जेफरी हिंटन बोल रहे हैं इसमें, जो कि नोबेल प्राइज विनर हैं, गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है. 2024 में उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में उनका जो पायनियरिंग रिसर्च है, आप यूँ समझ लीजिए कि इस समय पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस रूप में एग्जिस्ट कर रही है, वो सारा के सारी इस व्यक्ति की 55 साल की मेहनत है. बिकॉज ही डेवलप्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स विच फंक्शन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर द वे आवर ब्रेन फंक्शंस. और अब आप ये सुनिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में व्हाट ही हिमसेल्फ इज सेइंग. हिमांशु जी. BBC पर इनका इंटरव्यू है. How does this all affect you personally? Does it hit you? Does it give you sleepless nights? It makes me very sad that I put my life into developing this stuff, and that it's now extremely dangerous, and people aren't taking the dangers seriously enough. Professor, it's great to have you back on Newsnight. What do you think about the way that humans are now competing with different models of AI and are using and abusing your creation? What do you feel about how the humans are behaving? I think it's clear that we need strong regulations on AI. So people are very competitive. We evolved from small warning bands of chimpanzees, or our common ancestors with them, and we need to stop AI being abused by having government regulations on it. Because you told Faisal here before that you would compare this to the relatively successful Geneva Convention on the use of chemical weapons. The world can cooperate, but we're not in a very cooperative age, are we, Professor? Yes, I think it's unfortunate that this extremely powerful technology is being developed and unleashed on the world at a point at which we seem to be moving towards authoritarian governments. We asked a very well-known AI program to generate a question for you. We said to it, we're going to be interviewing the Nobel laureate Geoffrey Hinton. What one question would you ask as an AI bot? And the chat response was, given how quickly AI systems are beginning to reason, persuade, and act autonomously, what is the single most irreversible mistake humanity could make in the next 5 years? And what concrete decision would most reduce the risk of that mistake? Okay, I think there's many mistakes we could make, but I think the biggest mistake we could make is not to do enough research on how we can coexist peacefully with intelligent beings that are more intelligent than ourselves, but that we created. Since we're creating them, we still have a lot of options on how we create them, but we should be very careful, because if we create them so they don't care about us, they will probably wipe us out. That is all. You can understand it's quite chilling. आखिरी बात जो जेफरी हिंटन ने बोली है वो ये है, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, ही इज़ द पायनियर, द गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द नोबेल प्राइज विनर. ही सेड, इफ वी आर नॉट केयरफुल, artificial intelligence will wipe out the entire human race. This is what this person is saying, or he is saying कि
ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड, ऑलरेडी क्रिएटेड, और आने वाले समय में और ज़्यादा देर इज़, मैं बस केवल 30 सेकंड में समाप्त कर रहा हूँ अपनी बात को। अभी तक जो हो रहा है वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आने वाले समय में जिस पर रिसर्चेज हो रही हैं वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स की इंटेलिजेंस से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, और वो ये कह रहे हैं कि इस पूरी धरती पर ऐसा कोई मॉडल नहीं है जब एक लेस इंटेलिजेंट बीइंग एक ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग को कंट्रोल कर पाए। तो आने वाले समय में, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपनी कॉपीज बनाने वाले, यानी रिप्रोडक्शन तक हो रहा है, होना शुरू हो चुका है। दिस इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर क्रिएटिंग। और एक और बात, इसका सोल्यूशन भी ये बताते हैं। सोल्यूशन वो ये कहते हैं कि धरती पर एक मॉडल ही अवेलेबल है जहां पर एक लेस इंटेलिजेंट बीइंग, ये जेफरी हिंटन के शब्द हैं, आगे वो वीडियो में बोलते हैं, एक ही कैसा मॉडल है धरती पर जहां पर एक लेस इंटेलिजेंट बीइंग अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग को कंट्रोल कर पाता है, और वो है एक बच्चा अपनी माँ को जब कंट्रोल करता है। तो वी हैव टू गिव, a mother is always more intelligent than the child, but the child can control the mother. He has given the solution कि हमें artificial intelligent beings में maternal motherly instincts डालने होंगे जिससे कि वो human beings को समाप्त ना कर दे। तो इन शब्दों के साथ I am going to end what I wanted to say. Thank you so much. Really, sir, it was such a remarkable presentation. Sir, what I have understood that machines are to be controlled by human beings, but human beings must not be controlled by machines. So, really, you have impressed the audience. We render a heartfelt gratitude for your contribution to the conference. Now, I request our principal, sir, to felicitate our esteemed guest with a planter and memento as a token of appreciation. Now, may I request our invited speaker, Dr. Rajesh Mehraji, to join us on the stage. Dr. Rajesh Mehraji. I request all the organizing committee members to join us on the stage to honor the guest. All the organizing committee members of BAR Janta College Kaul. Please encourage us with a big round of applause. Thank you, audience. Next, I would like to invite Dr. Santosh Kumari ji on stage, Associate Professor in English,
SGPG College, Panipat. Next, please prepare yourself, Dr. Navita Adlakha. Next in turn will be Dr. Suman Balaji. Thank you, Dr. Sutesh Kumari ji, for giving us your precious time. I would like to invite all the organizers, Dr. Kusum Kangar ji on stage, Dr. Vishambar ji, Dr. Brijendra Dhanda ji, please join us on stage. Dr. Sandeep Kumar ji, Dr. Rajiv Gaba ji, they all have contributed a lot for today. Next is Dr. Navita Adlakha. Please join us on stage. Dr. Navita Adlakha is Associate Professor of Computer Science working in Government College Jagdishpura. She is associated with Cyber Awareness Code Securities NGOs. She has contributed a lot in this field related to cyber awareness. Next, Dr. Suman Balaji. Our next distinguished guest is Dr. Suman Balaji. Dr. Anita, please join us on stage. Dr. Anita. Next is Dr. Pawan Kumar ji. Dr. Pawan Kumar ji. After Dr. Pawan Kumar ji, Dr. Anuradha Nagia ji. After Anuradha Nagia ji, Dr. Naresh Kumar ji. Dr. Naresh Kumar ji. Thank you, ma'am. Dr. Anuradha Nagia ji. After Dr. Anuradha Nagia ji, I would like to invite Dr. Ritu Kangwalia ji. After Ritu Kangwalia ji, I would like to invite Dr. Naresh Kumar ji, Librarian, RKST College. Next, Dr. Avneet Kaur ji. Dr. Naresh Kumar ji, maybe. Dr. Avneet Kaur ji, please join us on the stage. We are really fortunate to have such beautiful faces with us today. Next, I would like to invite, after Avneet Kaur ji, Mr. Dhananjay Kumar ji, please join us on stage. He is Assistant Professor and Head, Department of Political Science, ST College, Ambala City. After Dhananjay Kumar ji, Dr. Manoj Bansal ji. After Dr. Manoj Bansal ji, we would like to invite Dr. Rajesh Garg ji. Dr. Rajesh Garg ji. Next we have renowned guest Naqibullah Azizi. He is research scholar from Afghanistan.
we have our international scholars with us from other states. Anyone who is present, our distinguished guest from Ethiopia. Yes, sir, I'm really talking to you. Please join us on the stage for felicitation ceremony. Please give him a big round of applause. They have contributed a lot for today's conference. Dr. Sandeep Kumar ji, please join us on stage. Dr. Vishambar ji, Dr. Vijendra Dhanda ji. Actually, our faculty has worked a lot for today's conference, so they now all are in relaxed mode. Now, I would like to invite our distinguished guests who are session chair and co-chair of today's technical sessions. Both कौन है मेरे पेज ही पता नहीं कहाँ चले सेशन एक मैम our another distinguished guest from Ethiopia, I would like to invite you on stage, sir, for felicitation ceremony. ये तो ऑनलाइन है ये वाले प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सुदीप भी चला गया सुरुचि शर्मा भी चलेगी प्रीति शर्मा भी चलेगी रेणु बल्यान कपड़े को सब नहीं पहचान को ये ठीक है ना सूरज वाले चले गए इनको काट मार चले गए रुको रुको ये देखो ना कौन है I would like to invite Dr. Pradeep Kumar ji, Assistant Professor of Political Science, Guru Nanak Khalsa College, Karnal. Assistant Professor of Public Administration. किसको बोलूं कोई है इनमें सारी का I would like to invite Mr. Gaurav Kamboj, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, Thapar University, Patiala, Punjab.
There's an important information for the participants. They can collect their certificate or presentation in participation from registration desk. Now there's the time for excitement. There's the time to reward the excellency. We are going to award Best Paper Presenter of all offline technical session. अंशु लगे वाला नीतू वाला हाँ किसने बताया आपको आपका फर्स्ट है बेस्ट और नीतू वाला We have amid us the winners of technical session 1. They are being awarded as best paper presenter. Awardees are Anshul Agarwal and Neetu Bala. Please give them a big round of applause. They have worked a lot to present the papers. मैम किसी और सेशन का है बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटर में किसका नाम है पूछो मैम से 2 मिनट बाद में पूछियो फोटो होने के बाद अभी 2 मिनट It is well said. There are some few lines that strike my mind. Word is too much with us. Please pay attention what I am saying. This world is too much with us. Late and soon, getting and spending, we waste our powers. But the little we see in nature, that is ours. We have lost a boon, but let the river shows her bosom to the moon. What it means that we are too much busy in the materialistic world, but nature has provided us a lot. We should pay attention to it. What Dr. Santosh Kumari has said, I am repeating it in the literary words. Please give me a big round of applause. Thank you. And to Dr. Santosh Kumari too. The best paper present award goes for second session to Manpreet. Best paper presenter award to Manpreet. मैं उसका नाम बता देती हूँ संजू पोस्टर प्रेजेंटेशन Now we are going to award best poster presentation. Award goes to excellency. Award goes to hard work. Award goes to efforts. Award never is not earned in a day, but it is earned while we prepared us a lot for the award. Best Paper Presenter Award for Technical Session 5 goes to Simran. Please give this little girl a big round of applause. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। छोटी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अवार्ड फॉर बेस्ट पेपर प्रेजेंटर टेक्निकल सेशन 5 गोज टू सिमरन।
मेरे पास जो मेरे पास लिस्ट आई है ना मैम, मैंने वही बोला। एक मिनट टेक्निकल सेशन 5th वॉज मनप्रीत। 2 में थे मैडम, तो फिर 2 का मैम 2 के लिए कह रहे हैं, कोई और अनाउंस किया कौन है टेक्निकल सेशन 2 में? मनप्रीत कौर आपने बोला है, बट टेक्निकल सेशन 2 में नहीं, 2 में हमारा नहीं, टेक्निकल सेशन 5 प्रेजेंटर है ना बच्चा, टेक्निकल सेशन 4 का है, 4 का है, वो 4 का है। 4 में फिर मैं वही अच्छा कोई बात नहीं, आप हैं, आप टेक्निकल सेशन 4 में हैं और आपका नेम क्या है? बेस्ट पेपर टेक्निकल से फॉर ओके, देयर इज अ लिटिल चेंज। फॉर टेक्निकल सेशन 4 अवार्ड गोज टू मनप्रीत कौर। फॉर टेक्निकल सेशन 2 प्लीज ज्वाइन अस ऑन स्टेज। For technical session 2, Shivani Gupta. Best paper presenter award for technical session 2 goes to Shivani Gupta. All the world is a stage. It is said by Shakespeare, and we all are the characters. We just play our role so successfully, and then at the 7th end we leave this stage. So till 7th end we are doing our best. Best paper presenter for technical session 3 award goes to Monica. Best poster presenter award goes to Sanju. Okay. The guys with us, please welcome Mr. Sanju with a big round of applause. Anyone who has chaired the session and co-chair who is amid us, please I'll welcome the distinguished guest on the stage. I request our principal sir to felicitate Dr. Renu Balian, who has co-chaired the session, technical session 2. We are really fortunate with your kind presence in our conference today. Now, I would like to invite Dr. Mamta Rani. She is HOD, Head of the Department of Political Science, working at BAR Janta College, Kaul. Ma'am, please join us on the dais for vote of thanks. Hope you all are enjoying the session, and soon we will again meet.
Ma'am, please join us on the dais. धन्यवाद डॉक्टर सुरभि। सबसे पहले मैं संयोजिका डॉक्टर ममता रानी आप सभी को सादर नमस्कार और साधुवाद देती हूँ। और आज मेरे लिए और मेरे महाविद्यालय परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपना विशिष्ट अतिथियों का और अपने स्पीकर का, अपने रिसोर्स पर्सन का और अपने गेस्ट ऑफ ऑनर का धन्यवाद ज्ञापन करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले अपने राजनीति विज्ञान विभाग एवं अर्थशास्त्र विभाग की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगी अपने गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट चौधरी तेजवीर सिंह जी का, जिन्होंने अपनी प्रबंधक और साथ में सभी प्रबंधक समिति के सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद अभिव्यक्त करती हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व, प्रेरणा और संरक्षण में ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हो रही है। उनके दूरदर्शी मार्गदर्शन के बिना इस प्रकार का भव्य शैक्षणिक समारोह का आयोजन करना हमारे लिए कल्पना से भी परे था। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी मैनेजिंग कमेटी का धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद मैं अपने आदरणीय प्रिंसिपल श्री ऋषिपाल जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें निरंतर सहयोग, प्रोत्साहन और समर्थन देकर इस संगोष्ठी का आयोजन करवाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सर, आपने हमें स्वतंत्र रूप से इस कार्य को करने में विश्वसनीय रूप से हमें पूर्ण तौर पर, जब भी हम आपके पास गए, हमें पूर्ण तौर पर आपका सहयोग प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर ऋषिपाल जी का भी धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद मैं अपने चीफ गेस्ट लेफ्टिनेंट डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी, कुल सचिव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस आयोजन को गौरवान्वित किया और अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमें एक नई दिशा प्रदान की। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं अपने इनॉग्रल एड्रेस की ओर बढ़ते हुए आदरणीय डॉक्टर एम गोयल जी का और आदरणीय कीनोट स्पीकर प्रोफेसर जंती दत्ता जी का और जिन्होंने विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानों से अपने संगोष्ठी को और अधिक सार्थक बनाया, उन सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। अब मैं प्लेनरी सेशन की ओर बढ़ते हुए अपने सेशन के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर वी.एन. अत्री जी का और चेयरपर्सन डॉक्टर नीरव वर्मा जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करती हूँ, जिनके दिशा निर्देश में इस प्लेनरी सेशन का कुशल संचालन संभव हुआ। अब मैं प्लेनरी सेशन के अपने एमिनेंट स्पीकर जो डॉक्टर राम कुमार जी का और डॉक्टर समिता शर्मा जी का, जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से थे, और प्रोफेसर डॉक्टर हरबट बी रोसाना जी का भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके विचार हमारे लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहे। साथ ही मैं अब वैलिडिक्टरी 70 की ओर बढ़ते हुए अपने गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर कुशल पाल जी, प्राचार्य इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज लाडवा कुरुक्षेत्र, और अपने वैलिडिक्टरी संबोधन के प्रमुख विशिष्ट प्रवक्ता प्रोफेसर रंजन अनेजा जी का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और साथ में विकास सबरवाल जी जो हमारे फॉर्मल हेड है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में। विशेष तौर पर आपके बहुमूल्य विचारों ने इस सम्मेलन को और अधिक सार्थक बनाया और हमारे बीच आए और वैल्यूएबल टाइम और वैल्यूएबल नॉलेज हमें देकर इस सेमिनार को सफल बनाने में महान योगदान दिया। सर, इस शैक्षणिक योगदान के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगी
और आपने इतने अच्छे ढंग से आपने हमें वीडियो क्लिप के माध्यम से इस सम्मेलन की गुणवत्ता को और भी चार चांद लगाए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस आयोजन के कन्वीनर मैं और डॉक्टर अमनदीप कौर जी को और कोऑर्डिनेटर हमारी वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर कुसुम जी को और डॉक्टर ब्रिजेंद्र जी को और अपनी सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस संगोष्ठी को सफल बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष तौर पर वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही मैं अपने शिक्षकगण, गैर शिक्षक साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनकी मेहनत, समर्पण और निष्ठा ने इस आयोजन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके लिए भी विशेष तौर पर उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं सभी प्रतिभागी, अपने जितने भी हमारे संगोष्ठी में जुड़े थे, हमारे शोधार्थी, हमारे स्वयंसेवक और मीडिया प्रतिनिधियों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने सक्रिय सहभागीदारी ने इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को और अधिक यादगार बनाया और अधिक जीवंत बनाया। उसके लिए विशेष तौर पर हमारे सभी विद्यार्थी, सभी रिसर्च स्कॉलर विशेष तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। और हम विशेष तौर पर आभारी रहेंगे अपने परियोजक ICSSR, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और अनुमोदक DGHE पंचकूला के, जिनके सहयोग के बिना इस भव्य संगोष्ठी का आयोजन हमारे लिए संभव नहीं था और यहाँ तक कि इस कल्पना से परे था। इसलिए उनके लिए विशेष तौर पर हम आभारी रहेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सीखने की जो यात्रा होती है हमारी, कभी ख़त्म नहीं होती। ज्ञान की खोज ही हमें सच्ची प्रगति की ओर ले जाती है। अंत में इस संगोष्ठी से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विद्वान साथियों के सहयोग, समर्थन और सहभागिता के लिए पुनः हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब इसी के साथ मैं डॉक्टर सुरभि को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सुरभि, प्लीज। Thank you, Dr. Mamta, for such a wonderful vote of thanks. Now, I would like to show our heartiest, heartful gratitude to all the online technicians who are really working with us with great effort since morning. भैया आप सभी लोगों के लिए दिल से आभार. Now, I would like to announce Best Paper Presenter Award for Technical Session 9 goes to Neerath Kavya. There is an important announcement that rest of the best paper presenters of online sessions will be declared in the groups. Now, as we are towards the end of our wonderful conference, now it's the time to honor our country. Let's stand tall and straight to sing our national anthem. I request all the dignitaries and the guests here to, let's start with that. जगन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गा
सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Now let's have a group photo together. I invite all the people present in the seminar hall, please join us on stage for a group photo.